Hello, 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 hello. Hi, hello, hello, hello. Very good morning, ladies and gentlemen. Hello, hello, hello. Just testing the mic. Hello, hello. Hello, hello. Hello. A very good morning, ladies and gentlemen. Just testing the mic. Hello, 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 hello. Let me. Hello, good morning, everyone. This is an announcement. Please settle down. Kindly come inside, whoever's outside. I repeat, whoever's outside, please come inside. Whoever's inside, please settle down in your seats. We are about to start the event very, very shortly. We're about to begin the conference, so please kindly come inside and get seated and get comfortable. We're about to start the conference shortly. Thank you.
Hello, good morning, everyone. We are starting the conference now, so I would request everyone who's outside to please kindly come and settle inside. And everyone who's inside at the back, please find your seats and settle down. We're starting the conference in a minute. Thank you so much. A very good morning, everyone. I would request everyone to please settle on their seats. Everyone who's outside, kindly come in. We're starting the conference now. Everyone at the back, you can carry refreshments to your chairs and please settle down. All right, I think it's time to officially start the conference. Good morning, everyone. I'm your host, Anshul Bajwa, and I welcome all of you to Cotton Association of India, Cotton India 2023-24 conference in Hyderabad, co-hosted by Telangana Cotton Millers and Traders Welfare Association. The theme of the conference is Challenges and Opportunities Facing Cotton Value Chain in India. As we know, currently, not just the cotton industry, but the entire world is going through such challenging and distressing times. But I must say, these are reminders for us that there will always be changes, there will always be opportunities. We need to ride the tide, steer ahead, and look for new opportunities on the horizon. All right, ladies and gentlemen, now it's time to start the proceedings of today's conference. I would like to invite on stage Shri Atul S. Ganatra, President, Cotton Association of India. Shri Bhupendra Singh Rajpal, Vice President, Cotton Association of India. Shri B. Ravinder Reddy, President, Telangana Cotton Millers and Traders Welfare Association. Shri Vinay N. Kotak, Additional Vice President, Cotton Association of India. And Shri K. Ramesh, Secretary, Telangana Cotton Millers and Traders Welfare Association. I will request all our dignitaries to join us on stage. Shri Atul S. Ganatra, Shri Bhupendra Singh Rajpal, Shri B. Ravinder Reddy, Shri Vinay N. Kotak, and Shri K. Ramesh.
Now, ladies and gentlemen, I would also like to invite on stage our chief guest for the conference, Madam Roop Rashi, Textile Commissioner, Government of India. Shri L.K. Gupta, Chairman cum Managing Director, Cotton Corporation of India. Shri P.K. Agarwal, Advisor Sustainability, Cotton Corporation of India. Shri S.K. Jam, Director, Raw Materials, Vardhaman Textiles Limited. Shri Raman Bhalla, Head, Cotton Operations India, Louis Dreyfus Company Private Limited. Shri P. Koti Rao, Chairman, AP Textile Mills Association. I hope we have everyone on stage with us. Do we have all the dignitaries on the stage with us? I would quickly run through the names of the dignitaries again. Madam Roop Rashi is here. We have L.K. Gupta, Shri P.K. Agarwal, Shri S.K. Jam, Shri Raman Bhalla, and Shri P. Koti Rao. All right, ladies and gentlemen, now it's time for the national anthem. So I would request all of you to please stand on your seats. I repeat, it's time for the national anthem. So I would request all of you to please stand on your seats. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, everyone. Now it's time to invoke Lord Ganesha's blessing for a great start to this great conference with Ganesh Vandana. So may I request all the dignitaries on the dais to please start the event by lighting the lamp. I will request all our dignitaries on the stage to kindly start this event, this conference, with such beautiful blessings. So could we please have you light the lamp? लेकिन थोड़ा वो तुलसी से कॉर्डिनेट करने का
शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः. Thank you so much to all our dignitaries for starting the conference on such a beautiful, spiritual and auspicious note. Thank you so much, everyone. Once again, a very good morning, ladies and gentlemen. I would now request everyone in the audience to please be seated because we are starting the conference. May I request Shri Atul Bhai Ganatra, President, Cotton Association of India, Shri B. Ravinder Reddy, President, Telangana Cotton Millers and Traders Welfare Association, Shri Bhupendra Singh Rajpal, Vice President, Cotton Association of India, and Shri Vinay N. Kotak, Additional Vice President, Cotton Association of India, to kindly felicitate our dignitaries on the dais with a bouquet of flowers and shawl. Meanwhile, I have one request from all of you. आपसे एक ही गुजारिश है, felicitation ceremony के दौरान please तालियां जरूर बजाइएगा. Thank you. Madam Textile Commissioner. तालियां तालियां प्लीज, अभी तो सुबह सुबह ही हुई है, अभी तो जोर होना चाहिए तालियों में. देखो तालियों की आवाज फिर दोबारा कम हो गई. थैंक यू. उस साइड से मुझे तालियों की आवाज नहीं सुन रही.
वहां पे. Thank you. Thank you so much, everyone. Now may I please invite Shri Atul Bhai Ganatra, President CAI, to give the presidential welcome address. Ladies and gentlemen, that's our president. So, President, the stage is all yours. Can you give me a glass of water? Glass. Good morning, Hyderabad. Namaskaram. I wish to extend my warm welcome to Madam Srimati Rooprasi ji, Textile Commissioner, and today's Chief Guest, Sri Lalit Kumar Gupta ji, CMD CCI, Sri Pradeep Kumar Agarwal ji, Sri Raman Balla ji, Sri P. Koti Rao ji, Sri S.K. Jam Sahab, Sri Bhupender Singh Rajpal ji, Sri Ravindra Reddy ji, Sri Vinay Kotak ji, Sri K. Ramesh ji, and all my dear cotton friends, friends from media, and ladies and gentlemen. As per request from Telangana Cotton Association, today's my speech will be in English and Hindi mix. आज मुझे आप लोगों को हैदराबाद में इस कॉन्फ्रेंस में वेलकम करते हुए बहुत खुशी हो रही है और मैं आप सभी को कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए हृदय से आभार प्रकट करता हूं। आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय निकाल के बहुत दूर दूर से हैदराबाद आए हैं। ये कॉन्फ्रेंस हैदराबाद में आयोजित करने में तेलंगाना एसोसिएशन के चेयरमैन श्री रविंद्र रेड्डी जी और एसोसिएशन के सेक्रेटरी श्री रामाराव जी का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने बोला कि साहब तेलंगाना जब से इंडिया आज़ाद हुआ है 75 ईयर्स हो गया, हमारे यहाँ कभी कोई कॉटन कॉन्फ्रेंस सीआई ने नहीं की है। तो मेरे को लास्ट 5 साल से बोलते आप इतना बड़ा बड़ा अच्छा कॉन्फ्रेंस करते हैं, हमारे यहाँ क्यों कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। तो मैंने हमारे सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोला, उनका परमिशन लिया और हमने ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन तेलंगाना में किया है। ये सीआई और तेलंगाना कॉटन एसोसिएशन की जॉइंट कॉन्फ्रेंस को हैदराबाद में सक्सेसफुल आयोजित करने के लिए मैं सीआई की इवेंट कमेटी की टीम, तेलंगाना एसोसिएशन की पूरी टीम को धन्यवाद करता हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं तेलंगाना इंडिया में 3rd हाईएस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट है आफ्टर गुजरात एंड महाराष्ट्र। और नॉट ओनली कॉटन बट तेलंगाना के पास 5,000 साल की एक कल्चरल हिस्ट्री है। इसलिए हमने कॉटन इंडिया 23-24 को यहाँ हैदराबाद में आयोजित करने का निर्णय लिया है। हमारी ये कॉन्फ्रेंस का थीम है
challenges and opportunity facing the cotton value chain in India। हमारे आज के सभी स्पीकर तथा पैनलिस्ट डिस्कशन में ये कॉन्फ्रेंस का थीम पे आपको स्पीच तथा पैनल डिस्कशन करेंगे। आज की तारीख में हमारे सामने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के कई प्रॉब्लम है, जैसे कि हमारा कॉटन कंजम्पशन अगर स्पिनिंग मिल 100% चले तो 400+ लाख बेल्स का हो गया है, और हमारा प्रोडक्शन लास्ट 3 साल से 300 to 325 लाख बेल्स का है। तो अगर स्पिनिंग इंडस्ट्री को 100% पे चलना है तो हमारा प्रोडक्शन कॉटन का बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। हमारा कॉटन का एरिया 120 to 130 लाख हेक्टर का है, मगर हमारा यील्ड सिर्फ पर हेक्टर 425 kg लिंट का है, दैट इज 2.5 बर पर हेक्टर, जो वर्ल्ड में सबसे लोएस्ट है। हमारा कॉटन का एक्सपोर्ट 2013-14 में 112 लाख बेल हुआ था, जो 2022-23 में कम होके सिर्फ 15.5 लाख बेल्स का रह गया है, क्योंकि हमारे पास एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सेस कॉटन नहीं है। कैन आई हैव वाटर? इधर रखिए। आई एम हैविंग थ्रोट प्रॉब्लम। अगर हमारा कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो नई सीड की टेक्नोलॉजी लाना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास 2 साल पहले कॉटन का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक 125 लाख बेल्स था, जो कम होके अभी सिर्फ 28 लाख बेल्स का ओपनिंग स्टॉक है। अगर हमारा कॉटन का प्रोडक्शन कम होगा तो स्पिनिंग मिल्स को चलाने के लिए कॉटन इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए 11% ड्यूटी निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारी स्पिनिंग इंडस्ट्री वीक हो जाएगी। कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम सभी स्टेट एसोसिएशन, CCI और सबको मिलके गवर्नमेंट तक हमारी बात पहुंचानी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारी जिनिंग और स्पिनिंग इंडस्ट्री प्रॉफिट में चलना मुश्किल है। इस काम के लिए हम सभी को एकजुट होकर हाथ से हाथ मिला के काम करना बहुत ज़रूरी है। मैं आप सभी को हमारे ICAC का जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने वाला है उसके लिए इनवाइट करता हूँ। वो 2 दिसंबर से 5 दिसंबर तक जियो कन्वेंशन सेंटर में होने वाला है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलके CI, CCI तथा सिटी को होस्ट है। इस कॉन्फ्रेंस का रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया है, तो मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी लोग रजिस्ट्रेशन करके इस नॉलेजेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेवें। रिसेंटली CI और टैक्स प्रोसिल ने मिलके अभी कस्तूरी कॉटन लॉन्च किया है, तो मैं सभी जिनर को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कस्तूरी कॉटन बनाइए। इससे आपको अच्छा प्रीमियम मिलेगा और एक अपॉर्चुनिटी है। तो सभी जिनर को ये कस्तूरी ब्रांड की जो कॉटन है वो बनानी चाहिए। हमने कल CCI को भी रिक्वेस्ट किया है कि ना सिर्फ MSP पे, मार्केट से भी खरीद के अगर आप कस्तूरी कॉटन बनाएंगे तो ब्रांड को बनाने में बहुत हेल्प होगा।
As per the state government of Punjab, Haryana, Rajasthan, pink bollworm has attacked the entire cotton crop in North India. About 65% crop production in Haryana and Punjab has been damaged, while Rajasthan has faced losses up to 90%. Farmers are paying 2,500 for picking of kapas, which is 30 to 40% of their cost. They are hardly getting 6,000 to 7,000 per quintal. This is very alarming situation for the entire textile value chain. If something is not immediately done, then these farmers will stop doing cultivation of cotton, as they are hardly getting any income after removing these expenses. Our CI bylaws are 100 years old. Our board of directors has decided to do the necessary changes in the bylaws, and we have done almost all the work, so that once bylaws are changed, we can make all the multinational companies as a member of CI, which our present bylaws are not allowing to us. Also, in these new bylaws, we have made a special provision for the cotton brokers, and they will also allowed to do the arbitration in CI if they don't get their brokerage payment. This was a very long pending demand of brokers with us, which will be covered in the new bylaws. Also, brokers will get quarterly brokerage under these bylaws. Brokers are very important link between buyers and sellers. I request entire trade to pay minimum brokerage of ₹75 to the brokers. Against paying little higher brokerage, demand good service from them. I remember beginning of my career, I was paying 1 to 1.5% brokerage, and my money has been never stuck in the any mail, and I got always a good service from the broker. I suggest as on today, our Indian cotton bases are very favorable. If we see last year, November, December, ICE future was 77 cents and Indian cotton was 63,000. Today, if we see, ICE future is at 85 cents and Indian cotton is at 58,000. So this is a very good time. I feel Indian mills should not wait for further reduction because we are on the level of MSP. Now price going down is very difficult. This is the right time for the spinning mills to buy cotton. Now I am coming to the problem of ginning industry. Last year, in Delhi stakeholder meeting, our Maharashtra Ginner Association President Sri Bhupender Singh Rajpal ji informed to our Honorable Textile Minister Sri Piyush Goyal ji that ginners are not getting premium for making good quality. That time Minister told CI to make one good single contract for India, one nation, one contract, in which the discount and premium both are specified clearly, and that will bound to the seller and buyer. Also, the Mills Association city has agreed for that contract. This, as per the Minister's order, CI city jointly prepared one single contract, and this contract has been launched officially
by Madam Textile Commissioner in CI 100-year function. Though this contract is saving ginning industries from big cutting from the mills and allowing to take premium for good quality, I am surprised out of 10 ginning states, no association so far implemented this contract compulsory for the safety of that state ginners. I request all 10 state ginner associations in the country to do the business as per CI city contract launched by Madam Commissioner, Government of India. I sincerely thank Madam Textile Commissioner from the Government of India for timely increasing MSP of kapas to help poor farmers through CCI. CCI, under the guidance of Dr. P.K. Agarwal ji and CMD L.K. Gupta ji, is doing wonderful job, not only for the farmer, but for the entire ginning and spinning industry. I also thank Team CCI. I also thank Textile Commissioner Madam for honoring our invitation and attending today's conference from her busy schedule. Friends, one side we are talking demand of yarn is less. Other side, world top 3 cotton producer countries, crop size is smaller this year. That is USA, China, and now India. Hence, we need to watch market and demand very closely. If little demand will come, all markets will come and run properly. Today we are seeing entire industry from cotton, yarn, cloth, everybody is buying hand to mouth, 5 days, 10 days cotton, 10 days yarn, 10 days cloth. But it is a matter of time, demand will pick up. Day before yesterday in city meeting, one big mill MD told me, सर हमारे से कपड़े वाले 10-10 दिन का यान लेते हैं, 8 दिन का यान लेते हैं, मगर पूरी पाइपलाइन खाली है यान की, एक चिंगारी लगने की देर है, सब भागेंगे कॉटन और यान लेने के लिए. So this is situation. In world market, people are talking, demand is not there and no money, etc., etc. But in our India, everything is good under the leadership of our Honorable Prime Minister, Sri Narendra Bhai Modi ji. In India is growing very fast, and I hope in no time we will be in world's top 3 country. In India, today, if you want to buy cars of 10 lakh to 10 crore, there is waiting of 1 month to 1 year. If you want to buy costly watches, you take example, Rolex, 5 lakh to 1 crore watch. Showrooms in India, any city, has no stock of watches to sell. They have only sample pieces to show you. Even they don't take orders. They say, we don't know when it will come. Demand is so good. So there is no problem of money in India. Everything is excellent, going well. Same if we see cloth showrooms are empty. That doesn't mean there is no demand of clothes, because our new generation believes in online shopping. I am seeing my both daughter, they do all the clothes shopping online. Online shopping has gone up 200 times, 200%, 200 times. 99% children or
youngster, they are doing online shopping. So we feel there is a cloth demand is less. But rupees 10,000 to 15,000 shirts also sometimes not available of your size. That is demand. There should be a good quality maker, demand will come. So, not to worry, my friends. हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, डोंट वरी, इंडिया विल डू गुड एंड नेक्स्ट 5 years as per our PM belongs to India. So go ahead, start new work, and wherever you are in good hand under this. I am big fan of Modi ji, and India is doing excellent. I am very proud of that. In last, I am concluding my things. I have learned this saying Kavita from Agarwal ji. He always say, whenever he will end the speech, he will say some Kavita on cotton. So I am inspired from Agarwal ji and saying one small Kavita about cotton. जन्म से चिता तक रहता साथ उसका नाम है कपास. द्रौपदी की जा रही थी लज्जा, बस कृष्ण से थी आशा. वस्त्रहरण के से कृष्णा ने बचाई द्रौपदी की लाज. वस्त्र से ही होती कहलाता पहचान सभ्य समाज. दीपक की बाती बन करती उजियारा कपास. गांवों को सहलाती कष्ट हरती हमारा कपास. आओ वंदन करे इस देव फसल का, जैसे करते आए हैं वंदन हम गंगा नदी का. मैं यहाँ आए हुए सभी गेस्ट को आने वाले साल के लिए बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ हमारी पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे उनका आशीर्वाद बना रहे और हम सबको शुभ और आने वाला साल लाभदायक रहे. थैंक यू वेरी मच. Thank you so much, sir, for your excellent presidential speech. We have learned a lot about the activities of the CAI and the importance of enhancing the brand value of Indian cotton. We would like to thank you again so much, Shri Ganatra, for charting the path of deliberations at this conference through your address. Now, ladies and gentlemen, it's time to invite Shri B. Ravinder Reddy, President, Telangana Cotton Millers and Traders Welfare Association, to please deliver his welcome address. Thank you. Cotton Association of India, तेलंगाना मिलर्स एंड ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन दोनों मिलके कॉन्फ्रेंस कर रहे. इसमें मौजूद है श्री अतुल गणात्रा जी, प्रेसिडेंट ऑफ कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मैडम रूप राशि, टेक्सटाइल कमिश्नर ऑफ इंडिया, भूपेंद्र सिंह राजपाल जी, वाइस प्रेसिडेंट सीए, विनय कोटक जी, वाइस प्रेसिडेंट सीए, सीएमडी सीसीआई ललित कुमार जी, एक्स सीएमडी एंड एडवाइजर श्री अग्रवाल जी, एपी स्पिनिंग एसोसिएशन प्रेसिडेंट कोटी राव जी, हमारा सेक्रेटरी ककिराला रमेश, एलडी से रमना जी, वर्धमान से जो आया स्टेज में बैठा, डिफरेंट स्टेट से कॉटन फ्रेंड्स और तेलंगाना जिन्नर्स, सबको हमारे से तेलंगाना कॉटन एसोसिएशन से सबको स्वागत करता हूँ. फर्स्ट
I thanks to अतुल जी एंड सीए डायरेक्टर्स पूरा टीम को मैं तेलंगाना कार्टून एसोसिएशन मेरे तरफ से ये कॉन्फ्रेंस 3 साल से हम कोशिश कर रहे हैं। आप ये बार टाइम दिया, आपको तेलंगाना में करने के आप जो डायरेक्टर्स सब हमारे साथ ठहर के इधर करेंगे बोल के आप कॉन्फ्रेंस को दिया। सबको हम तेलंगाना कार्टून एसोसिएशन से धन्यवाद करता हूँ। कॉन्फ्रेंस भी कल का आज का अच्छा हुआ। जो पहले हम सोचे थे अकोला में मीटिंग हुआ और गोवा में हुआ, इतना मेंबर्स अटेंड आता नहीं आता बोल के थोड़ा मन में था, मगर जो साउथ में तेलंगाना में आप सबको प्रेम से आप लोग सब इतना जो कॉन्फ्रेंस का 750 के ऊपर आया मेंबर्स और गेस्ट मिनिमम 50 मेंबर्स 800 के आया। सबको आप लोगों का जो तेलंगाना का उम्मीद है हमारे से थैंक यू वेरी मच। और तेलंगाना कार्टून एसोसिएशन जो हमारा पुराना स्टेट बाइफरकेट के टाइम में हमारा एसोसिएशन फॉर्म किया 2014 जून में हम जो तेलंगाना कार्टून एसोसिएशन स्टार्ट किया। अभी नियर अबाउट 10 साल हुआ। 10 साल से 3 टाइम मैं रमेश जी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बन के हर एक डिस्ट्रिक्ट का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छा हम जो सीसीए का और जिनिंग का ट्रेडर्स का एक्सपोर्टर्स का जो इश्यूज है हम ये 10 साल से पूरा चार्ट आउट करके क्वालिटी तेलंगाना में कॉटन अच्छा क्वालिटी दे सकते। ऑल ओवर इंडिया में 30 mm प्लस का ओनली तेलंगाना में मिलता। वो क्वालिटी को बढ़ने के लिए हमारा एसोसिएशन ज़्यादा कोशिश किया और 2 टाइम्स जो सीसीआई प्रोक्योरमेंट में हाईएस्ट ऑल ओवर इंडिया में हमारा स्टेट का नियर अबाउट 2 साल में 75 लाख टू 80 लाख प्रोक्योरमेंट हुआ। वो टाइम में फार्मर्स को भी स्टेट गवर्नमेंट सीसीआई मार्केटिंग डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट टेक्सटाइल फार्मर को पहले 15-20 दिन को पेमेंट आते थे। लास्ट टाइम में 3rd डे जो परचेस होता ना फार्मर को डायरेक्ट अकाउंट में 3 दिन में जो उसका फार्मर अकाउंट में डाल दिया। 70-80% प्रोक्योरमेंट एवरी ईयर 2 years में कराया। सबको सीसीआई सीएमडी सबको हम धन्यवाद करता हूँ। और हमारा क्रॉप का भी 45 to 50 लाख का कैपेसिटी है। इसमें से लास्ट 2 years से मिनिमम 10 to 15 लाख थोड़ा बाहर स्टेट्स को जा रहा है। इधर का जिन्नी का कैपेसिटी ज़्यादा है, मगर हर एक स्टेट्स को महाराष्ट्र गुजरात सब जगह को मिनिमम 10 लाख to 15 लाख कपास जा रहे हैं। उस हमारा जिन्निंग कैपेसिटी भी 1 करोड़ के ऊपर है, मगर जिन्निंग का जो कंपटीशन में कपास जा रहे हैं लास्ट ईयर से 20 to 30 जिन्निंग्स क्लोज किया। आगे दिन में भी आने का प्रॉब्लम है। कॉटन में भी थोड़ा अभी पिंक वॉल में आ रहा है। वो एग्रीकल्चर का टेक्सटाइल्स का नया शीड आया तो फार्मर को जिनर्स को और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बनने का चांसेस रहता। 10-12 साल से वही बीटी लगा रहे, उसका फेस्ट अटैक हो गए, फार्मर्स का नुकसान हो रहा है, जिनर्स का स्पिनर्स का सबको नुकसान हो रहा है। मैं ये सीए अतुल भाई जी आने के बाद हर स्टेट को मिला के हर स्टेट को एवरी मंथ क्रॉप पोजीशन का और
आने का चैलेंजेस का भी एवरी मंथ जूम मीटिंग में जो कर रहे। अभी सीए बोले तो एक पहले सीए था, अभी क्या ऑल ओवर इंडिया का सीए हो गया। आपको धन्यवाद करता हूं। आगे का भी वैसा चलने के लिए हम आपके साथ में रहता। टाइम नहीं है हमारे को, जो बोला आप डिफरेंट स्टेट से प्रेम से आया। हर एक आदमी को, हर एक जिन्नर्स को, सबको मेरे तेलंगाना से आपको धन्यवाद करता हूं। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir, आपकी speech के लिए and for giving us an overview of the cotton activities in Telangana. Now, ladies and gentlemen, it's time to invite on stage on the podium Shri Bhupendra Singh Rajpal, Vice President CAI, to address our delegates today morning. मंच पर बैठे टेक्सटाइल कमिश्नर श्रीमती जी रूपराशि जी, सीसीआई सीएमडी दलित जी गुप्ता जी, अतुल भाई अग्रवाल जी, रविंद्र रेड्डी जी, रमन भल्ला जी, कोट्टी राव जी, एसके जाम जी, रमेश जी, विनय कोटक जी और सामने बैठे मेरे सभी जिनर्स भाई, ट्रेडर्स, मिल ओनर्स, ब्रोकर्स एवं कॉटन से जुड़े जो पूरे इंडिया से आप लोग आए हैं, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। तेलंगाना कॉटन एसोसिएशन ने और सीआई को मैं बधाई देता हूँ कि दोनों ने मिलकर जो इस बार एक ऐतिहासिक रचा है, जो एकदम बढ़िया कॉन्फ्रेंस फर्स्ट टाइम करी, इसके लिए मैं दोनों को बधाई देता हूँ। आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से साउथ के सभी जिनर्स, ट्रेडर्स, ऑल इंडिया से आए हुए सभी कॉटन व्यवसाय से जुड़े लोग, आप आज यहाँ से कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कुछ न कुछ लाभ लेके जरूर जाएंगे, सीख के जाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। साथ में आप सबको आने वाले कॉटन सीजन की शुभकामनाएं देता हूँ। प्रभु से कामना करता हूँ कि आने वाला साल आप सबके लिए लाभदायक हो, अच्छा रहे, ऐसी कामना करता हूँ। हमारी कॉटन इंडस्ट्री लास्ट 2 साल से काफ़ी नुकसान में चल रही है, वो चाहे जिनिंग हो, स्पिनिंग हो, एंटायर टेक्सटाइल जो है लॉस में चल रही है। इसके उभरने के लिए हमको एकजुट होकर आगे आना पड़ेगा। ऐसे हाथ पे हाथ धर के बैठने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए हमें सबसे पहले जो है प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सिर्फ बोलने से नहीं काम चलेगा, इसको सब में सबका एफर्ट्स लगेगा। फार्मर्स को एजुकेट करना, गवर्नमेंट के साथ में जो गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए, जो कि एक सबसे बड़ा बीटी नया सीड जो आ रहा है उसकी जो परमिशन नहीं मिल रही है, परमिशन नहीं मिलने के वजह से जो प्रोडक्शन कम होते जा रहा है। अभी मेरे काफ़ी सीड कंपनी के फ्रेंड लोग हैं जो ओनर्स हैं, वो कहते हैं कि अगर नई बीटी सीड की परमिशन जल्दी मिल जाती है तो 20 से 25% का क्रॉप इंडिया में बढ़ सकता है। अगर 25% का क्रॉप बढ़ जाता तो मेरा मानना है कि जो 3-3.25 करोड़ का क्रॉप चल रहा है, ये सीधा 3.5 से 4 करोड़ बेल पे पहुंच सकता है। तो आज मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से टेक्सटाइल मिनिस्टर जी, आपको रूपराशि जी, बोलना चाहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी नई बीटी की परमिशन दिलवाएं ताकि इसमें फार्मर्स को बेनिफिट मिले और इंडस्ट्रीज को भी मिले। इंडिया में जो स्पेंडल अपने बढ़ते आ रहे, हर साल लाखों स्पेंडल बढ़ रहे हैं, लेकिन कॉटन का प्रोडक्शन कम होते जा रहा है। एक बहुत बड़ा ये चिंता का विषय है। ये लोग सोच नहीं रहे हैं कि इसका फ्यूचर क्या होगा। स्पेंडल तो बढ़ाए जा रहे हैं, प्रोडक्शन घटाए जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में इंडस्ट्रीज काफ़ी तकलीफ में आ सकती है। ऐसे ही हमारी कॉटन जिनिंग की जो कैपेसिटी है इंडिया में 7 करोड़ बेल की है। अगर 7 करोड़ बेल तक का भी प्रोडक्शन होता है तो इंडिया में इतनी सफिशेंट जिनिंग फैक्ट्री है, पर इंडिया का प्रोडक्शन 3 से 3.25 3.5 के अंदर ही जूझ रहा है। तो हमारी जितनी जिनिंग फैक्ट्रियाँ ये भी 40-50% कैपेसिटी से ऊपर नहीं चल रही है। तो एक सबसे बड़ा जिनिंग उद्योग को लॉस होने का कारण एक ये है। आज जो जिनर्स काफ़ी आए हैं, इनको थोड़ा सा मैं बोलना चाहता हूँ कि 2-3 सालों में जिसने भी स्टॉक किया है जिनर्स ने, वो काफ़ी नुकसान उठाया है। तो मेरा सब जिनर्स से ये कहना है कि स्टॉक सोच समझ के करें,
लिमिट में करें, क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत बढ़ चुकी है। पहले इंटरेस्ट कॉस्ट कम रहती थी, प्रोडक्शन लागत ज़्यादा होने से, कॉटन का लागत ज़्यादा होने से इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ गई है। तो आप अपनी वर्किंग कैपिटल को संभाल के रखो, देखा देखी नुकसान मत करो। ये मेरा कहना है कि आप सोच समझ के बिजनेस करो और स्लोली आगे चलो। अभी सबसे बड़ा एक हमारे साथ चैलेंज है कि प्रोडक्शन और कंजम्पशन का डेटा इंडिया में सही नहीं मिल रहा है। सीआई हालांकि बहुत अच्छी कोशिश कर रही है, इंडिया के जितने भी एसोसिएशन है, ट्रेडर्स है, सबसे मिलके प्रोडक्शन का डेटा तो कलेक्ट कर रही है, बट कंजम्पशन का डेटा नहीं आ रहा है। तो मेरा रूपराशि जी आपसे ये कहना है कि कंपलसरी आप डेटा जब तक नहीं लागू करेंगे, कानून नहीं लाओगे, बड़ा इसके लिए आप पेनल्टी क्लास नहीं लाएंगे, जब तक ये डेटा अपने को सबको मिलने वाला नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे सीसीआई से और आप रूपराशि जी, जिसे आपकी कैसे भी करके इसको कंपलसरी लॉ लाएं ताकि इसको अपना डेटा क्लियर मिल सके। हमारी जो सेकंड अभी जो कस्तूरी ब्रांड की बात चल रही है, ये बहुत सही कदम उठाया जा रहा है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री और सीसीआई द्वारा, क्योंकि हमारे इंडिया का कॉटन बहुत अच्छा है पर ब्रांडिंग में हम बिल्कुल कमज़ोर हैं। आप वर्ल्ड वाइज देखिए लोग किस टाइप से ब्रांड करते हैं, कम अच्छे हल्के प्रोडक्ट को भी एक अच्छे ब्रांडिंग करके किस टाइप से ऊंचे रेट में बेचते हैं। आज इंडिया का कॉटन अच्छा है पर अपना ब्रांड नहीं होने से हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन में नहीं खड़े हो पा रहे हैं। इसके लिए जो कस्तूरी ब्रांड का प्रमोशन हो रहा है ये बहुत अच्छा है, सीसीआई ने काफ़ी मेहनत करके बनाया है। बट अब इसको सक्सेस करने के लिए सब जीनर्स का हाथ में है, जीनर्स का सपोर्ट चाहिए। अगर जीनर्स इसके जो नॉर्म्स बनाए हैं कस्तूरी ब्रांड के, अगर उसके हिसाब से कॉटन बनाते हैं तो मेरा मानना है 1000 से 1500 रुपये खंडी तक का प्रीमियम मिलने को तैयार है। मेरी कई इंडिया के बड़े बड़े स्पिनिंग वालों से बात हुई, वो लोग बोलते हैं हम 1000 से 1500 रुपये का आपको हम प्रीमियम दे सकते हैं अगर आप कस्तूरी ब्रांड के नाम से, ब्रांड के नॉर्म्स के हिसाब से आप बनाते हैं। साथ में टेक्सटाइल रूपराशि जी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि कस्तूरी ब्रांड बनाने के लिए सबसे बड़ा जो आज की तारीख में चैलेंज है वो कंटामिनेशन का है, कंटामिनेशन का। तो कंटामिनेशन के लिए अगर पूरे इंडिया में जीनर्स मशीनें लगाते हैं जो स्पिनिंग मिल में रहती है, वो अगर कंटामिनेशन हर जिनिंग फैक्ट्री में लग जाएगा तो मेरा मानना है डेफिनेटली वर्ल्ड क्लास का अपना कॉटन हो सकता है। बट इसके लिए आपको 75% तक की सब्सिडी गवर्नमेंट को देना पड़ेगी, क्योंकि इसकी लागत बहुत रहती है। एक मशीन की लागत 50 से 60 लाख रुपया है, वो हर जिनस इसको इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, अगर आप 75% तक की सब्सिडी करते हैं रूपराशि जी, तो डेफिनेटली इंडिया का कॉटन का ब्रांड बहुत आगे बढ़ेगा। इससे फार्मर्स को भी फ़ायदा मिलेगा और साथ में जिनर्स के भी बेनिफिट मिलेगा। अब मैं थोड़ा तेलंगाना के जिनर्स के बारे में बोलना चाहता हूँ कि आपका कॉटन तेलंगाना, आंध्र, कर्नाटक का बहुत अच्छा है, पर यहाँ पे थोड़ा जो इशू आ रहा है वो कंटामिनेशन का आ रहा है। आज भी मैक्सिमम फार्मर्स एसडीपी बैग में कॉटन लेके आते हैं, उसको रोकना पड़ेगा। उसके रोकने के लिए आपको पूरा एसोसिएशन को, हर जिनस को अपने एरिया में जाके फार्मर्स को एजुकेट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट से डिमांड करना पड़ेगी, तेलंगाना गवर्नमेंट से, और उसको बैन करवाना चाहिए। अगर आपने एसडीपी बैग को कॉटन में भरने के लिए बैन करवा दिया तो डेफिनेटली यहाँ का आपकी जो कॉटन है अदर स्टेट से ऊपर बिकेगी और जो अदर स्टेट में कॉटन जाता है वो भी कम होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो आज मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग आज से ही प्रण करें कि कैसे भी करके इसको एसडीपी बैग को, कॉटन को भरना रोकना चाहिए ताकि यहाँ के जिनर्स का फ़ायदा हो सके। कॉटन एसोसिएशन ने जो कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया है वो बहुत मेहनत करी है, 2 से 3 साल तक बहुत सोच समझ के बनाया है। इसमें दोनों बैलेंस बना के रखा है, परचेस और सेलर का। तो मेरा सभी जिनर से ये कहना है कि आने वाले नए साल में डेफिनेटली सीआई के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही कॉटन बेचें, और आपको इसके लिए जो भी डिटेल चाहिए आपके एसोसिएशन से मिल जाएगी। एक वन नेशन वन कॉन्ट्रैक्ट जो अभी श्री ऑनरेबल मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने लॉन्च किया, उनके हाथ से करवाया था। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आने वाले साल आप जो भी कॉटन सेल करो सीआई के उसके हिसाब से ही करें। और एक अभी जो लास्ट ईयर एक जो बहुत बड़ा इशू उठा था बीआईएस कॉटन को लेके, बीआईएस जो आ रहा है ये मेरा मानना है कि जिनर्स के भले के लिए है।
जबकि पूरे इंडिया के जिनर्स कुछ समझ रहे थे कि ये हमारे खिलाफ है। मेरा मानना है कि BIS जो आ रहा है वो जिनर्स के हित में। हाँ, इसमें एक जो क्लास डाली है क्रिमिनल क्लास, वो हटाना चाहिए। अगर क्रिमिनल क्लास हटा देते हैं तो डेफिनेटली इससे जिनिंग को प्रोटेक्शन मिलेगा। इसमें करना क्या है, आपको सिर्फ जो कॉटन भेजना है आपको, उसमें आपको टेस्ट रिपोर्ट BIS से जो अप्रूव्ड लैब है उससे लेके उसको साथ में देना है। लास्ट टाइम पे हमारी जो कॉटन एडवाइजरी की मीटिंग हुई थी, हमने पीयूष गोयल साहब को हमने कहा था हमको 100 लैब प्रोवाइड कराया जाए इंडिया में जहाँ जहाँ कॉटन का बेल्ट है, तो हमको इससे फैसिलिटी मिलेगी। तो डेफिनेटली इंडिया का कॉटन हर BIS के हिसाब से जा सकेगा। तो उन्होंने 100 लैब के लिए भी सेंक्शन दे दिया है। मेरा ख्याल है आने वाले कुछ साल में कॉटन के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उसमें सब में एक एक लैब गवर्नमेंट की रहेगी, ऐसा उन्होंने हमें यस किया है। अभी जो एक और इशू आ रहा है कॉटन डेटा को लेके, क्वांटिटी को लेके, अभी 170 किलो है या 160 किलो है, ये एक बहुत बड़ा इशू है। रूपराशि जी, आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इंडिया का कॉटन 160 से लेके 165 किलो तक का होता है, एवरेज 162 का होता है, बट आपके द्वारा 170 का फिगर दिया जाता है। हमेशा इसमें वो बना रहता है कि भी ये 160 की कि 170 की है। जब इंडिया में 170 का कॉटन होता ही नहीं तो उसका फिगर क्यों देना चाहिए? पहले 160 को कन्वर्ट करके 170 में कन्वर्ट किया जाना पड़ता है। मान लो 3,20,000 है तो एक 3,05,000 ही रह जाता है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप उसको एक्चुअल जो वेट आता है उसके हिसाब से अगर गठाने जो एक्चुअल बनती है उसी को पब्लिश करना चाहिए। अगर आप करेंगे तो हम CI वाले भी उसके हिसाब से डेटा देंगे, तो जो एक बहुत बड़ा डिफरेंसेस बना रहता है उसको भी दूर होगा। इसके लिए ज़रूर आपने सोचना चाहिए। अभी दूसरा एक ट्रेसेबिलिटी को लेके जो अभी बहुत ज़रूरी बन गया है, क्योंकि चाइना का कॉटन का वर्ल्ड में जो उसको अवॉइड किया जा रहा है और इंडिया के कॉटन को पसंद किया जा रहा है, पर ट्रेसेबिलिटी वो मांगते हैं, ट्रेसेबिलिटी बहुत होना ज़रूरी है। तो जो QR कोड है इसको कंपलसरी सभी जिनर्स ने चालू करना चाहिए। अभी QR कोड्स में क्या रहेगा, एक तो जिनिंग का नाम, जिनर्स का नाम रहेगा, कौन से जिनिंग में कॉटन बना है, और साथ में जिस हिप में बना है कॉटन और फार्मर्स का नाम क्या है उसके अंदर उसमें आ सकता है। अगर कोई भी कॉटन बेल के QR को ओपन करेगा तो उसमें इसका फार्मर्स का नाम भी आ जाएगा और जिनिंग का नाम भी आएगा। अगर ये काम करते हैं तो डेफिनेटली अपने इंडिया की कॉटन की और ब्रांड बढ़ेगा, इसका प्राइज मिलेगा। इसके लिए हमें सब जिनर्स को तैयार होना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा काम नहीं, अगर ये काम करते हैं तो डेफिनेटली इसका अपने को प्रीमियम मिल सकेगा। एक जो भी जिनिंग उद्योग में भी जो सबसे बड़ी हमको वर्किंग कैपिटल की इशू आ रही है, वो आ रही है RCM पे 5% जो टैक्स अननेसेसरी में ब्लॉक हो जाता है, इससे करोड़ों रुपए जिनर्स का अटका हुआ रहता है और इसका कोई फ़ायदा GST डिपार्टमेंट को नहीं होता, सिर्फ पैसा ब्लॉक रहता है। तो अगर मेरा सभी एसोसिएशन से कहना है कि हम सब लोग मिल के इस पे आगे बढ़ना चाहिए। 5% वाले को 0.025% होना चाहिए, 25 पैसा हो जाने चाहिए, नॉमिनल एक RCM रखना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का ऐसा कोई रेवेन्यू लॉस नहीं है। पर हमारे जो करोड़ों रुपए हर जिनस का अटका है वो उससे बाहर हो सकता है। मेरा मानना है कि अगर सभी एसोसिएशन मिल के इसको अगर अपन मिनिस्ट्री में प्रपोजल देते हैं, उनको समझाते हैं, तो डेफिनेटली जो है इसको गवर्नमेंट मान लेगी। तो मेरा सब जिनर से ये कहना है, सब एसोसिएशन से कहना है, इसके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा। अंत में मैं क्रॉप के बारे में बताना चाहता हूँ। हम लोगों ने भी सर्वे करवाया है अलग अलग जगह पे, महाराष्ट्र में भी करवाया है, तेलंगाना में भी कराया है। जो नॉन इरिगेटेड एरिया है वहाँ पे लास्ट ईयर से यील्ड कम है 5 से 10% तक, और जो इरिगेटेड एरिया है वो ठीक है। जहाँ पे नॉन इरिगेटेड एरिया है वहाँ प्लांट का हाइट भी कम है। यही सेम रिपोर्ट गुजरात से भी आ रही है और नॉर्थ के साइड से भी आ रही है। नॉर्थ में क्वालिटी का इशू भी आ रहा है। तो मेरा ये मानना है कि आने वाले साल में लास्ट ईयर से करीबन 7 से 10% का क्रॉप कम रहने की ऐसी उम्मीद है। इसके साथ ही मैं अपने शब्द को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय तेलंगाना। Thank you. Thank you so much, Mr. Bhupendra Singh Rajpal.
All right, ladies and gentlemen, now it's time for our chief guest of the conference, Srimati Roop Rashi, Textile Commissioner, Government of India, to come and address our delegates present here today. Yes, thank you so much, ma'am. I'll just adjust the mic. Sorry. Thank you, Anjan. Respected Atul Bhai Ganatra ji, Shri Agrawal, Shri Gupta ji, Vinay sir, Rajpal ji, Shri Jamb, Shri Koti Rao, Shri Reddy, I mean to say the whole gentry, Mr. Chandrasekhar sir, Mr. Sheikh Saria ji, and lot of the whole of cotton community which is present here. It's a matter of real happiness for me that I am here on this 75th year of the association. Now that calls for a celebration for myself as well as all of us. We are, any case, getting into Amrit Kal. If association has done 75 years, I'm sure they would have glorious 75 years more to come. Now, I would like to change the topic if I am given the privilege that when we look at cotton and cotton value chain, why do we talk of challenges first? Should we not say opportunities within the challenges for cotton TVC? Can we change it? We have the topic as challenges and opportunities. So we take the problems head on and फिर हम बोलते हैं उसमें हमारी क्या opportunity है. जबकि cotton जो हमारी संस्कृति की जिसे हम क्रेडल बोलते हैं, बेडरॉक बोलते हैं, इतना बड़ा हमारा संबल है शुरू से. तो मेरी सजेशन है कि अगर हम हमारा एटीट्यूड में पहले अपॉर्चुनिटीज़ एक चैम्पियन लाइक एटीट्यूड लेके आएंगे तो वी विल इमर्ज स्ट्रॉन्गर फ्रॉम ऑल द डेलिब्रेशंस. ये मैं अपने ये किस प्रेरणा से बोल रही हूँ क्योंकि मैंने थोड़े दिन पहले ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर को सुना था ये कहते हुए कि इंडिया इज़ द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एज वेल एज लीडर्स बिकॉज there are 4 words all of us need to remember. We are on the development path. We have the best demographics. We are a democracy. And we have the best demand. Now these 4 things, if we keep at the back of our mind, we know the rationale that why Niti Aayog CEO thinks that by 2032 we would be a 10 trillion economy. He puts it conservatively, while Morgan Stanley looks at it as 11 trillion economy. Now, doesn't that call for हम लोग को पहले अपने आप को खुश होना चाहिए कि an external consultant thinks that we are going to be 11 trillion in maybe 7 years, 9 years from now, and even conservatively, Niti Aayog considers that we will be 10 trillion economy. This was reinforced. It's not that we just talk. हम आपस में ही बात करके खुश नहीं होते. मैं किसी personal trip पे थी and I met some Americans who were traveling with us. And, you know, it was a very childlike thing. The person looked at me and he said, oh, you come from India. The economy is going like this. You know, it was like a childlike expression. Shh. And I remember that word also and that expression, and I feel very good about it, that I come from the land where others are looking at us. So this is the time we should look at our situation, not as only challenges. We should know that we can convert them into opportunities, so we should bring the word opportunities first. Now, for converting this to opportunities, I believe I love to play around the word C, around the letter C, that we need to converse, which we are doing today. We need to converge and we had to conserve our energies and environment. And in this direction, almost a year and a half back, not a year and a half back, about 15 months back, collaborations with Ministry of Agriculture started. So we are hopeful. We have already started a pilot project to look at the productivity challenges. I'm sure the people who are taking it forward in the field are also here and they would be talking to you about it, which is a Ministry of Agriculture-led initiative with City CDRA. However, all these things would give results only when we are able to get out of any control. I call a control as a nefarious control. Control on information, control on calibration standards,
control on price concerns. So let us have some standards wherein we can target this. And that can be done only through leveraging technology. Now, हमारे राजपाल जी ने बोला ट्रेसेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, वो क्यों ज़रूरी है? हम लोग एक और डिस्कशन में बात चल रही थी, तो वी ऑल लुक एट एक्सपोर्ट मार्केट. वी फॉरगेट दैट इफ द डिमांड इज हियर, the demand for transparency will come from here also. We are 1/6 of the world population. Demand is here, demographics is here. So हमको हमारा काम, हमारी traceability, हमारी assurance ज़्यादा करनी होंगी. In US, I was told to cross customs, they need 23 documents. I used to think कि India का customs department or the government departments are difficult. But anything made of cotton, a prominent sourcer told me that they need apparently 23 documents to clear the goods. This is ridiculous. We need to have a system, and I am sure good work is being done in case of Kasturi. Gupta Saab will also enlighten us on that. How do we build up assurance? I call the word assurance, मतलब विश्वास होना चाहिए कि जो हम प्रोडक्ट ला रहे हैं उसमें वो सब कंसर्न्स नहीं है जिससे पूरे विश्व को बहुत तकलीफ हो सकती है. तो we need to build that up in our system, and I'm sure we will be able to do that. And Texprosil is doing good work. We are looking at launching our product to the world community through, again, we have been making announcements. We are doing the work in the forthcoming International Cotton Advisory Committee plenary session, which is 81st session. हमारे यहाँ 81st is Sahasra Chandra Darshan. My friends from South would relate more to it. India has been part of this international engagement, and I'm sure we should make impact there. On environmental impact, there are good work which is being done rest of the world. We are looking at ICAC to take it forward from the farm onwards, from carbon sequestration to the whole of value chain. Now, productivity has been cited as a concern since I have come to this charge. I would say yes, it is not a happy situation that we have not been able to enhance productivity. All of us agree there are two parts to it in terms of the seed or in terms of practices. On seed, at the highest level with the under TAG, a lot of deliberations are being held. So I don't think I am the appropriate person to talk about how they will map up or how they will unfold with Ministry of Agriculture and the relevant bodies. But yes, on practices side, we have already started a project. I'm sure we can leverage that project. And on data on consumption, I want to assure you that we have now assurance from GST. We have been able to develop internal tools to convert from our hang churn obligations, which are an obligation from the spinning side, or leverage whatever we have in the textile statistical return system. But I believe वहाँ पे self compliance ज़्यादा ज़रूरी है. सरकार से ज़्यादा आपके अपने interest में है कि हम कितनी transparency system में लाते हैं. Quality assurance, yes, we need to be develop that quality assurance. We are developing, working on DNA mapping also, and we look for more support from all of you on this. I would like to share with you, आप सब लोग के साथ, क्योंकि आपके जो leaders यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने बहुत काम किया है पूरी कॉटन के लिए. जब हमारे पास जब भी प्राइसेस का कुछ भी इशू आया, तो अगर हमने मार्केट रेगुलेटर तक एस्केलेट किया, मेरा काम केवल फैसिलिटेटर तक था, बाकी ग्राउंड वर्क वॉज डन बाय रिस्पेक्टेड सुरेश कोटक सर एंड द होल टीम विच इज सिटिंग हियर. एंड मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई जब हम कमोडिटी एडवाइजरी कमेटी के जो चेयरमैन अशोक दलवाई सर ने स्पेसिफिकली बोला कि पहली बार ऐसी कमोडिटी में सिनर्जी कोलैबोरेशन दिख रहा है कि ये इश्यूज विच इज़ रिलेटिंग टू प्राइस mechanism, price discovery mechanism, a particular commodity exchange, style of working, their contract, इसमें सारे लोग जुड़ के काम कर रहे हैं. तो सारे लोग जुड़ के काम कर रहे हैं, from the farm
to ginners, to the spinners, to everybody sitting together and discussing with them. Now, solutions are there, but first of all, we have to get out of this mentality of just sitting in own islands and looking at our own individual margins. Regarding the taxation thing, I'm sure we have escalated something Rajpal ji mentioned. We will try to take it forward. On subsidy, Rajpal ji, you know the central government doesn't really look at subsidy. We should make it as a, I believe that if it is an enterprise, we can find ways to fund it. Today, the financial ecosystem is so vibrant, besides other infra, that one should not really look at subsidy. If it is a productive, if it is a business proposition, we will find sources of funds, whether domestic, international, parallel. We need to work different models, but I would like to again say our Honorable Minister, sir, doesn't look at subsidy as one driver of development. And let us try to get out of that, because that is something I would not even like that champions like that who are sitting here should even mention as one of the demand to central government. I, as chairperson of the International Cotton Advisory Committee, organizing committee, I request all of you to please register. हमारे साथ join कीजिए बॉम्बे में. भारत आज सब लोग भारत की तरफ देख रहे हैं, इसलिए कि हमारे नेता मोदी जी ने उसको एक रूप दे दिया है G20 के बाद कि हम जितने इंटरनेशनल एंगेजमेंट करें वो हमारे लोगों के लिए हम उससे कोलैबोरेशंस लेके आएँ, टेक्नोलॉजिकल, फाइनेंशियल सपोर्ट एट ऑल लेवल्स. कुछ स्टेट्स ऑलरेडी हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रही हैं. मैं तेलंगाना से भी ये गुजारिश करूंगी कि हमारे साथ ज्वाइन करें. और इन कुछ शब्दों के साथ मैं ये आपको एश्योरेंस देना चाहती हूँ, आप जो भी आपका विचार विमर्श से आपकी जो आकांक्षाएं, जो आपकी estimated less than 300 lakh bales, and the gap even it was more than 45 lakh bales. But could the price go up? We have to think that whether the lower production was making any difference. And the second factor we faced in 21-22, the foul play on the commodity exchanges, even by a small quantity, say 10-20,000 bales. Certainly this factor makes some impact, but why the same MCX could not make or jump the market in 22-23? Was these players were not having the stock? Whether MNCs were not having the stock? Whether they never wanted to make the profit? But these measures were not important. This 22-23 cotton season. But where we stand, when we analyze, I oftenly ask myself the questions. Apart from these two factors, there are n number of factors impacting the cotton price, maybe the price behavior of competing crops, crude oils, and all those things. But in my opinion, there are two major factors which play, and I think we should concentrate on those, is the demand side and second, the external factors. These are the two factors which lead the market. Of course, other factors may become prominent depending upon demand and supply position. I think I can take 1 more minute on. Even the crop size, we had 398 lakh bale. Once upon a time, there was no MSP operation. But when the crop was 300 lakh bale, we had the big MSP operation. The size, the quantum, ultimately we need to correlate with the demand and the external factors. Just a case I would like to make here is that when we spoke about the farmers holding cotton last year, but I think we normally say that every cotton season is unique and every cotton season teaches some lessons. But certain trend in textile industry change every decade. I just going back in the history,
from 91 to 2000, the exports were lucrative. The institutional spinning industry, maybe the cooperative and other, they were bleeding. Industry used to buy the cotton not only for this one, for the next 6 month inventory they used to hold. Just I have to quickly finish it within half a minute. The 2000 came, the technology mission came, Maharashtra Federation abolished the monopoly scheme, new BT variety came, the production which was constant from 150 lakh bale jumped to 300 lakh bale. First time we faced the external factor, that is the subprime crisis in 2008-9, and that was the time we have seen the maximum MSP operation. Coming to the another decade, 2010-11, the China policy, they started building up the inventory, continued up to 13-14, but all of a sudden they reduced the area and started restricted their import and started consuming the cotton. And 14-15 again, the price, the industry faced a lot of issues. And I'm just coming on the current cotton season, the scenario 21 to 2030. This period would be of the sustainability, shifting from the corporate social responsibility to the mainstream, circularity. The other countries coming up with the new rules and regulations. We have post-corona, the Xinjiang issue, which put the restrictions or the banning the cotton produced in that area and products. I think the next year we may see the increase in production with the government initiative. If they are taken, mission mode it comes, or the industry join the hands with that. And I think I should conclude here now and wish you a happy Diwali and the new cotton season, which brings, and I'm very hopeful this year would be much better than the last year. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, Shri L.K. Gupta, अपने incisive point of view को आज हम सारों के साथ share करने के लिए. So, ladies and gentlemen, now it's time to invite Shri P.K. Agarwal, Advisor Sustainability, Cotton Corporation of India, please to come and address the delegates. And since we're really short on time के में बहुत कमी हम late हो रहा है, we request all the speakers to keep this speech within 5 minutes. Thank you so much. Thank you, sir. Namaskar, Shabba Khair, good morning ladies and gentlemen. Respected Textile Commissioner, Ruprashi Madam, beloved CMD CCI, L.K. Gupta ji, CI President, Atul Ganotra Sahab, Telangana Millers Association, Ravindra Reddy ji, Rajpal ji, Jam Sahab, Balla ji, Kotak ji, Koti Rao ji and Ramesh Chandra ji. Stalwarts down the dais. At the outset, I am extremely thankful to Cotton Association of India and Telangana Cotton Millers Association, which is jointly organizing this Cotton India conference in this beautiful city of Hyderabad. The theme of the conference, Challenges and Opportunities Facing Cotton Value Chain, is very much relevant in the present context. I am sure that the takeaway from the various panel discussions will be very much beneficial for all the participants who are present here. From this dais, I would request all of you that the time has come to remotivate our cotton farmers. As you may all be knowing that few years back, these farmers brought pride to our country
by making India number one in cotton production. But we slipped somewhere. So we have to find the gaps where we have to intervene. Because these are the cotton farmers because of whom we all are present here. They are the backbone of our country. So I would request you to give a big round of applause to our cotton farmers who have brought pride in the past to make India number one in cotton production. If we look back and introspect, we'll find that although we have number one in cotton production, largest area in the world, but our productivity is very less. World average is 750 kg, 750 to 800 kg per hectare. Australia, Brazil, China, 1800 to 2200 kg per hectare. So productivity is the biggest challenge before us. For low productivity of cotton, we cannot hold our cotton farmers responsible. So there is a dire need to think ways and means for enhancing our cotton productivity. Just imagine what miracle our farmers can do if we achieve a global average from 450 to 500 kg to 750 kg per hectare. Our productivity, if increased, production will be around 600 lakh bales instead of 320 to 350 lakh bales. We will not only become Atmanirbhar, but we can also increase our foreign exchange earning by manifold through cotton export or textile products. In my opinion, the way forward to overcome low productivity, we have to create huge irrigation infrastructure or promote drip irrigation facilities to each and every farm, so that the field should not be dependent on rain-fed conditions. I also call upon our scientists to play a big role in developing hybrid and cultivars to improve the economic condition of our farmers. If need be, seed technology can also be imported and customized as per our country requirement. The seed should preferably be high yielding, less maturity period, less water consumption, resistant to moisture stress, and resistant to pest attacks. Another challenge, in my opinion, is availability of more than 1500 varieties of cotton seed, which always confuse our farmers which seed he should like to show. Therefore, there is a need to identify and produce only selected variety of seed which are suitable for the farmers considering their local soil condition. As you all may be knowing, to tackle these type of challenges in the sector, the Government of India took an historic decision and formed Textile Advisory Group, TAG, under the guidance of our dynamic Honorable Minister, Shri Piyush Ji Goyal, and under the chairmanship of veteran cotton man Suresh Bhai Kotak. It is a miracle that with the vigorous efforts of our Honorable Minister, this is for the first time, Ministry of Textiles and Ministry of Agriculture both are working together for overall growth of cotton sector. And they are also striving hard to address various cotton related issues, sustainability aspect, enhancing productivity, revolution in seed technology, escalating drip irrigation facilities, improvement and focus on ELS and organic cotton production. Traceability through blockchain technology, branding of Indian cotton, like Gupta ji said, that Texprocil and CCI, they are working hard on this Kasturi brand India. Besides this, TAG has also taken a decision that a model contract should be brought in for immediate
redressal of commercial disputes. And I think CI is doing hard work and they have made a model contract in this regard. I am glad to announce that with the intervention of TAG and Ministry of Textile, long pending issue of white polypropylene bag, fertilizer bag, which were a major source of contamination, the Government of India has decided to change the color of cotton bag. I think the contamination issue because of fertilizer bag will reduce contamination to a large extent. जैसा कि गनात्रा जी ने कहा और आज कह के तो मेरी जिम्मेदारी और बढ़ा दी इन्होंने कि मैं कुछ कविता कहता हूँ, तो सिंस वी ऑल आर फ्रॉम कॉटन सेक्टर एंड I would request that God has given this opportunity to serve our cotton farmers irrespective of our post, position, power or wealth, as they direly need our support. I would like to express my feelings in these lines. मैंने हर रोज लोगों को रंग बदलते देखा है, उम्र बढ़ने के साथ जीने का ढंग बदलते देखा है। वो जो चलते थे शेरों की तरह, उन्हें पांव उठाने को तरसते देखा है। जिनकी नजरों की चमक से सहम जाते थे लोग, उन्हीं नजरों को बरसात की तरह बरसते देखा है। जिनके हाथों के इशारे से कांप उठते थे पत्थर, उन्हीं हाथों को पत्ते की तरह कपकपाते देखा है। ये पद, प्रतिष्ठा, शोहरत सब कुदरत की देन है यारों, वक्त की धारा में बड़े बड़ों को मजबूर होते देखा है। इसीलिए कहता हूं कि दो हर खुशी वो किसान भाइयों को, क्योंकि दुख देते हुए तो मैंने जमाने को देखा है। मैं इस मंच के माध्यम से उन सभी लोगों से जो 60 साल के या 60 साल के करीब हैं, उनसे अनुरोध करता हूं कि जो जीवन शेष है उसे किसानों को समर्पित कर विशेष बना लें, अन्यथा हमारे अवशेष एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे और हमें इस बात का दुख रहेगा कि हम इस पुण्य कार्य को करने से वंचित रह गए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय तेलंगाना। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। जिस तरीके से आपने अपनी स्पीच को एंड किया, मतलब पूरी ऑडियंस जाग गई। अब नाउ इट्स टाइम, लेडीज एंड जेंटलमैन, टू इनवाइट आवर की नोट स्पीकर श्री रमन भल्ला, हेड कॉटन ऑपरेशंस ऑफ इंडिया, लुई ड्रेफस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। Good afternoon. Can you hear me? Yeah, good afternoon. Okay, so the presentation is there. सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ CI का और तेलंगाना एसोसिएशन का, जिन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ बोलने का. A very warm welcome to all the stalwarts who are sitting on the stage and everyone who is here. Thanks for giving us the opportunity to be here and talk a little bit about the cotton market. मैं अपनी स्पीच में मिक्स रखूँगा, हिंदी इंग्लिश, जैसे सब बाकी सारे लोग कर रहे हैं. So, over time we have already talked about कि cotton market में major key factors क्या हैं. Last बार हम लोगों ने बात करी थी कि two things are driving the market right now. Lack of demand and the lack of US supply. That's defining what the market is. If we look at US, which is the largest exporter, आज भी सबसे बड़ा exporter US है, बट उसका प्रोडक्शन, उसका सप्लाई कंटिन्यूसली गिरता जा रहा है. ये चार्ट दिखा रहा है कि जो लास्ट रिपोर्ट आई थी वैसडी की इन अक्टूबर, उसमें भी यूएस की प्रोडक्शन सितंबर अपडेट से और कम हुई. तो यूएस की प्रोडक्शन कंटिन्यूसली गिरती जा रही है. और ये हम लोगों ने सुना ही है कि अगर क्रॉप खराब होती है तो वो खराब होती चली जाती है. यूएस के साथ इस साल वैसा हो रहा है. बैड क्रॉप गेट्स वर्स. सो जस्ट टू टेक अ लुक कि इस समय से अक्टूबर से फाइनल नंबर में कितना डिफरेंस रहता है.
क्या ये कोई हम लोग को एक गाइडेंस दे सकता है कि अगले फ्यूचर में क्या होना चाहिए? ये चार्ट बताता है कि ओवर द लास्ट 5 इयर्स 2018 से 2022 में वर्ल्ड प्रोडक्शन में अक्टूबर का क्या एस्टिमेट था और फाइनल क्या एस्टिमेट था, और इन 5 सालों में हर साल विदाउट फेल प्रोडक्शन, एंड प्रोडक्शन, द फाइनल प्रोडक्शन वाज लोअर देन व्हाट वाज इन अक्टूबर. इज दिस सिस्टमिक थिंग? इट्स हार्ड टू से. हम लोग को नहीं पता सिस्टमिक है कि इस साल होगा कि नहीं होगा, बट द ट्रेंड हैज बीन वेरी क्लियर. लास्ट 5 सालों में कंसिस्टेंटली ये हुआ है. और यूएस प्रोडक्शन के साथ भी सिमिलर ट्रेंड है, ऑल्दो एक साल ऐसा था जहां पे एक्चुअली प्रोडक्शन ऊपर गए वापस, विच वॉज 2022. अगर हम लोग बात करें वर्ल्ड कंजम्पशन की, इफ यू टॉक अबाउट वर्ल्ड कंजम्पशन एंड से हाउ हैज दैट बीन फ्रॉम अक्टूबर to next year for the final update, since 2018 it has been a mixed bag, but barring 1 year 2020 के अलावा every year it has been coming down as well. So there is a little bit difference in terms of where consumption will end up and production will end up versus where we are today. So the one thing is clear, we will not end up where we are today. It will be different. The other side that we talked about the US supply side. Now we talk about the world demand side. Demand is very clear, it continues to disappoint us. Global consumption, we talked a little bit in the previous slide. Every month it has been coming down, especially since August. And we feel all of that. When all of us talk about the cotton industry and we talk about how the mills are doing, what is the global demand scenario, it is very clear to all of us that demand is suffering. और वो दिखता है USDA numbers में, it is evident. Part of that reason, in fact a very big part of that reason is the fact that the US Fed's fund rate, the interest rate scenario has completely changed. From Feb 22 till today, the interest has gone up more than 5.25%. And that hurts everyone. All the businesses who are willing to invest, consumers who have loans, who have to pay their loans, their cost goes up. So their disposable income comes down. And this is just an indicator of that. Ki when you look at the personal saving, the saving that people do in the US as a percent of disposable income, that is going down. People are not able to save more because they have to spend more, because everything is a little more expensive, and their wages are not increasing in the same proportion. This is just one more story of the same thing. Ki inventories are piling up, and that is one of the also reasons why demand is not high. US clothing and sales and inventory ratio, if you look at that, it's going down, which is a good sign. But on the other side, the retail and wholesaler inventory completely is still going up, is still relatively up. And when you look at versus the past history, it's still at elevated levels. In all of this, I think there is one bright spot. There is one thing which is good, which is China. China demand is still going to be there. China ka import number is going up, and China will need to buy. And we see that happening right now. This below table shows the US exports since every week since 21st of September. And you see China has been the prominent buyer. China has been buying 30 to 50% of US, whatever is being sold out of the US consistently. We don't get any such data out of any other countries, Brazil or anywhere else. But it is clear that whatever US is selling, China is a big portion of that. So abhi tak aapne dekha hoga, we have been focusing so much on US, the world supply. I mean, the point is, why is this important? I mean, we are sitting in India, but we are talking so much about the US. And I think this is the point why it's important. This chart shows when you look at the US carry out, and US carry out is basically the US ending stock. US ke ending stock ko, if you look and compare with the prices of ICE, it's pretty clear that US prices, which is the ICE futures, track what is happening in the US. And US ICE futures market, as we know, is the benchmark for all pricing of cotton. दुनिया में कोई भी cotton price होता है, benchmark remains ICE. तो इसीलिए हम सबको, whether we are sitting in India or in Brazil or China, we still have to talk about US,
and why this remains important. But I think the interesting trend that is kind of developing now is that whether the US hegemony, the US ki supremacy in the cotton market is about to end. This chart shows how the soybean exports between US and Brazil has been over the last 10 years or a little more than that. What we have seen is that Brazil is taking over US in exports. And it overtook that somewhere in 14-15. And since then, Brazil is the dominant force in soybeans. Similar story in corn, although a little recently. Brazil overtook US in corn exports in 2021 and continues to be the higher exporting number. Now, why is it relevant to cotton? Because this is just happening in cotton now. Is this year could be the first year when Brazilian exports of cotton could be more than the US. And we've already seen in terms of production, Brazil overtake US. So this trend, what we have seen in beans in the last 7 years, is now catching up. And this might be a sign that the US supremacy in terms of deciding where the market prices are is about to change. So coming to India now, like India what are the key things that we need to watch out for? I mean, we have talked about the world, the global scenario, you know, there is a balance between, or a tussle, so to say, between the US supply and the global demand. But India what are the things that are going to really drive the Indian market? And I think there are 3 key drivers for that. One is the crop. You know, everyone has talked about the crop. Ki crop kya hai? I think it is still a little early to decide what the final crop is. Crop is still in the making, especially in the central states. So we'll see how the crop turns out. There are signs that it might be bad in certain areas, in certain pockets. So we'll have to see what the farmer does with the crop. Last year, the farmer was the driving force. It was very evident that the farmers can decide what the markets do. It is his produce after all, and it was very evident last year. Everyone felt what happened last year based on what the farmer did. Exports of India. I think this is the other thing, ये बहुत important है, key है कि कैसे exports of India अगर होंगे, कितने होंगे और नहीं होंगे, will drive what happens in India, especially in terms of prices going ahead. And I think one of the key things, not necessarily in the same order, in fact one of the most key things today impacting India is how is the government buying going to be. We heard Lalitji say that CC has already started the procurement operation and they're likely to continue. And I think that is going to be the key factor, what happens to the Indian price and Indian market. Sorry. So for exports, when we talk about Indian exports, kya lagta hai? Is the Indian exports going to be better this year, worse this year? This chart just shows the prices, relative prices of Brazilian A index or Indian, Far East. So if you look in the left hand of the chart, October, November last year, everything was high. The whole complex in terms of basis was high. Basis was trading at 1500 to 2000 on, a super high basis historically. But this year, already in September and October, we are not in November yet, basis has already come down and everything has come down. India is a little more competitive, but I think the key point to remember is that everything has come down. So, अगर इंडियन का डिफरेंस लास्ट ईयर से बेसिस में 10 सेंट है या 11 सेंट है, बाकी ओरिजिन्स का ब्राजील, इवन यूएस and other origins have come down. So even though India relatively, absolutely is a lot more competitive, relatively it is still competitive but not as much because everything is down. So India still will need to fight and grab share from others. Now the key thing. So this is kind of a detour. This is like a what-if scenario. We have seen, right, CCI has been, the government has been consistently increasing prices. MSP goes up every year. It goes up by the tune of inflation, 3 to 4%. Years like this, last year it was 10%. I'm just building a hypothetical scenario ki if 4% is what the MSP continues to increase by for the next 7 years. For the next 7 years, let's say every year, the government increases the MSP by 4%.
and we made some assumptions on seeds and all that. What really stands out is that the break-even MSP by 2030 will be over $105. And this is ex-gin. Ex-gin MSP will be over $105. If 4%, which is I think a fairly conservative estimate of how MSP is going to increase, we'll end up here. Now this chart just shows कि over a very long period, ICE futures का क्या average रहा है? 5 सालों का average was 83, 10 years was 77.5, 15 years was 81, 20 years was 75. So ICE, no matter what time frame you look at, has been very range bound, 70 to 80, 85, somewhere in that range. So if we use ICE as 85 cents as the average for the next 5 years, 2030 में Indian MSP will be at 2100 on. 2100 on will be where the Indian MSP will be. We just saw in the previous slide where Indian basis is today and where the world basis is today. If Indian MSP is at 2100 on, using a long-term average for ICE, the only buyer for that cotton will be the government. Government will be the sole buyer when that happens and if that happens. And it is not a very far-fetched scenario because this has already happened in some other place. This has already happened in China. Between 2011 and 2014, the Chinese government had the same policy similar to MSP, where they had very elevated prices of cotton, where they said they will buy all the cotton that is coming. Anything that trades below that price, we'll buy. And between 11 to 14, because of that policy, China bought and accumulated a total of 11.3 million tons. 11.3 million tons हम लोग convert करें in Indian size bales, that's almost 6.7 crore bales. 6.7 crore bales, which was more than 1.5 years of consumption for China at that point of time. At 95 cents, 11.5 million metric tons of cotton is costing $24 billion. $24 billion is what it will cost. And that was not the actual cost. The actual cost is actually higher because the price they paid was higher than 95 cents. And in today's scenario, if we just carry it for 1 month, if the government has to carry it for 1 single month, it will cost them $160 million. Every month of the inventory that they carry, they lose $160 million. Every year, every month. So by the end of the year, you can calculate how much have they paid in carry. And this is what people have talked about. Carry is there and it's painful. So even for Chinese government, that was too much money, right? I mean, China is flush with cash, but even they understood that it is very, very difficult. So from 2015, Chinese government changed its policy. Instead of buying cotton at an MSP scenario, they moved to a target price policy. And in that target price policy, they decide a price, which is a price that they'll pay the farmers, and they'll value ki market prices kahan pe hain. The difference between the market price and the target price is what they'll give the farmers. It is a market-linked incentive. It is not distorting the supply and demand, and it is just helping the farmers out. I think we've all talked about, everyone knows and understands that yields are the biggest factor in India. Yields are is one thing that really can put India on the map. So this is just a simple comparison. Brazil, the area in Brazil is almost the same as the area of Marathwada. Just a little bit higher. The area of China, the whole area of China under which cotton is planted, is the same as or similar, little higher than what the area of Gujarat is. And the area in Australia is the area of Yavatma, is less than Yavatma. And these three countries combined produce cotton on 5 million
hectares. 5 million hectares. And if we convert their production, combine the production of just these three countries, that's equal to almost 60 million bales, Indian size. 60 million Indian size bales these three countries produce, and that's on an area of 5 million hectares. India mein cotton is 12.5 to 13 million hectares. So we can do the maths. If India can even get close to the yields that these three countries are producing or using, averaging, India alone will produce more than the world consumption. So it's just a crazy fact that the amount of area devoted in India is so massive and the potential is so massive that this is one clear opportunity that is there. And you know, this chart just really talks about ki India ki yields kaisi rahi. I mean, we see after the BT revolution, India yields went up, but over the last 4 years, 5 years, if you look, the India yields have been trending down. So I think this is something, as ma'am talked about, you know, when we need to label our challenges as opportunities, I think this is one of the largest opportunities that is there in India today. I think if we work on that, the potential is massive and India can really change what's happening for cotton in globally. So I'll just skip that quickly. So, you know, after having said all that, I mean, what it really means, in the end, what is it that we need to really remember and think about? Of course, the question still is, the biggest question is, global demand and US production, in dono mein se who wins? Today, the global demand is a little overweighing. But as soon as the demand changes, things can be different. Today, in prices, production is almost factored in. The production for the US is almost factored in. But can the consumption surprise? Today, we see very little signs of it. But is it possible that consumption can really a little take off or get better? Because once that happens, there can be a very, very swift reaction, as people have alluded to. For India, I think सबसे important चीज is MSP. You know, how much of cotton will go into MSP? How big of an MSP program would be there is really going to drive what happens for India in the next 4 months. Exports. If MSP is not there, if ICE stays high, how much can be taken by exports? India is competitive today, but it is not as competitive as the absolute value because everything else is cheaper. So India needs still to fight and take share. And what does the farmer do? Last year, the farmer was very clear that if he wants, he can really change the Indian balance sheet, really drive it. Will that happen this year? What will his strategy be? I think those are the key things that we need to look at. And who will lead the rescue? Because carry is real. I think people have talked about it. The cotton crop is going to come. Jab crop aayegi, someone needs to own it. And the carry is not cheap. So who will be the person who will own it? Whether we'll export it out to outside countries like China, Bangladesh, or the government will carry it, or it'll be farmers, or it'll be mills. So with that, thank you for giving me the time to talk about the cotton scenario, and I really wish everyone all the best. Thank you. Thank you so much, sir, for your keynote address. Now, inviting to the podium, Shri S.K. Jham, Director, Raw Materials, Vardhaman Textiles Limited, to please come and address the delegates. Yeah. Honorable Chief Guest, Shrimati Roop Rashi ji, and other dignitaries on the dais. Since the time available is short, therefore I would like to add on what the people have already said. One of the most important things is that we must improve the quality of seed. Unless we get better quality of seed, the MSP would not be able to work. सीड से हमें यील्ड बढ़ा के ही फार्मर की इनकम बढ़ानी चाहिए, ना कि एमएसपी बढ़ा के की जाए.
अभी जैसे रमन भल्ला जी ने काफ़ी डाटा दिया, तो मैं आपको शॉर्ट में उस पर ऐड करूँगा कि इस टाइम पे जो इंडियन एमएसपी है दैट इज़ एट 89 सेंट्स। अगर जिस तरह से हमने पिछले 5-6 साल में एमएसपी बढ़ाई है, अगर उस परसेंटेज में रहे तो वी विल बी अराउंड 95 और 96 सेंट्स नेक्स्ट ईयर। एंड पिछले 20 इयर्स का अगर हम आइस देखें तो ओनली ट्वाइस आइस हैज गॉन बियॉन्ड 85. It has always remained less than 85. And currently December 24 is at 81 cents. If we buy Brazilian cotton for on December 24, the price of cotton works out to 90 cents, whereas our MSP would be 94 cents, and Indian textile industry would not be viable. Not only in cotton, even in other raw materials also, the prices of man-made fibers as well as prices of all man-made fibers are highest in the world. Most of the prices of polyesters are the landed price of Chinese fiber in India. The prices of cellulosic fibers are again the landed price of cellulosic fiber in India. If we need to compete internationally, then our prices are much higher than China or Indonesia. With imposition of BIS, another issue which has come up is that now we can't import fiber from China, but at the same time, lot of fabric is being imported in India. Earlier, our import of production of fiber was around 350 tons to 400 tons. Now it has gone up to 750 to 800 tons. It is definitely making difficult for the Indian industry to survive. Next, I would like to touch upon contamination. As Papu Bhaiya had said that there should be some subsidy on putting up those contamination-free cotton recovery. We in Vardhaman have taken up that initiative. There are 4 or 5 ginners who have already started those machines. The contamination level, first year it had come down to almost 50%. Now the contamination level is just 33%. Therefore, I would request all ginners that please look at this area, and we are ready to pay premium for that. All spinners would be ready to pay premium for that. Another area which I would like to stress upon is that we make one bale of cotton which costs around 30,000 rupees. Just for saving 15 rupees, we put cover of polyester. And that adds to a lot of contaminations. Our cotton is supposed to be one of the best cottons in the world, but because of contaminants, that's creating an issue. Another area which we should work upon is traceability. That we can easily do. We have all documents with us. We should start, instead of spinner asking for traceability from the ginner should give the traceability. If you take case of Boswell, the moment you buy a bale, that bale has a QR code which starts with the date of planting, date of harvesting, date on which the pressing was done, and date on which the classing was done. If not that much, we can still give lot of traceability up to farm level at that area. Otherwise, most of the brands would not buy the material.
There are other areas also that like regen, cotton, all those things. Whatever certification we are going in for, तो हमें उस पर प्रॉपरली काम करना चाहिए, ना कि सर्टिफिकेट ही क्रिएट करना चाहिए. जो हालत हम पहले ऑर्गेनिक में देख चुके हैं, वही ये दूसरे सर्टिफिकेट्स में भी होने वाली है. हर कोई सर्टिफिकेट ही क्रिएट कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा. इस In addition to that, I would like to add that as far as BIS is concerned, yes, we have started with BIS on man-made fibers, and Chinese fibers, they have already applied for BIS certification, but nobody is going there to verify their production facilities and give certification. Without certification, they can't give us the material. Therefore, our source of material is only one source, and they charge equivalent to the landed price of fiber or little over that. That doesn't make us viable in comparison to other countries. Thank you. Thank you very much. Thank you. Sorry. Hello. Thank you. Thank you so much, sir. All right, ladies and gentlemen, now it's time for the much-awaited crop review by Shri Atul Bhai Ganatra, President CAI. Ladies and gentlemen, I'm honored to say that for the last century, from 1921 onwards, CAI has been the unwavering beacon of accuracy in providing Indian crop reports, commanding the trust of not only Indian banks, but also stock markets, insurance companies, financial institutes, and the entire global textile industry. CAI's name is synonymous with trust when it comes to Indian crop reports, resonating across the world. Now, may I please invite Shri Atul Bhai Ganatra to the podium to give us the crop report. My dear friends, on 25th October, we had our crop committee meeting. Total 29 members from all 10 states have attended this meeting and given their state reports. CI is not doing any estimation of crop from last 2 years. We are taking expected pressing numbers from all 10 states, associations, and giving actual pressing number, which is 97% correct. Last year, our All India pressing was 318.90 lakh bales. For new season, as per Agriculture Department report, dated 20th October 2023, this year, Indian sowing of cotton is completed in 123.87 lakh hectare, compared to last year, 130.61 lakh hectare. You can see on the screen these state-wise sowing numbers. Accordingly to this report, cotton sowing is reduced in 6.74 lakh hectares, which will reduce the crop size
around 18 lakh bales in the coming new season in India. Now we will come to the state-wise pressing number expected for the new season 23-24. As per the report received from all state associations, we will start with North Zone. North Zone pressing is expected Punjab 4.5 lakh bales, Haryana 16 lakh bales, Upper Rajasthan 11 lakh bales, Lower Rajasthan 11.5 lakh bales, total 43 lakh bales. As per North Zone, our CI committee member report given by Sri Pankaj Bhai Sarda and Arun Bhai Sakseria. Accordingly to them, due to this year pink bollworm attack in the almost 50 to 70% area, the yield is drastically reduced. Few places farmers are getting per acre only 1 or 2 quintal kapas. In July month, crop condition in North Zone was very good, and association was expecting 63 lakh bales, but due to this pink bollworm attack, now they are expecting 38 to 43 lakh bales. We have taken crop size of North 43 lakh bales, against last year also 43 lakh bales. So no reduction compared to last year's of CI crop. Gujarat, as per Gujkot and Saurashtra Cotton Association report submitted by S. Ajay Bhai Dalal, Secretary of Gujkot, and Sri Arvind Bhai Pan, who is President of Saurashtra Cotton Association, in Gujarat, due to dry spell of August-September and then heavy rain of September month on standing crop, has made huge losses in Saurashtra and North Gujarat. As per association report, there will be a 20% loss in the yield, but since there was a last year carry forward kapas lying in the Gujarat, though they were expecting only 74-75 lakh bales pressing for this season, if we add last year's carry forward kapas, they were expecting 80 lakh bales, but CI has taken 85 lakh bales against last year's pressing of 94 lakh bales. Coming up to Maharashtra, this year Maharashtra Ginner Association has conducted very big survey, and as per the survey report from the association president Mr. Bhupender Singh Rajpal ji and our committee member Sri Gopal Bhai Agarwal ji, who is also a big ginner in the Maharashtra, according to them, Marathwada, due to poor rains, yield will reduce to 15 to 20% as per the survey, and in Khandes also position is same, but losses will be 10%, and only district which is good in the Maharashtra is Vidarbha. Anyhow, crop is expected by the members around 70 lakh bales, but we have taken 76.50 lakh bales, which is little higher than the member suggested, but against last year's 80 lakh bales, we have taken 76.50 lakh bales, which is a reduction of 5% in Maharashtra. Madhya Pradesh, as per Madhyanchal Cotton Ginner Association President Sri Vinod Jain from MP, they had losses in the first picking due to heavy rains of the on standing crop in the month of September. They have estimated pressing of 18 lakh bales against last year's 19.5 lakh bales. Now coming up to the Telangana,
from where we are today. We are having meeting in the Telangana. As per report submitted by Telangana Ginners Association Chairman Mr. Ravindra Bhai Reddy and Honorable Secretary Mr. K. Ramesh, this season Telangana cotton sowing is reduced by 10%, and due to lack of rain, yield will be reduced by 10%. So, overall they are expecting loss of 8 to 9 lakh bales in the state. But compared to last year, they are expecting MSP in the state, because cost of the ginners buying kapas will be around 59 to 60,000 at MSP rate. They are expecting, if they cannot sell the cotton at 60,000, CCI will be active in the state. And if CCI will be active in the state, they believe, though 9 lakh bales cotton is less this year, state will have a same pressing number of 30 lakh bales, which was last year in the Telangana. So we have not reduced any bales in the Telangana crop pressing. Last year was 30 lakhs, this year also 30 lakhs, expecting MSP and CCI will come in Telangana. Andhra Pradesh, moving to the nearest state. As per report submitted by Honorable Secretary Mr. Rama Rao, Andhra Pradesh is having 35% less cotton sowing in the state. Also, in Rayalaseema district, huge damage reported due to no rains and drought type situation. Andhra Pradesh Association expecting pressing number of 11 lakh bales, but we have taken 12.5 lakh bales against last year 17 lakh bales. So there is a reduction of 4 lakh bales in the Andhra. It can be reduced, but we want to see in one month. Coming up to Karnataka, Karnataka Association President Santilal Oswalji has given press release after getting report of 90 ginners. They called meeting of entire Karnataka 90 members of the state. In press release, Mr. Santilalji has informed that state is having 5 lakh bales less pressing this coming season due to 17% less sowing and drought type situation in 40% of the state. Also he reported, if due to lack of water, there is no water in the state for the next sowing, summer sowing. If summer sowing is not done, this figure can be reduced further as per Mr. Santilalji Oswal. Though they have quoted smaller crop, we have taken 18.5 lakh bales of Karnataka pressing against last year's 22.5 lakh bales. Coming up to Orissa, Orissa State Association President Mr. Arun Agarwal has submitted the report that state will have some same pressing like last year, that is 3 lakh bales plus. Moving to Tamil Nadu. Tamil Nadu is expected 15% increase in the crop. Hence, we have taken estimation of 6.5 lakh bales against 5.5 lakh bales last year. Out of 10 states where India is growing cotton, the Tamil Nadu is the only state where we are expecting little more crop compared to last year. With this total estimation pressing for the 23-24, CI Crop Committee has come out with the figure of 295 lakh bales of 170 kg, that is around 310 lakh bales of running bales against last year pressing of 319 lakh bales. Accordingly, around 24 lakh bales will be less than last year, which is around 7.5%. These losses are mainly reduced because of the sowing of 6.9 lakh hectare. There can be a 5% minus or 5% plus in this crop. So far, CI has not considered in this meeting loss of yield. We want to wait one more month to do the final assessment for the yield loss.
if we consider all state reports, accordingly to the members and the association, the crop will further reduce by 10 to 15 lakh bales. But we are not in a hurry. We want to wait 30 to 40 days, want to see how is the situation and climate is going to change in the coming days. Our balance sheet for 2023 will be on the screen. The committee is expecting higher imports and lower exports in the coming season. Also, we do not have actual consumption number for next season. Hence, we have taken 311 bales consumption as per COCPC. The closing stock will be 21 lakh bales because of the higher import we are expecting compared to last year's 29 lakh bales. This means these main losses this year are due to El Nino effect, dry spell, record dry spell of 45 days. There was no rain in India. In last 120 years, first time we have seen that from 1st August to 15 September, there was no rain in any state, which has created water shortage. Plant growth has been not seen, and there are many reasons for this. Also, this year rain deficit was 6% in India. Compared to last year, we were having 6% excess rain. This excess rain has helped summer crop. Also, there was moisture in the land which could bear the heat of October month, which is this year plant doesn't have moisture. They have no strength to bear this 38-40 degree temperature. This is the worry factor for Indian crop. Now, we are coming up to the most burning factor of our country is cotton consumption. We have taken help of our 10 state associations who are helping us to give proper crop figure. They have helped us by collecting their state consumption, cotton consumption number. Example, Gujkot and Saurashtra Association, Spinning Association has worked hard and gave us the report that Gujarat consumption is 80 lakh bales. So like that, every state has given us the report. You can have it on the screen that what are the state-wise consumption these states have given us. We'll start from the north zone, 98.50 lakh bales. That is state like Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Delhi, Jammu and Kashmir. Altogether, 98.50 lakh bale is the consumption in north zone. Gujarat, 80 lakh bales. Maharashtra, 34 lakh bales. MP, 34 lakh bales. Telangana, very low, 8 lakh bales. Andhra Pradesh, Spinning Mill Association, Mr. Koti Rao is here, President of Spinning Mill, 35 lakh bales. Karnataka, 3.50 lakh bales. Tamil Nadu, highest, 108 lakh bales. Kerala, 3 lakh bales, other 10 lakh bales. All these state figures are coming. We have reached consumption of 14 lakh bales. Worry is already we have overcapacity of spinning mills. But due to state government subsidies, more 12 lakh spindle order is lying with LMW, 25% advance is paid. Machine will be delivered on or before July and will be in the consumption production will start of this 12 lakh. So I don't know what figures will come once this 12 lakh bales. And out of these 12 lakh bales, mainly we are expecting 6 lakh spindles will be added only in Maharashtra due to new subsidy. This is the capacity of consumption if all state, all spinning mill run on 100%. But unfortunately, because of the shortage of cotton, our industry is not able to run 100%, and we are assuming
our industry will run 75 to 80% this year. Also, I am not sure this 414 lakh bales is a correct estimate of the state. So, we have requested Madam Textile Commissioner to please conduct one survey of milk consumption, and the expenses for this survey will be paid by CI, CCI and CT. So at least we know where we are. Today, it is a big issue for us. We don't know what is our consumption figure. So if this survey, Madam Commissioner will help, we can do this survey, and at least we will arrive where our industry is going to be. Also, many members are calling me from yesterday for the registration. Sir, we could not get registration. What type of conference CI is organizing where the delegates are not allowed to do the registration and come? On behalf of Cotton Association of India, I am very sorry to the people who could not register. But the problem was when we have finalized this Hyderabad, we thought maximum 300 guests will come, but already 750 delegates registered. Hence, and it was a great response. And the places which was booked by us, Trident and everywhere, where there was now also, you see, there is no place of one seat sitting, people are standing up to the end. So if we would have done more registration, it would have been chaos everywhere. So I am once again sorry. In future we'll say that maximum we will see that we have 1,000 to 1,500 people capacity place, and then only we'll do the conference. Third time I am saying sorry to the people who could not register and could not come here. Last, ending up, yesterday some mill people I met in city CMD, farewell party was there, madam was also there. There one very big mill people, they told, because CI is giving a smaller crop, prices of cottons are going up and it is increasing, but it is not correct. CI is collecting state association report and giving genuine figures to the trade. It was CI who was the first to give the crop size of 400 lakh bales when there was a crop. And it is a CI who is giving crop figure of 295 lakh bales as per the market reports. Prices doesn't go with the crop size is smaller. Prices will go up if there is a demand. Before last year, we have seen prices went up from 40,000 to 1,10,000, and this was mainly because of the demand. Even when prices went up from 40,000 to 1,10,000, farmers, ginners, everybody was happy and made money. And spinners that year made tremendous profit, which they have never made in last 50 years. So market will run as per the demand. Our veteran, Sri Suresh Bhai Kotakji, is always saying, after sluggish period, always double demand will come. He told me 2 days before, અતુલભાઈ રાત થઈ જશે તો બીજે દિવસે સૂરજ ઉગશે એવી તે ડિમાન્ડ છે. मीन्स आई विल से इन हिंदी, ही सेड, अगर रात होएगी तो दूसरे दिन सूरज उगेगा, और ऐसे ही डिमांड का है कि डिमांड नहीं है तो सूरज की जैसे डिमांड आएगी. सो आई होप दिस पुअर डिमांड टाइम विल चेंज इनटू गुड डिमांड in coming months, and we'll have a good profitable time ahead for the entire ginning, pressing, spinning, everybody. With this, I complete my presentation and Indian Cotton Balance Sheet Report. Before I conclude, I want to wish each and every one of you the best upcoming season. All the best. Thank you.
So, ladies and gentlemen, now it's time to do a CAI website launch. I would request President CAI Atul Bhai Ganatra and obviously Madam Textile Commissioner, if you could come forward and launch the CAI website. Thank you so much, President. Thank you so much, Madam Textile Commissioner. Our website was very old and we were having a record of last 35 years. So we decided, our board of directors decided to update the website. We have spent more than 15 lakh rupees to update our website, and the trade will have an entire detail of the last many years record, USDA, world record, China, whatever you want to see, please come to our website and have a look. The report, whatever you want, it is available. Thank you, madam, for launching our website. Thank you. Thank you. Thank you so much, everyone. Ladies and gentlemen, now it's time for the felicitation ceremony. I would request all our dignitaries to please stay on the stage. And now I would invite Madam Commissioner, Srimati Rooprashi ji, and Atul Bhai Ganatra, President CAI, to please come forward and felicitate our sponsors. First, I would like to invite our diamond sponsors on stage. Shri Nitin Ganatra, Shri Radha Lakshmi Cotton Private Limited, Mumbai, diamond sponsor. जोरदार तालियों से हमारे स्पॉन्सर्स का प्लीज स्वागत करा जाए. तालियां रुकनी नहीं चाहिए डायमंड, गोल्ड और सिल्वर स्पॉन्सर्स के दौरान. श्री संचित सिंह राजपाल, मंजीत कॉटन प्राइवेट लिमिटेड, डायमंड स्पॉन्सर. तालियां तालियां. श्री भूपेंद्र ठक्कर, कोटक जिनिंग एंड प्रेसिंग इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, डायमंड स्पॉन्सर. श्री गोपाल टी अग्रवाल, रिद्धि सिद्धि कॉटेक्स प्राइवेट लिमिटेड, औरंगाबाद, डायमंड स्पॉन्सर. एक बार हमारे डायमंड स्पॉन्सर के लिए दोबारा जोरदार तालियां हो जाए, लेडीज एंड जेंटलमैन. Sorry, just quickly. What is this? I'm losing it.
Thank you so much once again to all our diamond sponsors. Now, I'd like to invite our gold sponsors to come on stage. Shri Dheeraj Kumar Khetan, Shri Salasar Balaji Agritech Private Limited, Hyderabad, gold sponsor. Please, taliyan, taliyan, taliyan. Thank you. Shri Raman Bhalla Louis Dreyfus Company, gold sponsor. Shri Vikrant Khetan, Agarwal Ginning Pressing Private Limited, gold sponsor. Shri Love Bajaj, Bajaj Steel Industries Limited, gold sponsor. Shri R. Akhil, Kaveri Group, gold sponsor. Ladies and gentlemen, एक बार हमारे गोल्ड स्पॉन्सर्स के लिए जोरदार तालियां प्लीज. Thank you. Down, down, down. Show me easy. Show me the hard. I'll be what you want. And it's physical. Keep it subliminal. Show me what you want. Down, down, Thank you so much once again to our gold sponsors. Up inviting on stage our silver sponsors, Shri Sanjeev Mittal, Raghunath Agro Commodities, silver sponsor. Shri Sanjeev Mittal. Shri Gaurav Nemade, Utsav Cotton Industries, silver sponsor. Shri Ramesh Randar, Shri Gopal Rameshwar Kumar Sales Private Limited, silver sponsor. Shri Sanjeev Mittal, Shri Gaurav Nemade, Shri Ramesh Randar, our silver sponsors, ladies and gentlemen. Oh, thank you so much. Our Madam Textile Commissioner has to leave. She has duties to attend. So thank you so much, ma'am, for joining us. I'll let Mr. Ganatra do what he does best. Thank you, madam. Madam is leaving now. Madam has a flight for Mumbai at 2:30. And madam is having big burden of our next conference of ICAC, which will be hosted by the Government of India, and co-host is CI, CT, CCI. So madam has lot of work. She is leaving. I once again say thank you very much, madam, for coming to Hyderabad and bless to the city of Hyderabad. Thank you very much, madam. Our program will continue. Please be seated, and there will be a further two speakers. Vinay Bhai Kotak is going to give an excellent presentation, and Koti Rao also, and then we will have a panel discussion. So please be seated. Program will be continue. Only madam is leaving. Thank you. So should I announce Mr. Koti
Thank you so much, Mr. Ganatra. All right, अब time आ गया है to invite Shri Vinay N. Kotak, Additional Vice President CAI, to address the gathering on the theme of the conference, that is challenges and opportunities facing the cotton value chain in India. So I will request Mr. Kotak to take over the podium and take us through the theme of the conference. Thank you. I would first like to thank our President, Mr. Atul Bhai, and the board of CAI for giving me this opportunity to speak on the main theme, that is challenges and opportunities facing the cotton value chain in India. Now, you see, if you see the picture, I have shown SUV as in the form of cotton textile value chain, so it has more shock observers. There are some clouds of slow demand. There is also the challenges on the way, which is shown in the form of the speed breakers, that is production, productivity, price parity, and price volatility. These 4 P's are our hurdles or challenges which we have to overcome. So if you see the clouds, they are for the slow demand, not recession. We should be proud and we should be very sure that India is never ever going to have a recession. There are 2 main reasons. Please don't laugh. Number 1 is our population is very, very fertile. Every year we add 1 Australia in population. So market keeps on expanding. There is no chance of recession. The second most important thing is our traditions. अपने जो त्योहार है, अपना जो कल्चर है, पहले आता है संक्रांति, फिर आता है होली, उसके बाद आएगा गणेश चतुर्थी, ईद, नवरात्रि, दिवाली, सब त्योहार आएंगे. These are the stimulation demand injections. These are as good as demand stimulating injections. तो demand थोड़ी थोड़ी circulate होती ही रहेगी. So we will never ever have recession. Now I'm coming down to the challenges. The first is production. हम सब बहुत चिंतित हैं कि ये productivity नहीं है. लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि सबसे बड़ी जो चिंता है वो प्रोडक्शन itself. Today's generation of farmers are very, very smart. They have smartphone in their hands. They know all the information of the market on tips of their fingers. So they decide their marketing strategy, bringing how much kapas in the yard. वो सब market देख के नक्की करते हैं. So they are very smart. They are not happy with just protective price, that is MSP. They want remunerative price. अगर उनको remunerative price नहीं मिले, then they will shift to other crops. That is their prerogative. They may shift to chilies in Andhra, they may shift to groundnut seeds in Gujarat, soybean into Maharashtra and MP, paddy into North. तो अगर production ही नहीं होगा तो productivity का क्या मतलब है? So most important, the challenge is to maintain the production. The number 2 challenge is productivity. We all have talked about the productivity. We want government to help us and allow the new generation seeds. But there are certain things which are in our own hands, which can be shortcuts. If we do that, definitely the productivity will go up very soon. In next 1 or 2 years. The most important thing is the farmers are cheated many times. उनको duplicate seed दिए जाते हैं. और duplicate seed के कारण उन लोगों का yield घटता है. अगर government उसके ऊपर बहुत ही stringent action लेवे और जेल में डाले तो 101% ये बिकने कम हो जाएंगे. So that will save the farmers' crop और yield बढ़ेगा. Number 2, which is very easy, the certified seeds should be
sold only and only in market yards. आज अपने को दवाई लेनी है तो दवाई की दुकान पे जाते हैं. तो अगर आपको सर्टिफाइड सीड्स चाहिए तो आप मार्केट यार्ड में ही मिलेंगे. Then if the farmer goes and buy that, they are not cheated, they'll get the good seeds and the production will be increased. And the most important thing is farmers training. आज हर एक स्टेट में एक few farmers हैं जिसकी यील्ड 1000 किलो पर हेक्टेयर से ऊपर आती है. उन फार्मर के कोई फार्म को मॉडल बनाना चाहिए एंड उनकी फिल्म लेनी चाहिए, उनके साथ इंटरव्यू लेना चाहिए. एंड दैट एजुकेटिव फिल्म should be converted into local language in the respective state and disseminated in the TV. At the same time, even market yards could be a good farm training programs could be done there. Our market yards are very much underutilized. It's a fantastic infrastructure available to us. We must use that. So yes, these are all very feasible, implementable things which we can do, and that will increase our productivity quite fast. So let's not wait for new generation seeds to come and allow by government and then go for it. So let's work together. It is CII has also started the farmers training program in Bombay, and we want all our state associations to join hands with us and we work together in the same objective. The next hurdle which is I'm going to talk about is price parity. आज कॉटन में फार्मर बोलता है मुझे प्राइस पैरिटी नहीं है, जिनर्स बोलते हैं मुझे लॉस जाता है, प्राइस पैरिटी नहीं है, स्पिनर्स बोलते हैं मुझे लॉस जाता है, प्राइस पैरिटी नहीं है. कोई भी खुश नहीं है, किसी को प्राइस पैरिटी लगती नहीं है. थोड़ा बहुत लॉस करते हैं यहाँ, थोड़ा बहुत कमाते हैं, ज़्यादा कुछ कमाते नहीं है. सो कॉटन टेक्सटाइल वैल्यू चेन इज अंडर सफरिंग. I have one out-of-box idea. I don't know how far it is feasible. That I will take to a little different track. आज इंडिया का टोटल इंपोर्ट ऑफ एडिबल ऑयल 1,65,00,000 टन का है साल का, और खुद का प्रोडक्शन 95 लाख टन है. तो टोटल कंजम्पशन हो गया 2,60,00,000 टन. उसमें कॉटन सीड ऑयल हार्डली 5% यूज होता है. सो कॉटन सीड एडिबल ऑयल का अगर कंजम्पशन एनकरेज करने को आए और उसमें को उसको भी सेम दर्जा दिया जाए जो अदर एडिबल ऑयल को दिया जाता है, तो कॉटन सीड ऑयल का कंजम्पशन बढ़ेगा एंड दैट विल लीड टू अ वेरी हाई कॉटन सीड प्राइस. कॉटन सीड विल बिकम अ को प्रोडक्ट एंड नॉट अ बाई प्रोडक्ट. सो farmers will have a better kapas price, ginners will have good parities, spinners also will have lint cotton at competitive price. So this is the one idea which we all have to put our head, and if it is feasible, we should go to government and request for the same. Now the last which I would like to say is price volatility. Price volatility, let us be very clear and realistic, it's going to remain. प्राइस के फ्लक्चुएशन रहने ही वाले हैं. उसको आप रिस्क वो मैनेज करना पड़ेगा. वो रिस्क जाने वाला नहीं है. इट्स नॉट गोइंग टू डिसअपीयर. इट मे इंक्रीज बट इट्स नॉट गोइंग टू डिसअपीयर. तो प्राइस वॉलेटिलिटी के लिए सबसे बड़ी बात ये, अपने सबको विल हैव टू हैव अ हैबिट ऑफ हेजिंग. वी मस्ट हेज आवर रिस्क. उसके लिए अभी अपन बोलेंगे भाई लिक्विडिटी नहीं है एक्सचेंजेस में, तो इट इज अ स्टोरी ऑफ एग एंड chicken. We have 4,000 mills, 4,000 ginners, maybe about 1,000 other traders and brokers. Why can't we put 100 bales, whatever you want to buy or sell, on an exchange? If everybody starts, take initiative and put 100 bales every day or alternate day to either buy or sell as per their requirement on the platform, वो आए कि नहीं आए. If everybody starts doing that, automatically liquidity will come on the exchange and it will start rolling. So we all have to put our hands together and work on this. So, and the second thing is, please, everybody has to measure their risk appetite. Do not take more risk. Today the untested times are going on, so we all should be careful to
just face this price volatility risk. Now I'm coming to the opportunities. ये सब तो थोड़ी pessimistic बात हो गई. But if you see my road, it's the golden era is very, very near. It's not far for India. अपनी IT industry, its Indian textile industry is going to prosper and will have a really golden era. Now I'll give you how and why. The first is whether USA or Europe, they have determined that they want China plus policy. They don't want to depend only and only on China. So that lot of demand will shift to India. The second, Russia. Now we have been proven friend of Russia. We have also a rupee trade with them. So the moment this geopolitical war situation subsides, फिर भी रशिया के रिलेशंस यूरोप के साथ या यूएसए के साथ इतने सुधरने वाले नहीं हैं. It will take long time. So Russia will source a lot of textile product from India. That is another one. And now let's think about China. We will be surprised, even China will come to India. I'll explain you how. The Xinjiang cotton से बना हुआ प्रोडक्ट ऊपर बैंड लगाया गया है यूएसए में और थोड़ा बहुत यूरोप में भी. तो यूएसए की मार्केट और यूरोप की मार्केट चाइना खो सकती है. तो इफ चाइना डजंट वांट टू लूज दैट शेयर ऑफ द मार्केट, व्हाट इज द आंसर? They will import cotton and Indian yarn from India, make products and sell finished product to USA and Europe. So this ban can make China compulsorily to buy yarn from India, and yarn demand in China will keep on increasing. So this is the another golden lining for the demand from the China. Now let's talk about the Indian demand. Domestic demand is the most visible now. Today the middle class is bubbling. You have a huge, I think the biggest middle class in the world. आज 5 लाख से 25 लाख तक टैक्स भरने वाले मेरे ख्याल से 10-15 करोड़ हो गए हैं. They all are now going for brands. The demand for brands is increasing. So डोमेस्टिक डिमांड तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी. एक तो पॉपुलेशन बढ़ता है और दूसरा अभी तो इनकम भी बढ़ रही है सबकी. मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी ऐसा बोलेगा मेरी नौकरी गई, मेरे पास अभी पैसा नहीं है. एवरीथिंग इज डूइंग फ्रैंकली क्वाइट वेल. सो द डोमेस्टिक डिमांड विल डेफिनेटली रूल एंड विल बी हैविंग अ वेरी गुड टाइम्स टू कम. नाउ मैं भगवान को प्रार्थना करूंगा सबका भले करे, सबका भला करे, पर शुरुआत मेरे से करे. यानी कॉटन टेक्सटाइल वैल्यू चेंज का भला करे, लेकिन शुरुआत कॉटन से करे. दिस इज माय प्रेयर टू गॉड एंड आई जस्ट वांट टू मेक अ स्मॉल प्रेयर along with the optimism. Please give me 1 minute and please hear that before I end my speech. Please make a start of that. Madhyan ji, please start. भगवान को भी प्रेयर में मुश्किल ही तो आती है ना. दिस इज ऑल्सो चैलेंज. Anything, any problem? Then I'll put on my mobile. That's all. Any problem? Guru
जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। So let's walk together towards golden era. Thank you. Thank you so much, Mr. Vinay Kotak. All right, now inviting on the podium is Shri P. Koti Rao, Chairman, Andhra Pradesh Textile Mills Association, to please come and address the delegates. Yes. Also, this is for everyone. Lunch will be after 45 minutes, so please be patient. Please wait and be seated. We'll get back to it in 45 minutes. Meanwhile, let's enjoy the speeches and the sessions we have to follow in another 45 minutes. Thank you. Yes. Good afternoon to everybody. It is a privilege moment for the textile industry, conducted by CAI and Telangana Cotton Ginners and Traders Association. They have given a fantastic opportunity to meet all of you. Thankful to the Ravindra Reddy Garu, Ramesh Garu, and their associated members. Also, Lalit Kumar Garu, CCI, and our remaining distinguished guests on the dais, and fellow industrial members. Thank you for the opportunity given by you to me to convey a few issues faced by the industry as well as the farmers. As you know that India is a tropical country where there is a very good possibility and opportunity to cultivate cotton. We are topmost in the production at one point of time in the world. If you see 2013 and 14, our cotton production is almost reached 400 lakh bales. And if you see the data later, 14 onwards, year after year, go on declining. You know pretty well that Government of India is raising the minimum support price
minimum support price, it is very good. In spite of that, our cotton production is declining. Therefore, it is the time, it is the occasion. What is the reason, the occasion? What is the reason behind for the declining of the cotton crop, even though there are good weather conditions in India? Small PowerPoint presentation I am going to give you now. Cotton has been we think that cotton is nothing but a crop for cotton fiber, which is used for cloth manufacturing. In fact, in the cotton plant, you get only 33% of the cotton lint. Remaining 67%, we get the seed. So, no material is wasted in the cotton producing products. Lint is primary, useful for cloth. Cotton seed is useful for cattle feed. Cotton meal is used for so many food products. Therefore, it is such an important crop it is, no doubt. It is a commercial crop, we call it. But farmers are feeling they are inconvenient to cultivate the cotton. They are not comfortable to cultivate the cotton. They feel it is a gambling. There are many reasons for that. One among them is weather conditions, pests, cost of produce, so forth. And it is also used for medical textiles also, you know well. India is the most suitable, as already said. It is a very suitable environment we have for the cultivation of the cotton. And as I said, it is a good exporter. If you look at these, our cotton production from 11 to 12 to 20 to 23, there is a data. Except in 13-14, from all the years, it has been a declining trend. Leading cotton producing countries, China, India, United States, Brazil, Australia, and Turkey. And these are all the exporting countries: United States, Brazil, Australia, Greece, and India. And further, it is the data given by CAI. Almost this year, sowing area has declined about 33%. These are the just flow chart from the cotton to other items, how it would go. We go to the lint, yarn, cloth, other side seed. Seed would give the cotton cake and cotton meal, so on and so forth. Here, we have to think it is very, very important to observe the data here. If you look at the data, our MSP in 13
candidate was 36,000. And in 22-23, as per MSP, it is about 56,000. And if you look at the market data, if you look at the average, it is about 33,675 in 13 and 68,000 in 23. On the other side, if you see the international cotton prices, it is a quite alarming situation. So, world cotton prices are cheaper than the Indian cotton prices. MSP is gone increasing. Even though MSP increased, our market conditions are more than the MSP prices. In spite of that, what we should think it is, even though our cotton is costlier than the global cotton, even though our market price is higher than the MSP cotton, farmers are declined to cultivate the cotton. Our statistics say there is a decline of about some considerable acreage in the cotton cultivation. What is the reason behind it? We should think it of. Why farmers are not preferring to cultivate the cotton? We know that cotton is a commercial crop, especially if you look at Andhra Pradesh. People are preferring to go grains. They are preferring to go pulses. They are preferring to grow maize. Reason behind it is the cost of the production has abnormally increased for the cotton cultivation. Even if we go on increasing the MSP, no use at all. We are no way equivalent with the global cotton prices. Our previous speaker conveyed that in 2030, by considering 4%, it would be reaching about 9,000 rupees MSP. But world prices are not increasing to that extent. Therefore, what my view is that increasing the MSP is not the solution. Increasing the MSP is not the solution to get the more yield. What the solution is, the cost of the production should be declined, cost of the cultivation to be declined. For that, associations, government, all the related parties should take part to go forward. Otherwise, we, as you know well, we are intending to import the cotton. See, as you know well, today, even though cotton is higher at the price and we are unable to import the cotton because of there is a duty. There is 11% duty. We should make the government for the free trade to export the cotton, to import the cotton. We should be having an equal field, and we should make the farmers comfortable, cultivable, and by giving input subsidies, we should make them comfort by giving a good seed material, pest-resistant material,
fertilizers with the cost, and mechanization. Mechanization is very, very, very important to reduce the cost of the production of the cotton. As you know, that I know in Andhra Pradesh, for plucking of the cotton, farmer is paying 20 rupees per kg. How he is able to sustain? Selling the cotton at 60 rupees, 65 rupees, paying 20 rupees for the plucking of the cotton. Thereby, mechanization is a must, it is essential, then only farmer is able to sustain, farmer is able to incline to cultivate the cotton. Otherwise, he will go away for that. Our industry technology is at par with the world technology. We have about 44 million spindles. It is a big capacity. But we don't have an offtake. We will have to depend on the exports. We are forced to depend on the exports. See, we are not viable, we are not compatible at these prices. Therefore, the government should make it note that farmers should be directly given financial support. Then only going on. Therefore, just I will close it at the earliest possible. Why we are here, few points I thought of bringing to you. Getting a no yield, lesser yield is crop rotation, lack of crop rotation, lack of intercropping, lack of irrigation facilities, small land holdings, mechanization lack, indiscriminate use of fertilizers, and weather conditions, poor guidance by the Department of Agriculture. So, the quality also to be maintained by the farmers due to these reasons, untimely picking, humid weather. PP cloth is the major threat to the industry. PP is a contamination. It is giving a big problem. And already this I have covered it. There is an important issue I thought of bringing to you. In India, our power cost is very high. Nowadays, industry is paying 9 rupees. 9 rupees per unit. Per kg yarn, we use 3 units per kg. Almost 30 rupees per kg of yarn we are using it. Like China, like Bangladesh, nowhere in the world in the price like this. So, power cost must be cheaper, then only we are able to. Therefore, these are the reasons to be taken care of. And most important thing, cheap imports from Bangladesh and China to be curbed. These are the few points where we are lacking, so that if you correct it, our farmers would be able to get it. And lastly, I tell you, in the last agriculture year, our Cotton Association made a model plots, procured, yielded 15 to 20 quintals of the cotton per 1 acre of land. It is due to the guidance and regular follow-it-up. It is not at all difficult to get a 15 to 20 quintals of land by following scrupulously the formalities. Thank you. Thank you once and all. Thank you so much, sir. All right, everyone. Now it's time for our first business session, which is a panel discussion on crop prospects for 2023-24 season. I would like to invite Shri Atulbhai Ganatra, President, to please come forward and moderate this session. I would also like to invite our other panelists.
Meanwhile, all our dignitaries on the dais are welcome to take their seats back. Before that, let's take a group picture. Could we have the photographer here, please? Could our dignitaries please pose for a group picture? Thank you. I would like to now invite the panelists on stage. Shri Arvind Pan, President, Saurashtra Jinners Association. Shri Akash Shah, President, Gujkot Trade Association. Bhupendra Singh Rajpal, Vice President, CAI. Shri Vinod Jain, President, Madhyanchal Cotton Ginners and Traders Association. Shri Arun Agarwal, President, Cotton Association of Odisha. Shri Shantilal Oswal, President, Karnataka Cotton Association. Shri B. Ravinder Reddy, President, Telangana Cotton Millers and Traders Welfare Association. Shri K. Ramesh, Managing Director, Kaveri Ginning Mills Private Limited. Shri Korapatti Rama Rao, Honorary Secretary of Andhra Pradesh Cotton Association. Shri Siva Prasad Ikurti, President of Andhra Pradesh Cotton TMC Consortium. Shri Manish Shah, Director, CAI. Shri Mahesh Sharda, President, Indian Cotton Association Limited. Shri Gopal T. Agarwal, Director, CAI. And Shri Dharmendra Pukhraj Jain, Director, Dharandeep Commodities Private Limited. I will request all the invited panelists to please join us on stage and start the session. May I please invite Ms. Shri Arvind Pan, President, Saurashtra Jinners Association, to please join us on stage for the panel discussion. అందరికీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. ఎనర్జీతో ఉన్నారు అందరూ? తెలుగు వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు ఇక్కడ? చేయలేపడతారా? ఇక్కడ ప్రెసెంట్ 600 నుంచి 800 మంది ఉండొచ్చు, కానీ 5000 మెంబర్స్ ఆర్ సీయింగ్ ఆన్ లైవ్. సో వాళ్ళ కోసం, అట్లీస్ట్ ఫర్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ సీయింగ్ ఆన్ లైవ్, వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ద లంచ్ టైమ్ ఎట్ 2 o'clock. సో కొంచెం ఓపిక పట్టి మన కోసం, మన ప్రోగ్రామ్ మంచి కావడానికి కోసం లంచ్ టైమ్ విల్ స్టార్ట్ ఆఫ్టర్ 2 o'clock. సో ప్లీజ్ accommodate and please request you to cooperate for the same. Thank you so much. Dear friends, just now Akhil told in Telugu, but I will say in English. We will, after this 30-minute session, we will open the lunch, because more than 5,000 people, not only in India, across the world are watching us. So please be seated. This is very important discussion regarding the crop. You are able to see that all 10 association president or secretary is here to give you the report. So please don't be hurry. One day you will eat lunch after 30 minutes. The people who are outside, please requested them to please sit down. When we are going to ICA conference, we are keeping quiet, listening them properly. And when we are in India, we don't follow the rules or anything. So I request people, 5,000 people across the world are watching you. So they are waiting for this important panel discussion. Please be seated. Thank you. We'll start now business session 1. Thank you very much. Crowd have come back. Thank you to everybody.
Dear friends, I welcome to you all on the panel discussion on crop prospects for 2023-24. This is a very important session. I request all the guests to listen quietly and interestingly, as you will get lot of information from these great personalities of our trade. Now I will start the question to our panelists. First we will start from Gujarat. My first question is to Sri Arvind Bhai Pan. He is the president of Saurashtra Association. Dear Arvind Bhai, इस साल सुना है कि सौराष्ट्र और नॉर्थ गुजरात में कपास का क्रॉप बहुत लॉस हुआ है. आपके हिसाब से ओवरऑल लॉस कितना है? थैंक यू अतुल भाई. जो आपने हमको पूछा गुजरात का क्रॉप, बहुत अच्छा है क्वेश्चन आपका. गुजरात का क्रॉप हम पहले बहुत अच्छे मानते थे शुरू में, पर लास्ट एक मंथ से जो बारिश गिरा उसके बाद जो गर्मी खूब पड़ते हैं, गर्मी के वजह से काफ़ी क्रॉप डाउन हुआ. इसमें अभी हम जो सर्वे 10 दिन पहले हमने पूरा गुजरात का जूम मीटिंग रखे थे. इसमें ब्रोकर्स, ट्रेडर्स, जिनर्स, लोकल किसान सब लोग को हमने इकट्ठा करके जूम मीटिंग में बात किया. तो कई लोग बोल रहे थे कि भाई 40% है, 30% है, कई लोग बोलते कि भाई 10% है. लेकिन हमारा मानना ऐसा है, मैंने खुद ने वो छोटे गांव में जाके सर्वे किया तो इसमें 20% से 25% 100% लॉस है. अभी भी थोड़ा गर्मी पड़ रहे है. जो 4BT है उसको टेम्परेचर 32 से ज़्यादा हो तो वो बिगड़ता माल. हमारे गुजरात में 4BT का सोइंग ज़्यादा है और उसमें इल्ड ज़्यादा आता. और बाकी एरिया में कई जगह पे 30% है, 35% है, पर लेकिन ऑल ओवर जो देखो तो 20 से 25% है. इसमें जो अभी सूख गया उसमें पर एकड़ 5 क्विंटल 4 क्विंटल चुन लिया है. वो हिसाब से आपको 20% से 25 है, बाकी 30% पक्का है. थैंक यू अरविंद भाई. अरविंद भाई का कहना ऐसा हुआ कि कम से कम 20 से 25% गुजरात का अभी तक लॉस हो चुका है और ये जो टेम्परेचर है वो उससे आगे और लॉस होगा. फ्रेंड्स, अरविंद भाई ज़मीन से जुड़े हुए एकदम, उनका रिपोर्ट मैं 15 साल से उनसे रिपोर्ट लेता हूँ. उन्होंने मुझे आज से 1 महीने पहले बोला था कि ओवरऑल 15-20% लॉस है. कल मुझे बोले कि इसमें लॉस 5 से 10% और बढ़ेगा क्योंकि क्लाइमेट जो हम सोच रहे थे, हमारे गुजराती में बोलते भूर पवन, वो भूर पवन चालू नहीं हुआ और ऊपर से टेम्परेचर बहुत हाई है. थैंक यू अरविंद भाई. एक और क्वेश्चन है अरविंद भाई आपसे. हाँ, आपको और एक क्वेश्चन है. क्रॉप के बारे में बोला और बाकी और एक बोलता हूँ. अरविंद भाई, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट विल बी गुजरात क्रॉप साइज दिस ईयर न्यू सीजन? थैंक यू. ये आने वाले साल में, रनिंग साल में जो एक्सेप्टेड ज़्यादा था वो आज हमने 80 लाख से 85 लाख का हम समझ रहे. इससे बढ़ेगा नहीं कोई भी हिसाब से. वो भी आप समझो कि हमारे यहाँ पुराना माल पड़ा है गुजरात में, 8 लाख गांठ का किसानों के पास माल पड़ा होगा. और साथ में 80 से 85 लाख क्रॉप आएगा और थोड़ा बहुत
आने वाली सीजन में भी वो कैरी फॉरवर्ड भी रहेगा, ऐसा हम समझ रहे कि भाई भाव ऊंचा होगा तो किसान लोग आज बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, तो वो भाव का कोई बीट नहीं करता कि भाई हमको ये साल बेचने का ही नहीं है। हमारे गुजरात में किसान लोग के पास 2 साल का भी आज माल पड़ा है, वेरी स्ट्रांग किसान। तो हम ऐसा ही समझते हैं कि भाई 80 से 85 लाख गांठ आएगा। Thank you, Arvind bhai. Now my second question is to Akash Shah, President Gujkot Trade Association. Dear Akash bhai, CI Crop Committee has taken Gujkot pressing of 85 lakh bales of 170 kg against last year Gujkot pressing of 92 lakh bales. So we have reduced only 7 lakh bales. What is your view on this? अतुल भाई, मेरा ऐसा मानना है कि जो मतलब 85 का जो फिगर है ना वो सही रहेगा मोस्टली, क्योंकि एक तो गुजरात का एरिया 5% बड़ा है। नंबर 2, कुछ पॉकेट्स में जैसे अरविंद भाई ने बताया कि भाई काफ़ी नुकसान है, तो कुछ पॉकेट्स जैसे मेन लाइन क्रॉप एक्सेलेंट है एकदम, और उसका पोटेंशियल है 15 लाख गांठ का, तो वहाँ थोड़ा सा बढ़ सकता है। प्लस जैसे बताया कि भाई 8 लाख 7 से 8 लाख गांठ कैरी फॉरवर्ड हो सकती है, तो वो भी है। प्लस पिछले साल बाहर का कपास गुजरात में बहुत कम आया था, तो इस साल वो तो डायनेमिक सिचुएशन है, चेंज भी हो सकता है। भाई इस साल अब ज़्यादा तेलंगाना और महाराष्ट्र से आ भी सकता है कपास गुजरात में, तो कुल मिला के 85 लाख का मतलब प्रेसिंग हो जाएगा। थैंक यू। आकाश भाई का कहना है जो सीआई ने क्रॉप लिया है वो बिल्कुल करेक्ट है, प्लस माइनस 2 lakh bales. Akash bhai, my second question to you is very important. Gujarat mills cotton consumption is around 80 lakh bales. Out of this, south and north mills will buy at least 30 lakh bales from Gujarat. Then from where Gujarat mills will buy this shortage of 30 lakh bales? And because of, otherwise, if Gujarat mills don't allow north mills or south mills to buy this cotton, then do you think Gujarat rate will go up than other market by 1,500 rupees? It will stay higher like last year? Thank you. अतुल भाई, ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, क्योंकि सीजन की शुरुआत में आकाश भाई ने मेरे को वहां से बैठ के पूछ लिया कि सर आप फास्ट बॉलिंग डालने वाले हो या स्पिन गुगली डालोगे, तो मेरे बहुत प्रिय हैं, तो पहले पूछ लिया कि आप फास्ट बॉलिंग खेलोगे या गुगली खेलोगे। बोले फास्ट डालना, गुगली मत डालना। मगर पहले से लिखा हुआ है क्वेश्चन, आई एम सॉरी, प्लीज रिप्लाई। नहीं अतुल भाई, मैं जस्ट एक आपको सिचुएशन अभी बताता हूँ कि अभी जब रेट डाउन हो रहे थे 57,500 से लेके रेट किसी को रुई नहीं लेना था गुजरात की कोई भी बिल को, 66,500 तक रेट गए, तब ओनली मेजर बायर गुजरात में वर्तमान था, रोज की 7,000 8,000 गांठ ले रहा था। अचानक ही सब लोकल मिल वाले आ गए लेने के लिए, और भाव आज की तारीख में 58,500 बोलने लगे। ठीक है, तो वो तो रहेगा कंपटीशन के, जब लोकल मिल वाले आते हैं बाइंग के लिए तो भाव बढ़ जाता है। और जो आपने बताया कि मेरे को लगता है कि भाई ये जैसे गुजरात की बाइंग जब मिलों की चलेगी तो गुजरात का रेट 1,000-1,500 रुपया ऑटोमेटिक हाई हो जाएगा कंपेयर टू महाराष्ट्र एंड ऑल। थैंक यू आकाश भाई। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ इंडिया। श्री महेश भाई शारदा जी, एक्स प्रेसिडेंट आईकाल and one of the best knowledgeable person in our industry. I always like to discuss with him. He has a great knowledge regarding yield. He is the man who is chasing government like anything. Every meeting of stakeholder, without fear, he will say to the minister also, sir, seat badalna bahut zaruri hai. So, please listen very carefully Mahesh Sarda's answer of my question. Mahesh bhai, my first question to you is, in July month, we got North report of 62 lakh bales. Now what is gone wrong
that North is now expecting 38 to 40 lakh bales, and why this suddenly 22 lakh bales crop is reduced in the North India? थैंक यू अतुल भाई फॉर योर कमेंट्स एंड एप्रिसिएशन। मैं ये कहना चाहूँगा, नॉर्थ में शुरू में क्रॉप बहुत अच्छी थी एंड पीपल वर एक्सपेक्टिंग अ बम्पर क्रॉप, बट वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण काफ़ी एरियाज़ में नुकसान हुआ। और दूसरा मेनली जो पिंक बॉलवर्म है उसका सीवियर अटैक हुआ, और नॉर्थ के फार्मर्स को अभी पिंक बॉलवर्म को कैसे डील करना है, दे आर नॉट फुली अवेयर। तो 1-2 साल तो ये चैलेंज ही होने वाला है, बिकॉज हमारे पास कोई ऐसा सीड तो है नहीं, तो हमें उसको फिजिकली ही उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो दीज आर द 2 मेन रीजंस जिसकी वजह से क्रॉप एक्सपेक्टेशंस काफ़ी कम हो गई। Mahesh bhai, we have taken 43 lakh bales for the north crop. Do you think it will be lesser than that, or it is a correct, or it will be little higher than this? Just small question. सर, क्रॉप का जो एस्टिमेशन है वो आपका ऑलमोस्ट नियर टू दी फिगर है। 1-2 लाख ऊपर नीचे तो किसी में भी हो सकती है। पर सिर्फ इसमें एक ये ऐड करना चाहूँगा कि पिछली बारी फार्मर्स ने काफ़ी धीरे धीरे क्रॉप लाए थे, इस बारी काफ़ी स्पीड से क्रॉप आ रही है, बिकॉज कीड़ा होने के कारण फार्मर अपने घर में रख नहीं पा रहे। थैंक यू। Thank you, Mahesh bhai. Actually, from North India, in our committee, there are 2 members only. One is Arun bhai, and second is Mahesh bhai's younger brother, Pankaj Sarda. And he is the best man to get all India crop reports. Mahesh bhai, last and final question to you, that due to this pink bollworm, what do you think next year, how much cotton cultivation will reduce in North India? Please give us your thoughts and remedy of this problem. In short answer, please. सर, वैसे तो कॉटन इज़ अ क्रॉप ऑफ कंपल्शन। जिस फार्मर के पास दूसरा चॉइस नहीं रहता वही फार्मर इसको उगाता है नॉर्थ में। पर इस पिंक बॉलवर्म को देखते हुए मेरे को लगता है डेफिनेटली हमारा एरिया कम से कम 10-15% अगले साल घटेगा। थैंक यू। Thank you, Mahesh bhai. Now we are moving towards second biggest state of growing cotton, that is Maharashtra. My question to now is to Sri Bhupender Singh Rajpal ji. He is a president of Maharashtra Ginner Association. We call him, the people who are very close to him, love him, we call him Papu bhai. So my question is to you, Papu bhai. हमने सुना है आपने इस साल बहुत बड़ा सर्वे कराया है, 15-20 आदमी भेज के आपने एक डिस्ट्रिक्ट, एक विलेज का सर्वे कराया है। I say from on behalf of Cotton Association of India, thank you very much for taking this efforts of doing this much big survey. I know you are having 20 factories almost in India, and such survey will help you to in your business. But I hope you have done this survey not only for your business, but for the entire trade. Once again, thank you. Now we would like to know the report of your survey about Maharashtra. Thank you, Papu bhai. अतुल भाई, आपने एकदम सही बोला है कि हमने फर्स्ट टाइम एक बहुत बारीकी से सर्वे करवा रहे हैं और करवाया है। तो अभी तक जो रिपोर्ट आई है उसमें खानदेश की बात करूं तो नंदुरबार, धुलिया और नासिक, इसमें क्रॉप कमज़ोर है, इसकी हाइट कम है, और जो बॉल अपन जो कहते हैं लास्ट ईयर जैसा 60 लगा था वहाँ पे 40 है, 35 है, 50 है। बट पिंक बॉलवर्म की कोई ऐसा इशू नहीं आ रहा है, पर उसकी ईल्ड ही कम है, ऐसा हमको लग रहा है। ऐसे ही हमने जो मराठवाड़ा में किया है तो बीड डिस्ट्रिक्ट डाउन आ रहा है और एक जालना डिस्ट्रिक्ट।
बाकी का दूसरे डिस्ट्रिक्ट है जैसे कि जो नांदेड़ है या हिंगोली है या परभणी है, ये ठीक है। ऐसी मैं बात करूं विदर्भ की, तो विदर्भ में भी यवतमाल, वर्धा, भंडारा और चंद्रपुर, ये 4 डिस्ट्रिक्ट में यही सेम प्रॉब्लम है। हाइट कम है वहाँ की, नॉन इरिगेटेड एरिया की, और लास्ट ईयर की तुलना में यील्ड वहाँ पे कम नज़र आ रहा है। और साथ में ये मैं बताना चाहता हूँ कि पिंक बॉलवर्म नहीं होने के वजह से क्वालिटी में इतना इशू नहीं दिख रहा है, जो हमें 15 दिन 1 महीने पहले लग रहा था कि क्वालिटी का इशू आएगा अगर क्रॉप कम है तो। बट क्वालिटी को लेके अभी जो आ रहे हैं वो क्वालिटी अच्छी नज़र आ रही है इसमें, ये कैप्टन ये बहुत अच्छी चीज़ है। और जहाँ तक अभी मैं थोड़ा सा इससे हट के एक और बात करना चाहता हूँ कि फार्मर्स भी जो है अभी इस रेट में कॉटन बेचने के लिए मन नहीं बना रहे हैं। पहले ऐसा लग रहा था कि शायद फार्मर्स लास्ट ईयर उनको बहुत नुकसान हुआ है तो वो जल्दी बेचेंगे, बट ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको मालूम है कि एमएसपी का प्राइस 7000 है तो कभी भी मिल जाएगा, इसलिए वो बेफिक्र होकर, अच्छा उनकी होल्डिंग कैपेसिटी भी बड़ी है तो उनका होप लास्ट ईयर जरूर 9000 10,000 का था, तो इस साल ऐसा नहीं नज़र आ रहा और उनको लगता है कि 7,500 8,000 रुपये हो जाएगा तो हम माल बेचना चालू करेंगे। अब देखना है कि आगे क्या होता है। अगर बारिश आ जाती है महीने 15 दिन में भी आ गया तो भी थोड़ा सा क्रॉप वापस इम्प्रूव होने के चांसेस रहेंगे। लास्ट ईयर जो फिगर था क्रॉप का वो 80,71,000 का था, तो हमारा मानना है कि इस साल आने वाले साल में 75 lakhs का रहेगा। Thank you, Papu Bhai. Accordingly to Papu Bhai, Maharashtra pressing will be around 75 lakh bales, plus minus 2 lakh bales, 3 lakh bales, because they have done very big survey and it cannot go around wrong. Now we are moving for the same state. My question is to Shri Gopal Agarwal ji, MD of Riddhi Siddhi Cotex Private Limited. Suppose today myself and Papu Bhai, we will say we are Sachin Tendulkar or Virat Kohli. He is our new upcoming star in Indian cotton, Gopal Agarwal ji, जो चौका और छक्का मारने में विश्वास रखते हैं, 2020 खेलते हैं। लास्ट 2 साल से इनके जबान पे सरस्वती बैठी हुई है, जो बोलते हैं होते जा रहा है। 50,000 रुपये के भाव में मुझे 7:30 बजे फ़ोन करके बताया, भैया रुई ले लो 75,000 हो जाएगी। तो मैं बोला गोपाल भाई 20 साल 25 साल 30 साल में तो कॉटन के भाव कभी 60,000 के ऊपर गए नहीं, ये 75,000 कैसे होंगे? क्या सपना आता है क्या आपको सुबह 5 बजे उठ के? बोले नहीं भैया मेरा रीडिंग है। तो 75,000 वाला उस साल 1,10,000 ही पहुंचा। तो अच्छा जजमेंट है, अच्छा काम करते हैं और न्यू जनरेशन के सुपरस्टार हैं। तो गोपाल भाई मेरा आपको क्वेश्चन यही है कि क्या आपको महाराष्ट्र में लगता है कि जो क्रॉप रखा है वो उतना आएगा या उसमें लगता है कि कम हो जाएगा? और नॉट ओनली महाराष्ट्र, आपको क्या लगता है कि फार्मर लास्ट ईयर का रिपीट करेगा कि मेरे को 8,000 9,000 के भाव चाहिए कि ये 7,000 7,500 में बेच देगा? तो 2 क्वेश्चन है, एक तो महाराष्ट्र का रिपोर्ट दीजिए और दूसरा आपको फार्मर का क्या लगता है? जी गोपाल भाई। थैंक यू अतुल भाई। जैसे अभी भैया ने पप्पू भैया ने बताया कि महाराष्ट्र के अंदर सबसे अगर ज़्यादा देखें तो थोड़ी सी सिचुएशन मराठवाड़ा की ज़्यादा ख़राब है, उससे थोड़ी बेटर है खानदेश की, और विदर्भ में मुझे लगता है कि इक्वल टू लास्ट ईयर है, कुछ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में थोड़ी क्रॉप कम है। तो मुझे लगता है कि कंपेयर टू लास्ट ईयर इस साल महाराष्ट्र में एज प्रेजेंट के अंदर 5 to 7% मतलब डाउन हो सकती है। बट इसके अलावा आने वाले जो समय है इसके अंदर क्लाइमेट कैसा रहता है, बारिश होती है नहीं होती है,
और कपास की जो रेट है उसके ऊपर किसान आने वाले टाइम में फर्दर लेता है या वो उसको निकाल करके अदर ग्रोथ के अगर कंपेरेटिव अच्छे प्राइस रहते हैं तो उसमें शिफ्ट होता है। तो आज टू अर्ली है प्रेडिक्ट करना, बट एट प्रेजेंट जो है 5 to 7% डाउन लग रहा है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा सर कि हमारे यहाँ कोई भी इंडिया के अंदर प्रॉपर डाटा नहीं है, हम सिर्फ हवा में गोली चलाने का काम करते हैं। सुबह 10 बजे मैसेज आ जाता है कि टुडे अरावल इज 1,85,600 बेल्स। हम हमारी फैक्ट्री जो कि हम खुद जीनर से, हमें पता नहीं होता है कि आज शाम तक मेरी फैक्ट्री में कितने क्विंटल का कपास तुलेगा, और मैसेज सर्विस को पता चल जाता है कि आज 1,85,600 बेल, मतलब वो एक एक क्विंटल कपास तोल करके जैसे उसने बिल्कुल एक्यूरेट आर निकाली है। तो सबसे पहले हमें प्रॉपर डाटा की ज़रूरत है इसके लिए। दूसरा, आउटटन का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा अतुल भाई, कि आउटटन क्या रहता है। अगर सपोज करो यील्ड कम आया, बट अगर काटन की आउटटन अगर 1% या 1.5% से भी बढ़ती है तो पूरे क्रॉप पे, वो इंडिया के क्रॉप पे 5 लाख बेल का फ़र्क पड़ता है। दूसरी चीज़ होती है जो आज पानी डालते कपास में, अगर कपास के भाव अगर मार्केट के हिसाब से अगर फार्मर्स को पेरिटी नहीं है, जीनर्स को पेरिटी नहीं है, या जो पेटी मर्चेंट जिसको बोलते हैं उसको पेरिटी नहीं, और 2% अगर मॉइस्चर अगर काटन में बढ़ा देता है जो ड्राई में, तो उसका मोटा मोटा 8 से 10 लाख आठ का फर्क पड़ता है। तो ये आज क्रॉप प्रिडिक्शन करना इस बोलते हैं एक अर्ली बर्न बेबी जैसा है कि आज हम उसको प्रॉपर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बट मुझे लगता है कि आज सिचुएशन में लास्ट ईयर से जरूर क्रॉप कम लग रहा है। नंबर जो है आज बोलना अर्ली होगा, बट आज की सिचुएशन में 5 to 7% कम है। थैंक यू गोपाल भाई। गोपाल भाई का कहना है कि डेफिनेटली क्रॉप लास्ट ईयर से बहुत छोटा है। थैंक यू। नाउ वी आर मूविंग टू द नेबर स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, दैट इज मध्य प्रदेश, where the spinning mill is having consumption of 34 lakh bales, but state production is getting reduced every year. Now my question is shifted to Sri Vinod Jain, President Madhyachal Cotton Ginning and Traders Association, MP. विनोद जी, हमने सुना है कि एमपी में सितंबर महीने में जो हैवी रेन्स हुए उससे स्टैंडिंग क्रॉप को लॉस हुआ है, और फार्मर्स कॉटन क्रॉप को निकाल के दूसरे क्रॉप में दिवाली तक जा सकते हैं क्योंकि दूसरे क्रॉप के भाव ज़्यादा है। और अगर ऐसा हुआ तो जो हमने क्रॉप लिया है 18 लाख शायद कम हो जावे, ऐसा क्रॉप कमेटी में एमपी की तरफ से रिपोर्ट मिला था। तो आपका क्या कहना है? सर्वप्रथम सबको नमस्कार। एमपी में इस साल सितंबर में कंटिन्यूस 3 दिन बहुत बारिश हुआ। बारिश के पहले क्रॉप की कंडीशन बहुत अच्छी थी, यानी ऐसा लग रहा था कि 30-40% ज़्यादा आएगा, फैक्ट्रियों में माल रखने की जगह नहीं रहेगी। लेकिन वो बारिश होने से पूरा जो नर्मदा के बेल्ट में मई के महीने में सोइंग होता है वो क्रॉप पूरा डैमेज हुआ है, उसमें 25% 30% का डैमेज हुआ है। लेकिन कुछ हमारे रेनफीड के एरिया, कुक्षी है, सेंधवा की साइड में है, खरगोन की साइड में है, वहाँ पर क्रॉप छोटा था तो उसको पानी का बूस्ट मिला, तो कुछ उसमें क्रॉप सुधार भी होगा। इधर रतलाम साइड में DCH में MECH भी वहाँ लगा है इस साल। तो कुल मिलाकर जो क्रॉप की स्थिति है करीब 15% के आसपास डाउन जाएगा हम लोगों के यहाँ, 10 से 15%, और 18 लाख के आसपास हमारा क्रॉप होगा। और दूसरी चीज़ यही है कि हमारे यहाँ अभी हार्वेस्टिंग पूरा खेत ओपन कर दिया उन्होंने, और अभी डालर चना और गेहूं के लिए सोइंग चालू हो गया है, क्योंकि डालर चने में उनको 10,000 से 12,000 के भाव मिल रहे हैं। तो अदर क्रॉप हमारे यहाँ पानी के कारण अच्छा हो रहा है, इसलिए लोगों का कपास से ध्यान भी हटता जा रहा है थोड़ा थोड़ा। धन्यवाद भैया। थैंक यू। Now my question is to Sri Manish Bhai Shah. He is MD of Jaiman Group. He is one of the biggest buyer of CCI cotton and excellent trader and good knowledgeable person. He is also Director of Cotton Association of India.
But my question to you, Manish Bhai, is very simple. I will not ask you about any state, crop or anything. I just want to know that you are CI crop committee members from last 5 years. What is your observation about CI crop committee crop report? How fair and perfect is the report? Please give us your view on this. Hello everybody. Thank you Atul Bhai. Thank you Papu sir. I have been a member of crop committees over 5 years and I am also director of Cotton Association since more than this is my second term. And as far as the crop estimate is concerned, not a single estimate we ever made without consulting the state associations. Last 2 years, we have been very specific in taking only the association figures. We have never considered or thought about taking any other figures rather than the association figures. From 10 states, we consult each and every president or the secretary, or if they are not, one of them, both of them are not there, their authorized representative. But we have always taken the green signal from the association head, and then only we have taken the figure. There is no question of any figures which are being biased or one-sided, that if I am holding the position or long position or short position, anybody is having. No, that is not considered. Neither we ever have taken such a thought also. But definitely 101% we are taking the association figures, and we will continue to do that only. I request all the audience to have trust in the board, and we will definitely not let you down and try to give you the best possible figures at all the time. The crop, as per the vagaries of the nature, may vary from time to time. Now we have predicted a crop of 295. Tomorrow it may become 305 also, because of the weather conditions or because of other conditions or because of the rains. And if it goes down to 275 also, then that also will be because of the weather conditions or some other conditions. But we are taking all the figures only from the relevant associations from the 10 states. Thank you. I will just add something to Manish Bhai told. All 29 members of the committee are having freedom to say whatever they want to say, and CI top level like myself, Papu Bhai, Vinay Bhai, Arun Bhai, Shyam Makaria ji, we never interfere in any crop state level. If they say, we simply accept and do the changes. Example, Mr. Rama Rao is sitting next to me. Last year, we have taken Andhra crop 12 lakh bales. He called me, नहीं sir, हमारे इधर 15 lakh bales होता, आप बदलना चाहिए. Every 2 days he will call me. Finally, we made change to 15 lakh bales, and above 15 lakh bales, crop of Andhra last year pressing went up to 16.5 lakh bales, and in September meeting we have changed to 16.5 lakh bales. So we don't want to play any hide and seek, no teji mandi in crop, just want to give fair reports to the trade. Sri Papu Bhai will add something on this. मेरा सब जीनर्स का ये कहना है कि जो एक्चुअल क्रॉप को लेके जो डिस्कशन चल रहा है और क्रॉप का साइज कम आ रहा है, इसका मतलब आप लोगों ने ये नहीं निकालना चाहिए कि कॉटन की प्राइस बहुत ऊपर चले जाएगी. ये सबसे ज़रूरी है, नहीं तो आप वन साइड सोचेंगे कि यार क्रॉप कम है, इसका मतलब स्टॉक कर लें और बहुत बाज़ार बढ़ जाएगा. तो ऐसा मुझे लगता है नज़र नहीं आ रहा है
क्योंकि वर्ल्ड वाइड जो हालत ख़राब है और जो यान की हालत ख़राब है, आज भी जो कॉटन 57 या 58,000 में बिक रही है, इसमें एक्चुअल मिलों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो मैं खुद भी मिल चला रहा हूँ, मैं देखा है मैंने। पहले तो सुनते थे कि हाँ यार ये मिल वाले गलत बोलते होंगे, बहुत कमाते होंगे, पर हम खुद देख रहे हैं कि वाकई में पूरे इंडिया में मिलों का लॉस है। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर 10-20 लाख 25 लाख का क्रॉप कम आ जाएगा तो मिलें अपना प्रोडक्शन भी कम कर सकती है, अगर उनको प्रॉफिट नहीं रहा तो इस चीज़ को भी एक ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए, बैलेंस बना के सोचना चाहिए। सेकंड, एक थोड़ा सा भी मेरा महाराष्ट्र के बारे में बोलना चाहता हूँ कि जो अभी ब्रोकर द्वारा जो प्रेसिंग के फिगर दिए जा रहे हैं और सीआई के अलग आ रहे हैं, तो उनसे भी एक मेरा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहना है कि उसको बहुत सोच समझ के डिस्कस करके ही, पूरा एनालिसिस करके ही अपना फिगर बताएं। इससे क्या होता है, इंडस्ट्रीज कंफ्यूज में हो जाती है, इससे कि सबको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। थैंक यू। पप्पू भाई का ये कहना हुआ है कि अभी कुछ दिनों पहले कोई ब्रोकर एसोसिएशन ने कुछ फिगर दिए थे महाराष्ट्र के, जो ना तो पप्पू भाई को मान्य है ना तो गोपाल भाई को मान्य है। तो पप्पू भाई का कहना है जिनर और स्पिनिंग मिल बहुत पैसा लगा के माल खरीदता है, और कोई ब्रोकर ऐसा रॉन्ग रिपोर्ट निकालता है तो जिनर को बहुत लॉस होता है। स्पिनिंग मिल हमेशा 30-40 दिन का रुई मिल में रख के चलती है, तो ऐसा कोई रिपोर्ट जिससे इमीडिएटली मार्केट में मंदी आवे, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिनर को लॉस होता है, मिलों को लॉस होता है, और ब्रोकर को कमाई जिनर और ब्रोकर मिल से ही मिलती है। तो इनका स्ट्रेट कहना है कि जो काम करे वो जिसका काम है उसको करने देवे, आप अपना ब्रोकरेज का काम करिए और बाकी का काम इतने 10-15 एसोसिएशन वाले बैठे उनको करने दीजिए। कल हमारे गुजरात के क्रॉप में मैंने देखा, अजय भाई दलाल तो बनाते रिपोर्ट, तो हितू भाई विकाणी ने लिखा था कि हमारे गुजरात में कोई ब्रोकर ये काम नहीं करता है। हम एक फैक्ट्री से फिगर लाते हैं, सौराष्ट्र एसोसिएशन और गुजकोट रिपोर्ट करेक्ट करता है एक फैक्ट्री से, और हम वो रिपोर्ट देते हैं। तो पप्पू भाई का कहना सही है, आज 20 फैक्ट्री चलाते हैं पप्पू भाई, एक फैक्ट्री में 5-5 करोड़ का माल है, 100 करोड़ का कपास लेके बैठे हैं, कोई गलत स्टेटमेंट देता है, आज 2-5-10 करोड़ रुपए का ऐसे ही नुकसान होता है। आज बड़ी बड़ी मिल है, वर्धमान है, नाहर है, इतना माल लेके रखती है, आप गलत स्टेटमेंट देते हो, मार्केट मंदी होता है, लॉस मिल को होता है, जिनर को होता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करिए, जो आप बोलते हो उस पर नियंत्रण रखिए, ये पप्पू भाई का कहना है। सो थैंक यू पप्पू भाई फॉर दैट एडिंग दिस, थैंक यू। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स South India, where we are today. My question is to Ravindra Reddy ji, President Telangana Association. Sorry everybody, we are making you late for the lunch, but it will be concluded within 5 minutes. You are here for having lunch, everything, but with the knowledge also. And you are having the best people of the country who are giving you the knowledge of all 10 state associations. I am very thankful. On my special request, everybody is here today. Arvind bhai, very rare to attend the conferences and everything. He is very busy man. He is running many industry. But on our request, Arvind bhai also come from all the way from Rajkot. So please bear with us for 10 minutes. Also, I thanks to CI Board of Director for making me this interesting panel moderator. Earlier they say, no, president cannot be a moderator. This time they changed their thoughts. I thank you once again to the directors for giving me this opportunity. President also has little knowledge. Please allow president also to moderate something. Thank you, directors. रेड्डी साहब, आपको हिंदी में ही पूछता हूँ, इस साल तेलंगाना का क्रॉप का सोइंग कितना है, कम है, ज़्यादा है, और इल्ड कैसा आएगा? A year
सोइंग 10% लास्ट ईयर से कम है। तो सोइंग होने के बाद 1 मंथ ज़्यादा बारिश होने के प्लांट ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ। अभी प्लांट तो ठीक है, अच्छा है, मगर 10-15 दिन से पिंक बॉल वर्म आ रहा है। उसका नुकसान कितना है बोल के अभी बोल नहीं सकते। लास्ट ईयर से हमारा अंदाज़ा क्रॉप तो कम रहेगा तेलंगाना में। एमएसपी भी अभी पप्पू सेड्स गोपाल भाई सब बोला है। इंटरनेशनल का जो हिसाब से अपन का देखे तो अभी सब इंडस्ट्री वाले स्पिनर्स लास्ट 5 ईयर से पहले देखे तो एक दिन का भी फेस्टिवल सीजन में भी बंद करने का नहीं रहता। अभी क्या पड़तल नहीं है तो अच्छा बड़ा मिल वाले भी एक शिफ्ट नहीं तो वीकली 1 डेज 2 डेज बंद कर रहे हैं। उतना डिमांड नहीं है। डिमांड के हिसाब से अपन का क्रॉप कम है तो भी आने का सीजन में जाने का रहता। तेलंगाना में ऐसी है तो 1 महीने का एमएसपी आने का चांस होने का दिख रहा है। नहीं तो ऐसे है तो भी जो एमएसपी और ट्रेड का बीच में पैसा एक दिन उधर इधर चल के जाने का हमारा उम्मीद है। थैंक यू। रेड्डी जी, मेरा सेकंड क्वेश्चन आपको वही था, आप पूछे बिना ही जवाब दे दिया। इस साल एमएसपी तेलंगाना में आएगा क्या? तो आपने पहले ही जवाब दे दिया कि जी 1 से 2 महीना एमएसपी आ सकता है। थैंक यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज के रमेश जी। ही इज ऑनरेबल सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना एसोसिएशन and the man behind this success of this Telangana conference, right hand of Ravindra Reddy ji. He and his son Akhil both has worked day and night last 15 days for this conference. Excellent man by heart. Anything we say, he says, साहब मेरे को जो काम दिया मैं 100% करेगा, आप सो जाओ। Like that man, very happy to work with him. रमेश जी, आपके लिए थोड़ा लंबा लिस्ट है मेरे पास। आपके क्रॉप कमेटी मीटिंग में बताया कि 10% तेलंगाना में सोइंग कम है, 10% ईल्ड कम हो सकता है। ये दोनों मिला के 8-9 लाख बेल्स कम है, लॉस है। फिर भी आपने बोला कि मेरे स्टेट का फिगर लास्ट ईयर 30 लैक्स था प्रेसिंग, इस साल भी 30 लैक्स होता, तो उसके पीछे क्या रीजन था? सब इसमें क्या है, सब मेन एमएसपी डिपेंड ऑन इंटरनेशनल मार्केट। आई थिंक इंटरनेशनल मार्केट ऊपर जाएगा तो एमएसपी आने की जरूरत नहीं है। क्रॉप तो ज़्यादा नहीं है, मगर प्रोडक्शन तो लास्ट ईयर से 10% मिनिमम कम रहेगा तेलंगाना में। वो वातावरण होने जो सोइंग भी बहुत ही प्रॉब्लम है, उसके लिए तो प्रोडक्शन कम हो जाता, मगर एमएसपी डिपेंड ऑन इंटरनेशनल मार्केट सर। थैंक यू। रमेश जी का कहना है क्रॉप डेफिनेटली 10-15% कम है, मगर एमएसपी भी आएगा। रमेश जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके स्टेट के प्रेसिंग कैसे कलेक्ट करते हैं? थोड़ा डिटेल में बताएंगे हाउ आप कैसे प्रेसिंग का फिगर कैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज कलेक्ट करते हैं? हम तो हमारे पास 350 जिन्नर हैं। हमारा जो तेलंगाना कार्टन एसोसिएशन का एम्प्लॉइज है, हर जिन्नर को नेक्स्ट मंथ, ये मंथ के बाद में नेक्स्ट मंथ 1 to 10 तारीख तक पूरा डायरेक्ट बात कर को जिन्नर को पूछ को कितना प्रेसिंग हो गए बोल को वो 95% आ जाता। थोड़ा लोग क्या होता, ज़्यादा हमारा हो बोलते, दूसरा कॉम्पिटिशन तो बोलते को पहले महीने में तो कम ज़्यादा बोलते हैं, लास्ट तो बराबर बोल देते हैं। हर जिन्नर को फोन करके बोलते हैं 350 जिन्नर, वही हमारा स्ट्रेंथ है तेलंगाना कार्टन एसोसिएशन का। थैंक यू रमेश जी। लास्ट क्वेश्चन, ये जो एमएसपी का रेट है 7030, अगर फार्मर से तेलंगाना का जिनर ये भाव में कपास लिया तो उसका क्या पड़ता रहता है? पड़ता क्या आता है? अगर आप जिनर है, आप, मेरे को लगता है कि तेलंगाना में सबसे बड़ा जिनर है जो 2 लाख से 4 लाख गांठ का जिनिंग करता है, जो बहुत कम जिनर है।
एक तो मेरे बाजू में बैठे हैं और दूसरे आप है कि इतना जिनिंग करते हैं, तो स्ट्रांग हार्ट वाले हैं, मजबूत आदमी हैं। तो मेरा खाली क्वेश्चन है कि ये जो 7,000 का कपास रेट है, अगर जिनर ने भी 7,000 में कपास लिया तो क्या कॉस्टिंग आएगा? 58,000 का नीचे मार्केट जाए तो एमएसपी चांस है। सीड तो 3,000 का नीचे आता है, एमएसपी चांस ज़्यादा रहता है। डिपेंड ऑन एरिया में वोटी डिफरेंस आता है। आगे दिन में तो धूप ज़्यादा है, लिन परसेंट भी डिफरेंस आएगा। और सीड का रेट के हिसाब से वो 58,000 हम देख रहे हैं, उसका नीचे आएंगे तो एमएसपी आ जाएगा। थैंक यू रमेश जी। रमेश जी का कहना है कि अभी सीड का रेट अच्छा है तो 58,000 का कॉस्टिंग होता है ये भाव में लेंगे तो, मगर सीड कम हो गया तो 60,000 कॉस्टिंग हो जाएगा और कंपलसरी सीसीआई आएगा अगर मार्केट नहीं बढ़ा तो। तेलंगाना में हमेशा सीसीआई समझो 50 लाख गांठ का सीसीआई ने प्रोक्यूरमेंट किया तो 25 लाख 30 लाख तेलंगाना से रहता है। उसका एक रीज़न है कि यहाँ जो आउटन है वो 31.5 आता है और कॉटन सीड के भाव नहीं मिलते हैं, और जो खर्चा है वो 3,000 साढ़े 3,000 रुपये का खर्चा है। तो ये एक वजह है कि यहाँ एमएसपी सबसे पहले आएगा, और अभी देखते हुए ऐसा लगता है कि सीसीआई को फुल स्विंग में दिवाली के बाद या उसके पहले एंट्री करना पड़ेगा। थैंक यू रमेश जी। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स कर्नाटका, द नेबर स्टेट ऑफ तेलंगाना। तेलंगाना वाले बोलते हैं कर्नाटक हमारा बहुत माल लेके जाता है, हमारा फैक्ट्री चलता नहीं है कर्नाटक की वजह से। शांतिलाल जी ओसवाल इज द प्रेसिडेंट ऑफ कर्नाटका एसोसिएशन। शांतिलाल जी, हमने सुना है कि आपने 90 जीनर्स का मीटिंग किया और एक बड़ा सर्वे करके प्रेस रिलीज निकाला है कि कर्नाटका में लास्ट ईयर से 5 लाख बेल प्रेसिंग कम होगा। तो लोग जानना चाहते हैं कि 5 लाख बहुत होता है, 25% क्रॉप कम होता है, तो ये क्यों कम होगा? हमारी एजीएम थी जिसमें ऑल ओवर कर्नाटक से सब जिनिंग और सब प्रोमिनेंट मर्चेंट्स आए थे, और सबका व्यू निकले। एक तो क्या सर कि हमारी सोइंग पिछले साल के मुकाबले 12 से 15% कमी है, एक पॉइंट ये है। और कुछ एरियाज में यानी डेफिशिएंट रेंज का भी, सिवियर ड्रॉट के ये भी प्रॉब्लम था। और कुल मिला के सब लोगों का जब व्यू लिया गया, इंडिपेंडेंट एरिया वाइज लिया गया, तो सबका जब हमने ओवरऑल जब सब मिलाया है तो लास्ट ईयर के से हमारा जिनिंग प्रेसिंग का फिगर्स 15% कम आ रहा था सर। तो ये फिगर्स लगभग 18 से 19 लाख के बीच में सब लोगों का व्यू, ड्राइवर्स व्यू कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 19 लाख गांठ आने की सब लोगों की उम्मीद थी सर। ये बात है सर। इसका मतलब जो सीआई ने 18.5 लाख बेल्स का क्रॉप आपके कहने से जो फिगर रखा वो सही है? एकदम सही है सर। और मेरा लास्ट क्वेश्चन है शांतिलाल जी, अगर पानी का शॉर्टेज है, ड्रॉट टाइप कंडीशन है कर्नाटका में, तो क्या ये समर क्रॉप पे इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? हमारे डैमों में पानी कम है, कैनल में भी सब, तो इसके हिसाब से इफेक्ट तो करने की बहुत चांसेस है सर। और इसमें हमारा ये यानी दूसरा क्रॉप कभी जो कैनल का यानी जो समर क्रॉप होता है उसमें कुछ छोटे मोटे चेंजेस हो, फिर भी क्रॉप समर क्रॉप ही कम हो जाएगा, भले वो कॉटन का हो या दूसरे क्रॉप हो। तो ऐसा एज ऑन नाउ ऐसा लगता है कि समर क्रॉप कम होगा। जी, थैंक यू शांतिलाल जी। शांतिलाल जी का कहना है बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ वाटर, ड्रॉट टाइप कंडीशन, समर क्रॉप जो इनके यहाँ आता है मई, जून, जुलाई, अगस्त, वो डेफिनेटली कम होगा। मूविंग टूवर्ड्स आंध्र प्रदेश, माय क्वेश्चन टू श्री रामाराव जी, ऑनरेबल सेक्रेटरी आंध्र प्रदेश कॉटन एसोसिएशन। डियर रामाराव जी, आपने जो हमारे को आंध्र प्रदेश का नंबर दिया है अराउंड 12.5 लाख बेल्स, वो लास्ट ईयर 16.5 लाख बेल से 25-30% कम है। तो इसका क्या रीज़न है कि इतना 25-30% क्रॉप आंध्र में कम होने जा रहा है? थैंक यू अतुल भाई जी।
You can answer in Hindi or English, Last whatever. year, almost all farmers also very happy because before last year they earned everything, earned more. So that last year also they expected, I think they may get more private and more more money. But unexpectedly rate has come down, and due to pink bollworm even put more efforts, so that we got more than 2.5 to per hectare, 2.5 to 3 quintal average we have reached. For that reason only we also on behalf of our association and textile mills association and other seeds association, we spent more than 30 lakhs and have had a model plats and shown all the farmers to how to reduce control the pink bollworm. But anyhow, we have succeeded and we got more yield also. But from this year, from beginning itself, market slowly has come down, due to come down. So people could not get more price. So that people have diverted more than 35 to 40% diverted to the mirch, that is chilies. Because price also, more high prices are there in chilies. Even that Varangala area also, somewhere they are also diverted on our person. Due to that one, and again drought area also has come. The both regions, 35% average crop showing itself has come down. Even though we are trying with the BCI, cooperation with the BCI and other associations through, we are trying to get more yield and more groups we are trying, and we are going to spend further amounts to farmers to get some pesticides, and while we are training them how to control a pink bollworm, how to get the yield. On that basis, at present we are trying on above our association. I think we are expecting only 12.5 lakh. Only according to showing purpose, we got only 4 to 4.5 lakh hectares only. But even that summer crop also we are expecting more. If we get more yield, we will get further more also, sir. Thank you, Ramarauji. I will convert this that in English. Ramarauji said, in the beginning of the season when the sowing was taking place, kapas rate was so low, farmers have shifted towards mirchi. Number two, there is some pink bollworm problem also seen in the Andhra. That is the main reason. The sowing is less, yield will be less, and the crop taken by us is correct accordingly to Ramarauji. Thank you, Ramarauji. Now we are moving last and final towards Orissa. My question is to Sri Arun Agarwal ji, President, Cotton Association of Odisha. Dear Arun ji, last year and this year, state crop is almost same. What is the update about Orissa cotton? थैंक यू अतुल भाई, यहाँ पधारे सभी महानुभाव को मेरा नमस्कार। लास्ट ईयर ओडिशा में 2,12,000 हेक्टेयर का सोइंग हुआ था। इस साल ओडिशा में 2,35,000 हेक्टेयर का सोइंग हुआ है। करीब 7% का चेंजेस था यहाँ पर ओडिशा में। इस साल बारिश अच्छी होने के कारण क्रॉप का जो प्लांट का ग्रोथ है बहुत अच्छा था। महीना भर पहले तक का हम लोग को ऐसा उम्मीद था कि इस बार बहुत बढ़िया यील्ड मिलेगा हमको, लेकिन लास्ट जो अभी रेन मिस किए हम लोग, इसमें हमारे यहाँ पर बॉल बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुए हैं और कई एरिया में थोड़ा सा पेस्ट अटैक भी हुआ, जिसके कारण थोड़ा सा यील्ड का लॉस हम लोगों को लग रहा है। अभी जो रिसेंट सर्वे हमने किया है लास्ट वीक, हमको ये समझ में आ रहा है कि कोई एरिया में 10 से 15% का लॉस है, कहीं 5% का लॉस है, कहीं 20% का लॉस है। तो एक ओवरऑल जो है ओडिशा का क्रॉप में 10% का लॉस अभी हम लोग देख रहे हैं। अभी आने वाले दिनों में और क्लियर होगा पिक्चर, क्योंकि अभी फार्मर का जो सोचना है कि 4 कुंटल के आसपास का हमको एवरेज यील्ड मिलेगा। तो यही पोजीशन अभी ओडिशा का है सर। अरुण जी, आपसे और एक क्वेश्चन है। थोड़ा पप्पू भाई, इतने सब दूर से लोग आए, थोड़ा थैंक यू बोलना चाहते हैं। देखिए, ये जो प्रोडक्शन को लेके सीआई बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है, पूरे इंडिया के लोगों को इन्वॉल्व करके, जितने भी स्टेट के प्रेसिडेंट व्यापारी है, बट उसके बावजूद भी सभी बिजनेसमैन अपने अपने विवेक से काम करें, अपना गणित लगा के चले, कुछ भी करके कल मतलब जो है देख के चले। कल को ये नहीं होना चाहिए कि सीआई ने ऐसा बोला था वैसा। सीआई ने बहुत अच्छी मेहनत से काम किया है, बट हमारे पास कंजम्पशन का सही डेटा अभी नहीं मिल रहा है, इसके लिए हम उसके बारे में नहीं बोल सकते हैं।
तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप अपने अपने विवेक से करें। हाँ, CAI ने बहुत मेहनत से, बहुत बारीकी से, डिटेलिंग में ये किया। ये नहीं कि ऑफिस में बैठ के क्रॉप का फिगर ला रहे हैं, आपके सामने बहुत ज़्यादा मेहनत से सब काम कर रहे हैं। इसके बावजूद भी आप अपना अपना देख के ही बिजनेस करें। थैंक यू। पप्पू भाई का कहना है कि ऐसा नहीं है कि क्रॉप कम है तो कल उठ के हर एक जिनर 10-10 हज़ार गांठ गोडाउन में डाल देवे और स्पिनिंग मिल को माल ही नहीं मिले और आर्टिफिशियल तेजी ला देवे। इससे दूर रहें आप और अपनी सोच समझ से बिजनेस करें। सही बोला पप्पू भाई ने। तो अरुण जी, लास्ट क्वेश्चन है। आपका राजस्थान में भी फैक्ट्री है, राजस्थान का क्या पोजीशन है सर? सर मैं अभी रिसेंटली राजस्थान में था सर। पिलानी एरिया में मैंने कई एरिया में देखा भी है, प्लांट के अंदर बॉलवर्म भी है और प्लांट से कपास को प्लॉक करते हैं तो उसके अंदर कीड़े भी हैं सर। जैसे महेश भाई ने कहा कि घर में किसान रखेगा नहीं, वो पौधे में छोटे छोटे कीड़े हैं सर। अगर प्लॉक किया जाता है फार्म से तो अंदर कीड़े नजर आ रहे हैं सर। क्रॉप कंडीशन वहाँ भी इतना अच्छा नहीं है सर, यील्ड भी बहुत कम है उनको। थैंक यू अरुण जी। अभी मेरे को जाम साहब ने एक फ़ोटो बताया जो रुई का था। मेरे को गुप्ता जी को और मैडम को बताया कि ये देखिए हमारे यहाँ ये जीन होता है, तो जीनिंग होने के बाद भी कीड़ा रुई में आ रहा है और ये यान में आ रहा है और ये कपड़े में आ रहा है और उसकी वजह से हमारे को क्लेम आ सकते हैं। तो मैडम, ये कीड़े वगैरह का प्रॉब्लम पिंक बॉलवर्म का दूर करना बहुत ज़रूरी है, नया सीड लाना बहुत ज़रूरी है। और जिसको भी ये फोटो देखना है, जाम साहब के पास है, अगर आप देखोगे तो बड़ा आश्चर्य होगा कि ये जीनिंग होने के बाद भी वो पिंक बॉलवर्म उसमें दिख रहा है, कॉटन में आ रहा है। तो स्क्रीन पे दिखा सकते हैं तो दिखाइए सर। अगर कोई हेल्प कर सकता है तो जाम साहब के फ़ोन से लेके, जाम साहब सेकंड सेशन में दिखाएं, तब सेकंड सेशन में जाम साहब आपको ये फोटो पिंक बॉलवर्म कैसे कॉटन में आ जाता है वो दिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच जाम साहब। और अभी कंक्लूजन करते हैं ये मीटिंग का। डियर फ्रेंड्स, द पैनल डिस्कशन कंक्लूजन इज ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ रेन, एल निनो इफेक्ट, pink bollworm affected the Indian crop quality yield, also around 6 lakh hectare. Cotton sowing was less this year compared to last year. And due to all this reason, the reduction in the crop, cotton crop, is around 7 to 10% compared to last year, is almost in all cotton growing states, all where the 9 states sowing has taken place so far except Tamil Nadu, this effect is seen. I thank all my expert panelists for your kind participation, giving us your views and report of your state. Not only report, fair report of your state. Thank you very much. I request all panelists to please come forward for photo. Now we will have a lunch. After lunch, we have excellent panel discussion. Today don't go to home little early. Stay here, have the knowledge. Our youngest moderator, Sanchit Rajpal, is going to have Export-Import Committee meeting. Thereafter, as I told, our new best man Gopal Agarwal ji is having session of Teji Mandi, which will be very interesting to have a knowledge which will work to you for entire 1 year. You can make money out of this. So please be there, have lunch and come back within 45 minutes. Thank you. Thank you very much. Andarke namaskaram. Kuncham late అయిపోయింది మీకు లంచ్ కే. రెడ్డి గారు, నేను అందరు మీకు కొంచెం సారీ చెప్తాను, లేట్ అయిపోయింది. కొంచెం okay. Lunch will be 30 minutes short because many people has to take a flight of 5:30. So by 3 o'clock sharp will start the session. Everybody welcome. Please don't leave. Thank you.
out.
Ladies and gentlemen, everyone outside in the lunch area, we request all of you to please come inside. We are about to start the next panel discussion shortly. This is a kind announcement for everyone. Kindly come back and please get seated. We are starting the next panel session just in a moment. Thank you so much. Hello, very good afternoon, ladies and gentlemen. Hope all of you had a great lunch. This is a kind request for everyone who's outside to please come in and get settled on their seats. I repeat, it's a kind request to everyone who's outside in the lunch area to please kindly come settle inside. We are just about to begin the next panel discussion. Thank you so much.
This is an important announcement for all the panelists on the Export-Import Prospect panel discussion to please come near the stage area. I repeat, all the panelists who are a part of the panel discussion on Export-Import Prospects request you to please gather near the stage area. This is a kind request to everyone outside in the lunch area to please come and get seated inside. Everyone outside in the lunch area, this is a kind request for all of you to please come and get seated inside. We are just about to begin the next panel discussion.
A very good afternoon, everyone. Welcome back. Hope the lunch was good. I hope everyone's stomach is happy and rested. And now we can begin the conference with more rejuvenated vigor. I request everyone to please come inside and get seated. We are about to start our next panel discussion. So, ladies and gentlemen, now it's time for panel discussion number 2, which is a discussion on export-import prospects. I would like to invite Shri Sanchit Rajpal, Joint Managing Director, Manjeet Cotton Private Limited, to come on stage and moderate this session. I would also like to invite the other panelists, Shri Vinay N. Kotak, Additional Vice President, CAI. I repeat, Shri Vinay N. Kotak, Additional Vice President, CAI. Shri Arun Seksaria, Executive Additional Vice President, CAI. Shri Nayan C. Mirani, Director, CAI. Shri Rishit S. Dholakia, Director, CAI. Shri Arshan Barua, Managing Director, Cargill India. Shri Kunal U. Thakur, Director, UB Cotton Private Limited. Shri Dheeraj Khaitan, Managing Director, Shri Salasar Balaji Agro Tech Private Limited. Shri Kushal Shah, Cotton Trader LDC. Shri Dheeraj Khaitan, Managing Director, Shri Salasar Balaji Agrotech Private Limited. Shri K. Akhil, Partner, Kaveri Exports. Shri Munjal Dalal, Managing Director, Gujarat Cotton Group. Shri R. Srikanta, Director, Ecom Agro India Private Limited. Shri Sailesh Patil, Head of Cotton Business for India, COFCO International. Shri Vinod Agarwal, Managing Director, Maruti Oil Mills. I request everyone outside to please kindly come inside and get settled. We are about to start our next panel discussion. And I request everyone inside to please settle on their seats. Thank you so much. I would request the following panelists to please come towards the stage area for our next panel discussion on export-import prospects. Shri Vinay N. Kotak, Shri Vinay Kotak, Shri Arun Seksaria, Shri Nayan C. Mirani, Shri Rishit Dholakia, Shri Arshan Barua, Shri Kunal U. Thakur, Shri Dheeraj Khaitan, Shri Kushal Shah, Shri K. Akhil, Shri Munjal Dalal, Shri R. Srikanta,
Shri Shailesh Patil, Shri Vinod Agarwal, Shri Sanjay Udeshi. आप सबसे गुजारिश है प्लीज स्टेज पे आ जाएं for our next panel discussion on export import prospects. I would request Shri Sanchit Rajpal, Joint Managing Director, Manjeet Cotton Private Limited, to please come towards the stage to moderate this session. This is for the people at the sound system. Could you make sure all the mics with the panelists are working? Thank you. May I request Shri Kushal Shah? सेशन है ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और इस सेशन में हम लोग आपको इंटरनेशनल मार्केट की जानकारी और क्या पल्स है वो हम आपको देने की कोशिश करेंगे। तो मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा So we just got to know that there are about 3,000 people who are watching us live by way of YouTube. So I would like to welcome those audience as well. Warm welcome to this wonderful conference. We are just about to start now our panel discussion on export-import prospects of Indian cotton. So यहाँ पर हम लोग will just keep it mixed with English and Hindi. और हम लोग ये पैनल डिस्कशन में हमने कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम दे पाएँ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को लेकर के और इंटरनेशनल मार्केट की हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटा पाए। बहुत अच्छा पैनल है हमारे पास। तो आई विल जस्ट क्विकली इंट्रोड्यूस द पैनल व्हाट वी हैव हियर। So we have Mr. Arun Saxeria from us, from DD Cotton. We have Mr. Archan Barua from Kargil. We have Mr. Nayan Mirani ji with us from Khimji Vishram. We have Mr. Sanjay Udeshi ji. We have Mr. Vinod Agarwal with us. Mr. Rishit Dholakia. On my left side, we have Mr. Vinay Kotak from Kotak Ginning and Pressing. We have Dheeraj Bhai Khetan from Salasar Balaji. We have Kunal from UB Cotton. We have Shrikanta from Ecom, Shailesh Bhai from COFCO, and finally Akhil Kakirela from Kaveri Exports. Okay, so let's start. So my first question would be to Shailesh Bhai, I would say, because they will be being a merchant, they will be the right person to address this question. So Shailesh Bhai, can you provide insights into current pulse of the export market?
for Indian cotton? And how would you describe the current demand scenario? Also, what's your views on ICE futures? But before that, I would just like to add one more point for my audience. जिस तरीके से म्यूचुअल फंड का अगर आप देखेंगे तो पहले बाकायदा उसके पहले कोई भी म्यूचुअल फंड के पहले वार्निंग दी जाती है कि all mutual funds are subject to market risk. Please read the document, offer document carefully before investing. तो मैं फिर से रिपीट करूंगा, यहाँ पर हम लोग जो भी डिस्कशन कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं आपको इन्फॉर्मेशन देने की, अपने अपने व्यू बताने की, उसको बेस ना बनाए और अपनी सद्बुद्धि, अपने विवेक से डिसीजन ले. तो शैलेश भाई, ओवर टू यू. थैंक्स संचित. हाय एवरीवन. एक्सपोर्ट सिनेरियो अगर हम देखते हैं तो इट्स लाइक it's more price driven, especially for Indian cotton. Recently we were in Singapore during the International Cotton Association conference, and we saw that our prices were quite lower compared to what futures was, and suddenly there was a bit of a business done around 91, 92 cents. So what happens is Indian cotton to be exported outside is actually looking at ICE futures. So if ICE futures at a certain level, then Indian cotton will be sold. So the moment you see, like today, the market's prices of India are very close to the basis levels of 300 to 400 on. The moment they go towards 100, 200 on, and if you are able to sell it at 500 on, जैसे कि futures market आज 84, 85 है, and then you are able to give it around 500, 600, 91, 92. China, Bangladesh, Vietnam, these guys will pick it up. So the prospects are there. Now it all depends on where our prices stay along. Same time, it is very important that Indian is priced at a certain level versus foreign growth. So we will have to compete with the big crop is Brazil, and the bases are really cracking on Brazil. So we will have to compete with Brazil. So India is a more price driven. Your next question on the futures, it's a tough one because we've been seeing the futures trying to break 81, 82, it is not breaking. The futures is trying to break 88, 89, it is not breaking. So the range is more like supply as well as demand. So it will be like a small range where it will be difficult either side to break it quickly unless something drastically happens. So we are struggling on the demand. That is keeping the futures limited towards 86, 87. And we are struggling on the supply as well, especially the US. The futures looks at US crop. So we are struggling to break that 81, 82. So, Shailesh bhai, what kind of levels do you see? Bottom अगर मैं बात करूँगा तो आइस का bottom क्या देखते हैं? और अगर मैं short term की बात करूँ तो आप top क्या देखते हैं आइस का? I think जैसे हम देख रहे हैं, like just recent past में, whenever we have we feel the moment it goes to 82, we feel it will break that resistance level, but it is not. If you look at all the charts, you look at historical data, and you look at the US crop, it actually looks at the supply. So there are a lot of buyers for the futures around 81, 82. And there are a lot of sellers at around 86, 87. So it's going to be trading in that range. Wonderful. So I would now like to ask the same question to Shrikanta, who is from Ecom. So Shrikanta, आपका क्या view है इसके ऊपर? Good afternoon. Look, it's very simple. Take an example of today's replacement, which is 58,000 rupees a candy. If you convert into the cost to land Bangladesh, your replacement is close to 94.50, and the basis for Indian cotton is close to 1,000 on. It's very, very hard to compete. As Shailesh said, I mean, you need to see the Indian prices are not in correlations with the ICE futures. On the second question, with the ICE, the outlook, it's pretty simple. Look, if you see the commitment of the total sales of US till now is close to 6 million bales, right? As per the USDA export, which was targeted at 12.2 million bales. As on today, 52% of the US cotton is already been sold, right? If you see at 88, 87, there was not much of demand. Mills wants to wait. At 82, 81, you have two different things. One is
the mill fixation. As per the last CFTC report on 20th of October, the on-call sales is close to 30,000 contracts, and on-call purchase, which has to be fixed by the growers, is close to 24,000 contracts. So the first notice day is going to be on 24th of November. As soon as the market keeps going down, you have a mill fixations on the one side. On the other side, the buyers are buying the cotton. Unlike like previous years, the mills in Vietnam, the mills in Indonesia are actually hand to mouth. Nobody has got cotton. They all want to buy. So any cotton which is landed close to 90 to 91 cents, it's going to keep selling. On the other fact, on the talking about the China, I mean talking about the futures movement, right? If you see the Zhongzhou versus ICE, it's getting slightly narrowed right now. The front month of Zhangzhou is close to 16,200 yuan per ton. If you convert into cents per pound, it's close to 91 cents. So as soon as Zhangzhou and ICE spread gets narrowed, the mills in China is moved towards domestic cotton. So, I mean, 81, 80, you could see a strong support. 87, 88 is going to be a strong, sell off from both the sides. वंडरफुल. सो दोनों के हिसाब से अगर हम बात करें तो दोनों का ये सोचना है कि 81, 82 सेंट्स का जो आइस है वो इनको ऐसा लगता है कि बॉटम्ड आउट है, और जो अपसाइड दिखता है वो दिखता है अराउंड 87, 88 सेंट्स का. सो थैंक यू सो मच. नाउ आई विल मूव ऑन टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन which is to Dheeraj Bhai, Dheeraj Ji Khetan. Dheeraj Bhai, given the cyclical nature of textile industry, where do you project the next uptick in export demand of Indian cotton? Because Indian cotton generally काफ़ी volatile दिखती है डिमांड में. कभी अचानक से एक महीना एक्सपोर्ट हो जाएगा, एकदम से डिमांड आएगी, फिर एकदम 2 महीने शांति हो जाएगी. तो आपको क्या लगता है अभी कब अपटिक हम देख सकते हैं डिमांड में इंडियन कॉटन के लिए? नमस्कार एवरीबॉडी, इट्स माय प्लेजर टू बी हियर. संचित जी, आपने जैसे पूछा कि एक्सपोर्ट में इंडिया की कॉटन की डिमांड कब आएगी, और आज हम बैलेंस शीट देख रहे थे कि इंडिया की बैलेंस शीट बिलो 3 करोड़ है और कंजप्शन 4 करोड़ है. तो एक्सपोर्ट का तो कोई सवाल उठता ही नहीं है. लेकिन हम लोगों का ऐसा फॉर्चुनेट है कि हम लोग कम रेट में तो एक्सपोर्ट करते हैं और ज़्यादा रेट में इंपोर्ट करते हैं, और कंट्री का लॉस होता है. लेकिन प्राइस फ्लक्चुएशन के हिसाब से 2-3 महीने ऐसे रहते हैं जहां इंडियन कॉटन काफ़ी वाइबल होती है, स्पेशली इन द मंथ ऑफ नवंबर, दिसंबर, जब दूसरी ग्रोथ की कॉटन अवेलेबल नहीं रहती है या उनका ट्रांजिट पीरियड काफ़ी लंबा रहता है. वो टाइम पे इंडियन कॉटन एक्सपोर्ट होगी. स्पेशली नवंबर, दिसंबर, जनवरी में काफ़ी आसार है इंडियन कॉटन के एक्सपोर्ट होने में. धन्यवाद. Sanjay ji, would you like to add anything on it? See, as rightly Sailesh Bhai and Shrikant has told, that currently the situation of the cotton is that there is too much of uncertainty that is prevailing in the market. Second thing, if you ask me for Bangladesh, I would just say that last year's figure of 16 lakh bales, whichever was exported over there, total 75% had gone to Bangladesh. Being geographically India located, I think for Far East markets, India is the most appropriate country for importing cotton if the prices are definitely on the levels of, comparing with New York. But Sanchit ji, one thing, because everybody knows Bangladesh doesn't grow cotton, they have to buy, whether irrespective of Benapole borders or irrespective of Chittagong. I think they will be there in the market to buy. Only thing is, we have to all see what are the prices that are going on. If the price levels range in the range of 88 to 90 cents, I think that export is definitely going to be there. Irrespective of that, Sanchit ji, one thing is certain, that come what may the price, Bangladesh has to buy cotton from us, because our geographically the locations are such that they will definitely buy accordingly. Absolutely, very true. So, thank you so much, both of you, for putting light on the question and explaining it in a very good way so that our audience can also understand. My next question would be to Archan ji from Kargil. Archan ji, ये जो आने वाला साल है, या एक एज ए एक्सपोर्टर जिन लोगों का मेजर बिजनेस एक्सपोर्ट्स हैं,
वो लोग काफ़ी कंसर्न दिखते हैं हर बार कि पिछले 2 साल काफ़ी स्लो गए हैं, काफ़ी वॉलेटिलिटी दिखी एक्सपोर्ट्स के वॉल्यूम्स में. तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स इन कमिंग वन, और इट वुड बी ग्रेट इफ यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन कमिंग 2 years. Where do you see India's exports in terms of numbers? And what do you think, which country would be the largest buyer of Indian cotton? और ऐसी क्या चीज़ है इंडियन कॉटन में जो उनका इंटरेस्ट बनाए रखेगा और वो कंट्री आपके हिसाब से 1 या 2 साल तक इंडिया से कॉटन लेती रहेगी और यहाँ हमें उनकी तरफ से डिमांड देखने के लिए मिलेगी? सो व्हाट वुड यू लाइक टू से ऑन दिस? If the situation remains what it is today, that is, we have an increasing MSP year on year, and we have 11% import duty, which means that cotton cannot freely move out or freely move into the country. Given the production and consumption situation in the country, मुझे नहीं लगता है कि अगले 2 साल हमें एक्सपोर्ट में कुछ बहुत ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखना चाहिए. Now, between 2 million to 3 million bales, which is 20 से 30 lakh गांठ, I think that is more or less where the industry will operate in the next 2 years. It's a very small time. Now what can change? कल को अगर import duty हट जाती है, then India will be able to import cotton much more easily. And if there is a build-up of surplus in the country because cheap cotton comes into the country, at some point that excess surplus will get exported out. So those dynamics will remain in play. Now, irrespective of how much India exports, fundamentally the principal importer of Indian cotton will be Bangladesh. I think Bangladesh should be treated as just an extension of the domestic market. They are geographically linked to us. And given the currency situation which is there in Bangladesh, they have a limited amount of dollars for which to import. They are a 100% import dependent country. They will naturally fall upon Indian cotton irrespective of what price it is. Not everybody in Bangladesh can buy 3, 6, 9 months forward, open an LC for 3 months. So Bangladesh will remain our principal importer. Outside of Bangladesh, all other markets, whether it is China or Vietnam or Indonesia, they will all remain opportunistic markets. Indian prices कभी ना कभी एक लेवल पे आएंगी जहां वो ब्राज़ील से और US से तो चीप रहेगी, वेस्ट अफ्रीका से भी चीप रहेगी. During those few pockets, Vietnam, China, Indonesia, whoever, they will pick up the cotton. So I think there is very little opportunity for India to discover a new market. यही 4-5 countries जहाँ cotton जाती हैं वहीं जाती रहेंगी. The last point you asked is क्या अच्छा है हमारे cotton के लिए? I think India competes on price, and now India will compete on lead time. And I think these two are for the moment, these two are our only USPs for cotton. So जैसा कि भी आपने बताया कि लीड टाइम एक रहेगा. अगर मैं बात करूं दिसंबर जनवरी की, तो दिसंबर जनवरी में सपोज बांग्लादेश की हम बात कर रहे हैं, आप बता रहे हैं, तो बांग्लादेश के पास क्या क्या विकल्प रहेंगे इंडियन कॉटन के अलावा इन टर्म्स ऑफ शिपमेंट्स? ब्राज़ील का जो कमिंग क्रॉप है 23-24 ऑलमोस्ट, मतलब जो करंट क्रॉप है दैट इज ऑलमोस्ट 80% सोल्ड आउट. ठीक है, यहाँ तक ब्राज़ील का जो 24 का क्रॉप है वो 50% ऑलरेडी सोल्ड आउट है आज. ठीक है, और आज की तारीख में इंडिया का सबसे बड़ा कंपटीशन जो है वो ब्राज़ीलियन कॉटन से इन टर्म्स ऑफ बेसिस. जहाँ तक बात टर्किश की करें तो टर्किश में हायर ट्रैश परसेंटेज और क्वालिटी रिलायबिलिटी नहीं होने के कारण इट इज़ नॉट, आई वुड से इट इज़ नॉट इन डायरेक्टली कॉम्पिटिशन विद इंडियन कॉटन. तो व्हाट डू यू थिंक विच इन टर्म्स ऑफ शिपमेंट, सॉरी, मतलब अगर जैसे जैसे ब्राज़ील अवेलेबल नहीं है तो आपको क्या लग रहा है कि ऐसी कौन सी ग्रोथ अवेलेबल, और या इफ यू कैन थ्रो सम लाइट की कौन सी ग्रोथ है जो इंडिया से कॉम्पीट कर सकती हो जो अवेलेबल है शिपमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, थियोरेटिकली बहुत सारे ग्रोथ्स अवेलेबल हैं, but you also have to look in terms of Bangladesh is an 8 million bale market. If India becomes cheapest, India will not have a 50% market share. Bangladesh's appetite for India typically will be between 1.5 to 3 million bales on the top. India does not have 3 million bales today to supply. Maybe we'll supply 1.5, maybe we'll supply 2. That's what India will supply, Bangladesh will take. Next, they will go for West African. There is enough of old crop available that is available afloat. January onwards, West African new crop start ho jayega. Australia is available if they look at the higher grade. There is a lot of pending US shipments. And
There is a lot of Brazilian which is sold but not yet shipped. So I don't see that, India will operate in its own space. And how much volume you see in coming year can be exported from India? What's your idea on that? This year? Yeah, this year, the new crop. I would say on the lower side, maybe 15 lakh bales, and on the tops 25, if things don't change, Okay. Arun bhai, would you like to add anything on this? What's your idea on what do you think, what would be the India's exports in coming crop year? I don't think India can export, like last year also we were about hardly 15 lakh bales. So in the next couple of years, as Archan also mentioned, the chances of exports are very, very remote. You may see some sporadic requirements from markets like Bangladesh and other markets. But overall, 15 lakhs is the upper limit for exports, and that to major portion will go to Bangladesh. Okay. Shailesh bhai, what do you think? What could be the number of exports in the coming year? The number, before the number, why Bangladesh will be the key for Indian cotton is, if you look around, since last 12 months or so, we have entered into a phase of hand-to-mouth purchase. The mills, not only in India, but globally, whether you take anybody, China se leke, Far East, Bangladesh also, everybody is focusing, the data shows that how much Indian is sold through Benapol and how much is sold through sea route. So if this hand-to-mouth scenario continues, I think Indian will be preferred by the guys who are buying from Benapol, like a hand-to-mouth, rather than waiting for the vessel. If that transit time is low, I think that will be sold much. Yeah, because recently we have seen a new trend in Bangladesh that a lot of people are stocking cotton in Benapol border, and they are selling 100 bales, 300 bales, 400 bales, 600 bales, 100 tons, 50 tons में इस टाइप का बिजनेस जो आप बता रहे हैं वो काफ़ी हो रहा है आजकल. लोग पोजीशंस लेकर के बेनापोल बॉर्डर पे कॉटन स्टॉक करते हैं और जो छोटे छोटे स्पिनिंग मिल्स हैं बांग्लादेश की वो आके लेके जाते हैं. सो इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट शैलेश भाई. बट व्हाट इज द नंबर अकॉर्डिंग टू यू? आई वुड लाइक टू हैव एटलीस्ट 4 ओपिनियंस ऑन द नंबर ऑफ एक्सपोर्ट्स इन कमिंग ईयर सो दैट आवर ऑडियंस नोज दैट what should be the exports in the coming crop year. Shrikanta, would you like to add? I think the Indian export is quite inelastic for Bangladesh. Like, irrespective of the price, people who wants to spin 30 millimeter, there is no, it's like a just in time. There is no availability in like 15 days or 20 days, right? So anyone who spins 50s, any carded or combed yarn, they will still prefer to buy Indian. I think irrespective of the price, if it's not too much of a difference, I think 1 million to 2 million should be the minimum exports. Wonderful. Dheeraj bhai, being an exporter, what do you feel? So we'll just keep it very, very quick since because we are running short on time. So what do you think could be the number of exports in coming year, according to you, Dheeraj bhai? Sanchit that export, I got the information, in spite of demand is very less in Europe and America, the export figures are rising month by month. Yarn and ready-made garment, we expect it may go up. In spite of lower crop, we may expect maybe 30 lakhs bales. 3 million bale, 30 lakhs bale. My opinion is about 15 lakh bales. Well, great. So we have a wide range from 1 million to 3 million. But I would say the average opinion what we have got here is about 2 to 2.5 million bales. So आने वाले साल में 20 से 25 लाख गार्ड का एक्सपोर्ट हमारे यहाँ बैठे पैनलिस्ट और जानकारों के हिसाब से इंडिया से एक्सपोर्ट हो सकता है. Well, thank you. I will now move on to my next question, which is a very interesting one. And this will be for the merchants and Shailesh bhai and Shrikanta. It would be great if you can address, even Archan. So we would like to understand that can you explain the current basis level for Indian cotton and how are they as compared to the global benchmark? Also, from business perspective, around what basis level you think that Indian cotton will be attractive? And keeping especially MSP in mind, क्योंकि जैसा कि आज ऑलरेडी रमन ने भी जो प्रेजेंटेशन में अपना बताया है, तो MSP देखते हुए आपको क्या लगता है कि क्या बेसिस इंडिया का रहने की उम्मीद है और किस बेसिस पर हम
डिमांड देखेंगे और अभी ग्लोबल बेंचमार्क से कंपैरिजन में हम कहाँ पे खड़े हैं? शैलेश भाई और श्रीकांत, यू कैन ऐड, नो प्रॉब्लम. Sorry. I think what is important is from the global perspective, as I said before, ICE futures will drive when it comes to exports and the Indian basis. If you look at the MSP, as we all talked about, it's around 86, 87. So if ICE futures stays towards the higher 80s, then you have a chance of having more exports windows. I'm not saying it is going to be big, but if the MSP comes in, then automatically the market gets firm and the prices just rise. But when you compare the foreign basis, like today, say for example China, say for example Bangladesh. Bangladesh is getting West African prompt or Jan, Feb, March at around 1,000 to 1,100 on. And if Indian remains around those levels, it will be bought. It's different for China because China is buying Brazil at around 800, 900 on, and Chinese customer always take Indian at 3 to 4 cents discount. So it will be asking Indian at around 500 to 400 on China. If you take 3 cents behind, it will come almost close to evens to 100 on. So ICE futures will play an important role. Brazil basis and every international growth will be measured on ICE. So if ICE stays low, then we are completely, if ICE goes towards 80, with MSP at 86, we are talking about 600 on MSP. We are completely shut from the Indian export market. So ICE has to sustain that balance. Okay, adding to Sailesh Bhai's point, so look, let's compare Bangladesh. There are two different types of cotton they buy, right? One is a contamination-free cotton, which is like US, Brazil, Spain, Greece, all those pieces of cotton. Where India can compete is with the non-contamination-free cotton, which is a hand-picked West African. Today, a West African new crop, if you take from Jan to July, is being selling at around 1,100 to 1,150 on the covers, right? On the Indian side, whether the futures goes to 88 or 80, you have an MSP floor, which is going to be 94 cents landed Chittagong. With the current futures level at 84.50, your basis for Indian is 1,000 on. Now, let's come back to the West African. As I said, it is selling at 1150 on covers from Jan to July. If you talk about the contamination-free cotton, the cheapest in the town is actually Brazil. Brazil production this year is 3.3 million tons. The local consumption is 750,000 tons, and they need to export to over 2 million tons. Remember, July to November, most of the Brazil high grades have already been taken by China. What it's coming right now is only Jan or Dec Jan shipment onwards. There are plenty of recaps available at a decent quality. Is being available at 600 to 700 on landed Chittagong. Number two, on the alternate side, take about US. US basis will stay firm because the high grades are pretty much limited. It's been offered at around 1,400 to 1,500 on. If you talk about the Mediterranean, like Spanish, Greek, it's been available at 1,200 on. Australian, which is almost sold out, which is available at 1,400 to 1,600 on. Now, if you talk about the contamination-free segment, which India cannot compete, on the alternate side, India has to compete with West African. On a given day, if a buyer of West African wants to buy either West African or India, India has to be discounted by 4% because the yarn realization between India and West African is 2.5%. Yeah. So, in terms of basis, अगर मैं बात करूं, current basis अगर हम, let's take a benchmark of China. ठीक है, China का आज current basis जो है India का, according to Sailesh Bhai and Shrikanta, both of you. So what we have understood is कि Indian cotton will be competitive at about 500 on SIF delivered China, right? Where are we right now? Today we are offering, today we are at about 800, 900 on, right? Which one? For the China? For China. We have taken a benchmark of China. The last price which was sold, Brazil, middling, inch and 1 I'm by talking 8. about India. For India? Yeah. Yeah. I mean, if Brazil is available at 750 on or 800 on landed China, right, then there is no brain, right? So
इन नटशेल आज की तारीख में जो इंडिया का प्राइस है वो हम ऑफर कर रहे हैं 800 ऑन, जो कि दिसंबर फ्यूचर्स पे है, और अकॉर्डिंग टू शैलेश भाई एंड श्रीकांता अगर ये 500 ऑन के आसपास आता है तो इंडियन कॉटन में हम लोग अच्छी डिमांड देखने के लिए हमें मिल सकती है. अर्चन भाई, वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग ऑन दिस? I really don't think there is much to add on this. I think Sailesh ने first line में ही बता दिया था, mid to high 80s India exports, low 80s India stops exporting. I think that's what we have to take. Great. Thank you so much, Shailesh bhai and Shrikanta. Now I would move on to my next question, which is to Vinay bhai. Vinay bhai, how do global factors like interest rate changes, currency fluctuations impact these basis levels? Because आज की तारीख में सिर्फ हम कॉटन को नहीं देख सकते. There are so many things to look upon. Interest rates है, currency है, war है. तो क्या लगता है आपको कि ये सब फैक्टर्स किस तरीके से बेसिस को अफेक्ट करेंगे, और इंडियन कॉटन को एडवांटेज या डिसएडवांटेज है इन सब चीज़ों का? लाइक वॉर हो रहा है तो उसका इंडियन कॉटन को एडवांटेज मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये सब चीज़ों पे थोड़ा सा इफ यू कैन थ्रो सम लाइट. Actually, we are in untested time. We have never seen, at least in my last 40 years, I've never seen this kind of wars or this kind of very fast interest rate rising in USA. So because of high interest rates, because of the fear of inflation, the high interest rates are there, which is keeping dollar index high. Because of that, commodity price, but because of that, commodity prices are remaining low. That is number one. Number two, because of the war uncertainties, the demand is very, very slow. Everybody is going hand to mouth. So that is the reason the basis ultimately will fall. There will be a pressure on the basis, whether it is including USA or any country. Because looking to the carrying charges, nobody can afford to carry for a longer time. They have to get out of their inventories and basis will fall. This is my view. Okay. And if reverse, if this uncertainty goes away, if the war stops, the dollar index will drop fast, the commodity will start running up, the basis will increase. So it's all too uncertain, but presently if the situation remains like this, there will be a definite pressure on the basis. Thank you, Vinay bhai. Arun bhai, can you please throw some light on this and enlighten the audience? See, in very plain language, I will say, when the chips are down, when the markets are down, when the economy is in crisis, you go for the cheapest cotton. You go for anything which is cheapest available in the country and in the world. Now, if you are talking of exports of Indian cotton to other parts of the world. Now, as Shrikant said, ki Bangladesh is a lot of recaps available of Brazil at 600, 700 on, landed Bangladesh. I don't think so anybody would be interested in buying Indian cotton at that price. No, but in terms of interest rate changes and in terms of global economy, you know, especially currency and all, uske upar aapka kuch kya? See, interest changes and currency changes it doesn't impact India much because India is following the interest rates of RBI. And RBI, if you see, the rates are packed in the last couple of months. Even USA increased it by about 50 basis point, 25 basis point in the last 6 months, but India has kept it the same. So that is not impacting India. As far as demand is concerned, of course, if it is, now for example, the war is there, if there is a war going on, there is problem of getting cotton from any other countries, then India is most suitable for export, whether to Bangladesh or to Southeast Asia. Right, great. So just to add one more point from my side, actually interest rate अगर हम बात करेंगे पिछले लास्ट सीजन तक की अगर हम बात करेंगे तो अगर हमसे कोई 90 दिन एलसी में मांगता था तो इंडिया से जनरली प्रीमियम होता था 90 डेज का 0.6 से 0.7% यूज्ड टू बी द प्रीमियम अर्लियर, विच इज नाउ गॉन टू 1.6%. सो लिबोर जो पहले जो लाइबोर जो आज की तारीख में लाइबोर की बात करूंगा तो इट्स अबाउट 5% प्लस द स्प्रेड. सो जो एलसी डिस्काउंटिंग कॉस्ट है वो काफ़ी बड़ी है और उसका इफेक्ट बेसिस पे कहीं ना कहीं आई थिंक देखने के लिए मिल सकता है. But let's see how the season proceeds and what it has for us. I think it's very dynamic, so we have to see how it goes on that particular day. Well, great. So now I'll move on to my next question. In these questions, I will be taking the view of the panelists. I would like to understand कि markets की क्या हालत है. तो मैं एक-एक करके कुछ लोगों से सबसे पहले बांग्लादेश के बारे में जानना चाहूँगा
कि बांग्लादेश की आज हालत क्या है, मिलों की हालत क्या है, कंजम्पशन पैटर्न क्या है, क्या टाइप के प्रोडक्शंस वो लोग ले रहे हैं, डिमांड कैसी है, यान का उठाव कैसा है या यान किस तरीके से बिक रहा है उन लोगों का, इन्वेंट्रीज कैसी है यान की। तो इस पे मैं थोड़ा सा व्यू लेना चाहूँगा। आई विल स्टार्ट विद संजय भाई। संजय भाई, आप काफ़ी एक्सपोर्ट भी करते हैं बांग्लादेश, तो क्या सेंटिमेंट्स इन टर्म्स ऑफ इवन देयर फाइनेंशियल कंडीशंस ऑल्सो, कि डॉलर शॉर्टेजेस का वगैरह क्या आजकल क्या सीन है? मतलब Currently, Bangladesh situation is such that they are really running short of US dollars और उनका मेजर इंपोर्ट्स जो है वो खास करके ज़्यादा करके उनको सब इंपोर्ट ही करते हैं बांग्लादेश में। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उनकी मिलो जो है उनको रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि बाबा मेरी एलसी पहले खुलाओ तो मेरे को माल मिले। ऐसी सिचुएशन अभी बांग्लादेश में चल रही है। सेकंड थिंग व्हाट आई फील इज कि जोग्राफिकली, बिकॉज आई एम रिपीटिंग अगेन, कि जोग्राफिकली बिकॉज वी आर लोकेटेड इन सच अ वे दैट आज की तारीख में चाहे ना चाहे अगर इनको रुई लेना है 10 दिन के अंदर जो बोलो 12 दिन के अंदर बोलो, तो उनको इंडिया इज द ओनली ऑप्शन फॉर देम टू गेट इट। दैट इज व्हाट आई फील सच। अच्छा, डॉलर का क्या मतलब, जिस हिसाब से हम सुनने में आ रहे हैं एलसी में पेमेंट्स लोगों के काफ़ी आज डिलेड है बांग्लादेश में, उसको लेकर के आपका क्या व्यू है? संचित जी, अनफॉर्चुनेटली मैं तो ये बोलता हूँ कि कई बैंक जो है वो A1 बैंक की उधर की एलसी नहीं रहती है तो डिस्काउंट करने को भी एक्सेप्टेड नहीं है। सिचुएशन इज डेफिनेटली क्राइसिस है अभी बांग्लादेश में। तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि बहुत संभाल के और सोच के ही काम करना चाहिए। राइट, थैंक यू संजय भाई। कुणाल, वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग? एंड when do you see the situation in Bangladesh getting, when do you see some improvisation in this current situation of Bangladesh? Good afternoon. On the Bangladesh side, because they are in need of cotton for prompt deliveries, they are obviously looking at Indian. On the dollar side, it is what it is. It's going to take a while for them to get the dollars. But they are running at 65 to 70% capacity utilization. They've been buying Indian cotton, Indian yarn. It's been better than what it was in September. So October has been better in terms of some inquiries. But at the end of the day, it is going to take a while for them to come back to full life, to buy the same volumes that they were buying earlier. So India will export, yes. Bangladesh will buy, yes. But it will be the usual 12 lakh, 15 lakh bales, not 20, 25. Got it. Akhil, would you like to throw some light? And Akhil, it would be great if you can tell us about how's the garment order, because it is very important for us to understand that how are the customers in Bangladesh, how are the spinning mills in Bangladesh doing, you know. So can you throw some light on how's the demand on garment and yarn in Bangladesh? So basically, what's happening in Bangladesh is people are buying only for the immediate shipments. So like as the trend has been changed that they do not want to wait for the cotton to arrive late. So that is the only reason it is pushing for them to buy Indian cotton. That's one of the major reasons. Actually, I have a different point of view when I say that interest costs don't affect the basis, but actually it does. You can't carry the stock for longer. You can't wait for the LC to come for the longer time. So I think there are only few, like 10 banks in Bangladesh which are doing good. So our banks are also restricting not to work other than these 10 banks. So obviously it restricts the amount of business you do to the Bangladesh. And with respect to the yarn, and they say that there are lots of stocks piling up, which in turn asks the lesser prices to Indian shippers. So I feel over a period of time, Bangladesh should buy mostly around 20 lakh bales. 70% should go through Benapur. Okay. This is my... Dheeraj bhai, is there anything additional what the other panelists have not covered, and would you like to add on anything कि जो इन लोगों ने नहीं बताया, कुछ additional आपको लगता है, कुछ points बांग्लादेश को लेकर के, करंट सिचुएशन को लेकर के बांग्लादेश की? नहीं, बांग्लादेश में तो एक तो करेंसी का प्रॉब्लम है, लेकिन उनकी सिचुएशन अभी धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है। एक्सपोर्ट हर महीने बढ़ रहा है और जो एनर्जी के जो प्राइस है वो काफ़ी बढ़ने से मिलों का कॉम्पिटिटिवनेस थोड़ा सा कम हो रहा है, जो एनर्जी प्राइसेस काफ़ी बढ़ने से। लेकिन डिमांड बढ़ने से हो सकता है कि वो काफ़ी अच्छी कंडीशन में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनर्जी प्राइसेस का जो धीरज भाई ने बताया। सो जस्ट टू कंपेयर द बेंचमार्क, जैसे हम इंडिया में बोलते हैं कि पर केजी पर काउंट की जो कन्वर्जन कॉस्ट जो हम इंडिया में जोड़ते हैं, जो कि रेंज करती है फ्रॉम 1.6 रुपीज़ से लगा करके 1 रुपये 70-80 पैसे तक का, हम जो इंडिया में बोलते हैं करेंसी का जो कन्वर्जन कॉस्ट आती है यान में, सेम चीज़ अगर हम बांग्लादेश में जोड़ते हैं तो वो आती है उनकी कंडीशंस के आपसे 2 रुपये 70 पैसे से लगा करके 3 रुपये
per kg per count का conversion cost is what Bangladesh is incurring right now, and the majority of that is going, the reason why the prices are up is because of the gas prices. क्योंकि जिस हिसाब से इंडिया में हम नॉर्मल बिजली खरीदते हैं, बांग्लादेश में जितनी स्पिनिंग मिल्स हैं वो सब गैस खरीदती हैं गवर्नमेंट से, और उस गैस से वो लोग बिजली का उत्पादन करते हैं. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए कि चीज़ें कब सुधरेंगी बांग्लादेश में फ्रॉम गैस पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर देम टू सर्वाइव. या सो वेल, so I'll move on to the next part, and which is China, because China हमने देखा है पिछले 1-1.5 साल से काफ़ी शांत है. तो शैलेश भाई, चाइना की क्या सिचुएशन है? हाउ आर मिल्स डूइंग इन चाइना? कंजम्पशन कैसा है? उसके अलावा रिजर्व्स को लेकर के, बिकॉज रिजर्व्स इज समथिंग विच इज गोइंग टू प्ले अ क्रूशियल रोल. बीच में जैसे हमें न्यूज़ सुनने में आई कि रिजर्व्स ने काफ़ी माल बेचा भी है, तो उसको लेकर के थोड़ा सा इफ़ यू कैन टेल द ऑडियंस कि चाइना में आज क्या सिचुएशन है. I think considering what is happening in India, Bangladesh, everywhere, whatever we have seen for the last 12 months, China is not different. It is also going at a pace where it is going hand to mouth. If you look at the data, month over month, in between we saw a bit of improvement. That's why they came in. Basically, whatever buying has happened mostly through big traders and the state-owned enterprise. It was not like the spinning mills coming in and buying big. No, it is these traders who are buying, anticipating that they'll be feeding hand to mouth to all the spinning mills in China. So the same story continues. If you look at their margins today, they are negative. They are not in a position to really, when you try to talk to them, look at their inventories, they continue to be in the same boat as is India and few other countries. अगर जैसे हम बोलते हैं इंडिया में आज 100% कैपेसिटी या समझे 90% कैपेसिटीज पे आज मिल्स चल रही हैं, बजाय 8 पार भी, जैसे एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ मैं, तो चाइना में आपके हिसाब से आज क्या कैपेसिटीज पे मिल चल रही है? I think the consumption number speaks itself. It's like, if you look at the running rate, it is same across. It's not 100%. People might say it is 100%, but it is not. What is the percentage according It's anywhere between 80 to 90%. 80 to 90% is what the Chinese mills are running at. That is the capacity they are running at right now. Great. So similarly, I'll have view on Vietnam and Indonesian market as well, because they are also a crucial market for us. So for this, I would like to ask Shrikanta and Arun Bhai. So it would be great if you can throw some light on the situation of spinning mills in Vietnam and Indonesia. इससे ये होगा कि हमें भी आइडिया मिलेगा कि हिंदुस्तान की स्पिनिंग मिल्स कैसा है, और शायद हो सकता है कि दूसरों का दर्द देख के हमें शायद अपने आप को अच्छा लगे. तो Arun bhai, we'll start with you. I can tell you about Indonesia. Indonesia, the consumption काफी नीचे हो गया, काफी it has come down to about 65 to 70% only. And वहाँ पे 5-6 बड़े-बड़े mills थे, उनके production on an average is about 55 to 60%. And ये खाली spinning का ही नहीं है, even the down the line value addition, like you see garment units or fabric units, their production level is also very down in the range of about 65 to 75%. So Indonesia is directly affected because a lot of mills they buy on call basis and long term, 1 year down the line, 2 years down the line. So they have been impacted a lot, and the recession and the economic crisis has hit Indonesia very badly. And as far as Indian cotton is concerned, most of the Indonesian mills have moved to Brazilian cotton. And because of the price, it's cheaper, it's about 600, 700 on. So Indonesia will only survive on Brazil cotton at least for some time. So I don't see anything moving fast because of the problems in US and Europe. So 2024 also would be a pretty sad year. Okay. Anyone would like to add on the Vietnam's current situation? Vietnam, who would like to add? Shrikant? Okay, let's start with the basic things about Vietnam. Okay, you have a 9.7 million spindle, operating spindle, and the total capacity of Vietnam, and the operating spindle is close to 9 million. If you see last 5 years data, the consumption of Vietnam is anywhere in between 6 million bales. Right now it is 7 million bales, right? Vietnam is slightly different compared to Bangladesh. Vietnam was actually
started exiting all and consuming high-priced contract ahead of Bangladesh. Right now, there are two kinds of mills in Vietnam. If you see FDI, which is a Korean, Chinese, or Taiwanese mill, and 50% is basically like the local Vietnamese mill. You will not believe the mills in Vietnam are the least covered in the whole Asia. They don't have a cotton beyond 20 days. They are buying all the cotton, whatever the cheapest price on the earth, for the immediate shipment. They need cotton for November 15th shipment. They don't even wait for November end shipment. Mills are running hand to mouth. Any cheapest piece of cotton like East African, Tanzanian, Uganda, everything is available close to 300 to 500 on. Your South American cotton, Paraguay, is available at 600 on. Your Brazilian recap is available at 600 on, 500 on. Your Mexican old cotton, which is a description, is available at 700 on. So they are buying hand to mouth. They are buying every day. They are the least covered. But in terms of the operating capacity, compared to the last 6 months in Vietnam, right now mills are running full capacity. Today, Vietnam is exporting yarn for 32 scarded yarn at $3 per kilogram. If you do the calculation, the conversion cost to produce 32 scarded is $1.1. If you deduct $3 minus 1.1, your break even for a Vietnamese mill is 90.5 cents to 91 cents for 32 scarded, and for 40s combed, contamination free, which they buy mostly Australian because of the close proximity, is close to 94 cents. So Vietnam is actually buying in the market, which is totally different from other countries like Bangladesh or Turkey, for instance, or Pakistan. Well, so finally, we have some positive news from at least Vietnam. Thank you, Shrikanta Bhai, for throwing light on the situation of Vietnam. I'll now move on to my next question, which will be to Vinodji. Vinodji, how's the demand in sustainable cotton these days? That a lot of exports happening in BCI, organic. What do you think about it? How is the demand right now, and what do you foresee in coming season? Also, is there any new sustainable cotton which is seeing good demand from India? Would you like to add anything on that? See, sustainability is the future. Today, when we are talking about lower crop and lower yields, but the area under sustainable cotton is growing year on year. That is because the farmer is more happy growing sustainable cotton. He is getting very good premium, and the yields have been good. And that is the reason we have a wide range of sustainable options in India like BCI, organic, PSCP, fair trade, and region cotton, etc. Regarding exports, there is a very good demand in export market for different forms of sustainable cotton. Of the 16 odd lakh bales exported last season, a major chunk has been some form of sustainable cotton. And this demand will definitely increase going forward because more and more brands are shifting from conventional cotton to sustainable cotton, and they have set very aggressive targets for their product lines. The premiums also, except for organic, have been very stable over a period of time. There was some fluctuation in organic premium, but I guess now that is also at decent levels and it may remain in the near future. Great. Thank you, Vinodji. So now I would like to, I'd like to move on to the imports. But before that, before I come to you, Nayan Bhai, just one last question on exports, which I would like to ask Rishit Bhai. Rishit Bhai, since you are a controller, part of Wakefield, and so what kind of challenges you see Indian cotton face in export market? Because generally, just to say that which is the most common complaint, or what kind of issues you think Indian cotton faces in the international market, according to you, because you receive a lot of complaints and you do a lot of testing for Indian cotton. So basically, what we are saying, like many comments for the quality. So mainly on the grade part. So basically, we need to make sure like the gradation is done properly. And if you are getting the goods out of the country, it's our prestige to get the best quality to the customers. Also, what we are facing for the packing material. The material which we are using in India are not up to the mark. There's a chance of improvement on the part of that. Basically, if you see Australian cotton using Indian bags in Australia, made in India. So why can't we do it? And it's not a big cost to that.
So I think we should make sure for the grade and the packing part. Great. Well, I mean, that's a very valid thought, Rishit Bhai. Yeah. Just to add to this, when we were selling CCI cotton just 3 years back, there was huge demand for CCI cotton and many buyers were very happy with the CCI packing. That next season they were saying, what difference it makes whether it is CCI or non-CCI, please give us that packing. No, absolutely. Because it saves lot of wastages. So ये जो दिखता है वो बिकता है, तो ये बहुत जरूरी है. और this is absolutely we have to take good care. We should take good care of the packing. This is for sure because आजकल packing की बहुत अच्छी value है. So now we'll move on to the import. I have a big question or a large one for you, Nayan Bhai. You will be the right person to throw some light on the imports. That what do you think would be the import for India in coming crop year, and what growths you see in terms of share percentage? Suppose if you say 100%, then can you just throw some light on, okay, this growth would be 50 or say 60%. Can you just throw some light on the percentage of shares which India might see in coming year? Okay, so last year, or the last season, Indian export and import was almost the same. I think India imported about 14.5 lakh bales of cotton and export was about 16 lakh. This has happened after almost more than a decade or maybe a decade and a half when import and export has almost matched. Coming to the future, looking at the balance sheet that we saw today presented by Shri Atul Ganatra of CI, if demand or consumption remains where it is today, maybe even a 295 lakh bale crop may not augur for much import. There is, however, an inelastic part of the demand component, which is mainly the extra long staple comprising Giza and Pima, and the contamination-free cotton that certain mills are processing to sell contamination-free yarn and fabric, of which obviously Australia is taking the lion's share because of the FTA that India and Australia have signed, and about 51,000 tons is allowed every year. Going forward, I think that this inelastic demand will continue, and therefore the 1 to 1.5 million bales of import will happen. However, if a lot of Indian cotton gets exported, a lot of cotton is sucked in by CCI in the MSP, and then if there is a shortage in cotton, obviously there will be demand. The duty obviously is playing a very big part because after the duty, foreign cotton is just not being replaceable with Indian cotton. So I think, and also with the fact that India's yields have remained stagnant, spindleage going up, India is likely to become a larger and larger importer. I think the government has to take steps to remove this duty to protect the interest of the industry because the Indian industry needs cotton at international prices to be able to compete in the export market. As far as percentages are concerned, I think the extra long Giza and Pima must be about 35 to 40%. And the contamination-free should be the rest of it, basically. And how much is the volume according to how much imports can we see in coming year? In terms of number, in terms of bales? Well, I mean, the duty obviously is going to play a big part, but the inelastic... If we see because if we consider the current duty, say 10% is the import duty, at the current status, how much import can happen in coming? Then I don't think except for the inelastic part, there should be more imports. So maybe the 2 million bales at the moment. You know? And actually, you should remember one thing, is that this duty on extra long, which is unreasonable because I don't think India grows enough extra long, is actually causing orders made from Giza and Pima to go out of the country. And India is losing that value addition exports that has been built over the years very painstakingly. So the government really has to think very hard on the duty part. No, absolutely. And what you are saying makes a lot of sense. Also, I have a view that इंडिया ने ये करना चाहिए कि अगर आप इंपोर्ट पे ड्यूटी लगा रहे हैं कॉटन पे, तो सिमिलरली आपने गारमेंट और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स उस पर भी इंपोर्ट ड्यूटी लगानी चाहिए ताकि हमारी जो इंडस्ट्री है वो सर्वाइव कर सके.
यान हमारे इंपोर्ट होता है, यान पे कोई ड्यूटी नहीं है, तो यान पे देयर इज अ ड्यूटी, बट ऑन गारमेंट एंड टुवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ द वैल्यू चेन, तो वो होना चाहिए। एडवांस लाइसेंस में हम काफी सुनते हैं विनय भाई कि लोग एडवांस लाइसेंस में होता है, कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन दिस कि हाउ डज एडवांस लाइसेंस वर्क और कैसे लोग उसमें वो करते हैं? Advanced licenses against exports, the people who import in advanced license, they have to export in 1.5 years. Normally, as per our working, the duty which is 11% will work out to 5.5% for yarn, not 11%, because they will save the 100% duty on 100 kg cotton, and they will lose the incentives on yarn on 70 kg. So considering that, and value addition in yarn is not so high. So overall they save, I mean they lose 5.5% and not 11%. So if it is West African, the loss is 2.75%. So it is not that costly as we think if it is for advanced license. The another thing I would like to give some kind of, I would say from reliable sources, what news I have for the audience and what Nayan Bhai was mentioning about. The ELS is having a lot of value addition. Government has recognized that. And most likely, within next 2 months, duty on ELS will be removed. That is what the very, reliable sources I have learnt. And I think it will happen. Great. So it is very clear that to summarize the imports discussion, as per Nayan Bhai, the total imports we are expecting in the coming year would be about 2 million bale, 20 लाख गाट के आसपास का import हो सकता है, और जिसके अंदर ELS का about 35% शेयर होगा और बचा हुआ जो है वो कंटामिनेशन फ्री का होगा। विनय भाई ने बहुत अच्छी बात बोली कि हम जो समझते हैं 11% की ड्यूटी इंपोर्ट पे, वो 11 की नहीं है। अगर कोई मिल उसको एडवांस लाइसेंस पे खरीद रही है तो 5.5% ही उसको जेब से देना है, और अगर अफ्रीका से ले रहा है तो खाली 2.25% देना है। तो ये एक गलत परसेप्शन हमारे दिमाग में बना है कि 11% है, तो 11% नहीं, एडवांस लाइसेंस में जो उसका इफेक्ट है वो काफ़ी नलीफाई हो जाता है। वेल, that's a good discussion. So now I'm moving to the last question of this panel, and we are absolutely on time, Atul bhai. We were given 50 minutes and we have just taken 40 minutes so far. So we'll finish before time. Okay, so import, I would like to take the numbers again from the merchants as well. Yeah. Okay, as Vinay bhai said, India is the largest consumer of ELS. India consumes 135,000 tons of ELS, and India produces 75,000 tons of ELS, right? So there is a gap of 60,000 tons which has to be imported, mainly US Pima, Giza. So irrespective of 11% duty, what we saw last year, mills were kept on importing ELS at any cost. What they are going to lose is the value addition. So you're going to compete against with China and Pakistan, who are your next, second and third competition on the ELS. So irrespective of the 11% duty, there is definitely going to be 4.5 lakh bales, 60,000 tons on ELS. But with a question mark that Egyptians have put a 50% ceiling on the exports. So the prices of Giza is actually trading about $200 cents per pound, FOB, Alexandria. So you need to see whether the consumption or a shift of more blends is going to shift in DCH. Take an example of 30% DCH was blended with Egyptian. It has to go up either 50% or 60%. Then obviously your prices of DCH will also eventually has to go up. On the second thing, the FTA, what Vinay Bhai was saying, that 50,000 tons, that is going to come at any cost. So that's going to be minimum quantity. So call it 3 lakh bales. So on a minimum, on 11% duty, there's going to be 700,000 bales. I think it should be, with another one thing is that with the 5.5% of LDC countries, which basically your East African, Tanzanian, Ugandan, Burkina, Mali, if prices matches with 5.5% duty, mills have already bought when New York was lower at around 80 to 83, 3 months back. If that comes, that is a big flavor of South Indian mills. South Indian mills loves West African cotton. If that comes, adds up another, let's say, 50 to 75,000 tons, I think a million bale is minimum.
So according to you, it's 1 million bale and 1 to 1.5 million bales. 1 to 1.5, Yeah. and we have Nayan Bhai who is at 2 million. Yeah. Sanchit ji, when we have crop is 3 crores and export is 1 million to 3 million bale, how 1 million import is justified? Just my question. 1 million import, how it is justified when crop is 3 million, consumption is 4 million, export is 2 to 3 million, then 1 million, how it is justified? Maybe they may be considered very low consumption. So it can happen. Now, I'll have to put one more point in this import. I'm at minimum 2 million bales import this time, if the crop is less, maybe more. The another thing which we have to take into account is for South India, CIF Tuticorin. Even this 5.5% duty is not that costly because they pay a huge lorry freight for domestic cotton. So it nullifies even half of that also. Okay. So the southern mills will go for imports under any circumstances. Yeah, so that's again a very valid point, Vinay Bhai. So we'll have to definitely consider that. One last question for the panel, and then after that we'll just finish up. How about the exports? Exports of yarn. That is something which we would love to know, that how is the exports of yarn, because it's important for us to understand that how are spinning mills in India doing in terms of exports. So would anyone like to throw light on the yarn exports from India? Kunal or Dheeraj Bhai? Okay, so yarn exports have been going up quite drastically in the months of August and September. I think we've got the numbers here. China, Bangladesh, obviously leading, the main destinations for India's yarn exports. It hit a low of 20 to 23,000 tons per month back in, when was that? February, March. And now coming to September, India is doing 120,000 tons of yarn export a month. So that means India's prices are competitive enough to find a market. So India's exports for yarn have been improving quite drastically. Yarn, it is not going consistently. 1 month it is going, next month it is not going. It is not consistent. It is required further growth. When we have to sustain market, we need further yarn export to be done. Yarn export hona chahiye. You want to add something, Arun Bhai? No, I think we have yarn exports. We have already touched the high levels, which was about a year post-COVID. We are in, as Kunal also said, 120,000 tons a month. So I think we are back to normal in yarn. The only thing is, what about the price? Is the realization good enough? But as far as we are concerned, exports are more important. So in that front, we are very comfortable. Great. So, well, I'll just quickly summarize our whole discussion. So, as per the panelist here, we have one question from Sushil Jham sir. Not possible. Your question is, can the mill sustain these export levels at these prices? No, it cannot. Because again, as I mentioned before, there are windows which come at price, like if the prices are 55,000, 56,000 rupees and ice has gone up to 85, 86, there is a window when mills exported yarn and a lot of people exported yarn. So it's a chicken and egg story, what is coming down first or what is going up first. So at this level, if you're telling, will you get for next 6 months this yarn? No. It's not sustainable. Yeah, another thing which I मैं want आपका to जवाब add. देता हूँ. देखो डाउन साइड का कैप है. सीसीआई ने एमएसपी फाइनल कर दिया है. देयर इज कैप, प्राइस कैप ऑफ डाउन साइड 7,000 पर क्विंटल, 58,000 का कैप है. आप समझो, आप बोलते हैं कि 50 से 55, आपके साथ बैठा था, आप बोले 55,000 होना चाहिए. नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं. 55,000 होना चाहिए, लेकिन कैप है. मैं नहीं बोल रहा, वो कह रहे हैं. What I am saying is that if these are the prices at which yarn is being exported, can mills sustain that? That is one question. That's almost impossible, isn't it? Yes. Sir, थोड़ा आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा. हाँ. Absolutely, sir. इंडिया के इंटरेस्ट में है कि आइस 85 से नीचे ना जाए. अगर 85 से नीचे जाएगा तो ये एक्सपोर्ट नहीं कर सकेंगे. Because the price would be fixed on the basis of the ice. If ice goes below 85, yes,
we may feel very happy that ice has gone down, but Indian export business would not sustain. Vinay bhai would like to. साहब मेरे हिसाब से आई एम ऑफ कोर्स लिटिल ऑप्टिमिस्टिक यान का एक्सपोर्ट सस्टेन होगा क्योंकि ब्राज़ील जो है वो काफ़ी बिक चुका है टुडे वी आर सेकंड चीपेस्ट कॉटन इन द वर्ल्ड आफ्टर ब्राज़ील यू सी द बेसिस वी आर इंडिया इज द सेकंड चीपेस्ट ब्राज़ील इतना बिक चुका है आगे जाके उसका बेसिस बढ़ना ही बढ़ना है यूएस की जो बैलेंस शीट है वो भी उसके हिसाब से उनके भी बेसिस इतने कम होने वाले नहीं है सो इंडियन कॉटन मे नॉट बी वेरी कॉम्पिटिटिव फॉर एक्सपोर्ट्स बट द यार्न मेड आउट ऑफ इंडियन कॉटन विल बी कॉम्पिटिटिव आज की तारीख में अगर आप स्पॉट के रेट देखेंगे एट 58,000 इट वर्क्स आउट टू 87-88 सेंट्स टुडे इंडेक्स ए इज 94 सेंट्स so all the whether it is Vietnam whether it is China they are buying ready cotton average at 94 including Brazil average so we are cheaper we are not that bad so if the Brazil basis starts going up yarn definitely will move more and more. So, Chamsab, what Vinay ji is saying, I also agree with that. ये जो सिचुएशन है वो टेम्पररी है जैसे एक मैं बात करूंगा टर्की की टर्किश कॉटन आज भी इंडिया से 500 ऑफ बिक रहा है मतलब ऑलमोस्ट करीब करीब ऑडियंस के लिए अबाउट 3-3.5 हजार रुपए खंडी प्राइजेस टर्की में इंडिया से सस्ती है तो इसलिए इंडियन स्पिनिंग मिल्स टर्किश स्पिनिंग मिल जो है वो इंडियन स्पिनिंग मिल से सस्ता यान आज बेच पा रही है बट ये क्वेश्चन ये कि कब तक आखिर ये 3.5-4 हजार रुपए खंडी की सस्ती कॉटन मिलेगी इन लोगों को Sanchit, another thing is the Pakistani cotton. Look at the price of Pakistan cotton. It is varying between 64 or 65 cent to 71, 72 cents. 70. It's almost 12 to almost 16 cents lower than Indian cotton. Right. Sir, Pakistan, I was just, because I'm still in touch with some spinning mills in Pakistan and fortunately I was talking to them day before yesterday. So what I was being told that मैंने उनको वही चीज पूछी कि भाई आपके इतनी सस्ती कॉटन है तो आप तो इंडियन स्पिनिंग मिल्स को जीने नहीं देंगे आप तो सस्ता यान बेचेंगे नहीं उनकी पावर कॉस्ट बहुत है हाँ तो उनका ये पॉइंट है सर कि जो पाकिस्तान में जो एवरेज काउंट है वो कोर्स का 20 काउंट इज द एवरेज काउंट ऑफ पाकिस्तान एंड द यान विच गेट्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तान इज साइरो सो साइरो की सबसे ज्यादा डिमांड आती है पाकिस्तान अगर कोई यान एक्सपोर्ट करता है जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली वो ये उनका ये कहना था इट कुड बी रॉन्ग ऑल्सो कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा साइरो एक्सपोर्ट करता है बट साइरो की आज की तारीख में कोर्स काउंट में डिमांड इतनी ज्यादा नहीं है जिस हिसाब से डेनिम की हालत चल रही है तो पाकिस्तान स्पिनिंग मिल्स वर ऑफ अ व्यू कि इंडिया और पाकिस्तान में आज की तारीख में कोई बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन नहीं होने वाला फ्रॉम मतलब पाकिस्तान विल नॉट हैव दैट एडवांटेज ऑफ चीपर कॉटन अवेलेबल टू देम सो दैट इज व्हाट दे टोल्ड अस नाउ इट कुड बी रॉन्ग एज वेल what you're saying could be in terms of import it could be possible हो सकता है कि भाई अगर पाकिस्तान हमसे अच्छी इंपोर्ट करे तो शायद फिर वापस एक्सपोर्ट में हमसे कॉम्पीट करेंगे वो लोग विनय भाई जो वहाँ का ब्राजीलियन कॉटन का यान है ना दैट सेल्स एट ए प्रीमियम अगेंस्ट इंडियन कॉटन यान बिकॉज दैट्स कंटेमिनेशन फ्री कॉटन सर समझ नहीं आया ब्राजीलियन यान मेड आउट ऑफ ब्राजीलियन कॉटन sells at a premium in comparison to the yarn made out of Indian cotton. Absolutely. विनय भाई वो कंटेमिनेशन फ्री का प्रीमियम मिलता है कंटेमिनेशन फ्री है ना वो नहीं वो तो हम भी बेचते हैं ब्राजीलियन कॉटन का वी आल्सो चार्ज प्रीमियम साहब वो तो एडवांस लाइसेंस ही यूज करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है साहब देयर इज नो चॉइस ओके थैंक यू वेल Thank you so much, audience. So I'll just quickly summarize. 81-82 सेंट का बॉटम पैनलिस्ट को दिखता है आइस पे जो टॉप दिखता है वो 87-80 सेंट्स का है एक्सपोर्ट्स के नंबर्स की बात करूं तो 20 से 25 लाख गार्ड या मैक्सिमम 30 लाख गार्ड तक का व्यू आया है पैनलिस्ट का आने वाले सीजन में एक्सपोर्ट हो सकता है इंपोर्ट की बात 20 से 25 लाख गार्ड का एक्सपोर्ट हो सकता है कुछ किसी ने शायद 30 बोला था जो बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे और इंपोर्ट की बात करें तो 15 से 20 लाख गार्ड का इंपोर्ट इज व्हाट इंडिया कैन सी In terms of countries, Bangladesh is doing bad, Indonesia is doing bad, Vietnam has some positive news. So, well, I think this is the summary of our panel discussion, and I would like to thank all the panelists for giving such insight and sharing such good information with our audience. Thank you so much, everyone. It's been a pleasure. We'll take a group picture.
Thank you so much for such a wonderful panel discussion. Clearly, Sanchit has been a common favorite today. I think, Sanchit, you could probably host the upcoming events also. All right, everyone, now it's time to start the next panel discussion, which is on market scenario. I would like to invite Shri Gopal T. Agarwal, Director, Cotton Association of India, to come on stage and moderate this session. I would also like to invite the other panelists. Shri Vinay N. Kotak, Additional Vice President, CAI. Shri S.M. Makharia, Honorary Treasurer, CAI. Shri Raja Gokul Gandhi, Director, CAI. Shri Pankaj Mepani, Director, CAI. Shri Arun Seksaria, Executive Additional Vice President, CAI. Shri Manish Shah, Director, CAI. Shri Akash Shah, President, Gujko Trade Association. Shri Mahesh Sharda, President, Indian Cotton Association Limited. Shri Kunal Thakkar, Director, UB Cotton Private Limited. Shri Vikrant Khaitan, Managing Director, Asta Lakshmi Spinning Mills. Shri Amit Sayal, Trader Vitera India Private Limited. Shri Manish Malpani, Managing Partner, Malpani Cotton Mills. Shri Sanjay Rathi, Director, CAI. And Shri Anupam Kaushik, Olam Agro. I think there is a chair in the corner. Thank you so much, everyone. हेलो फ्रेंड्स, अभी जैसे अभी जो लास्ट सेशन हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हुआ उसके अंदर काफ़ी हमें अच्छी जानकारी मिली और जैसे संचित ने बताया कि जो भी डिस्कशन हो रहा है सब हमारे इनके जो भी यहाँ पे पर्सन्स बैठे हैं इनके खुद के अपने पर्सनल व्यू है, ये कोई भी अपना बिजनेस अपनी विवेक से करे। यहाँ हम जो भी डिस्कशन कर रहे हैं उसका सबके अपने व्यू के हिसाब से कर रहे हैं। आज का ये जो सेशन है जैसे अतुल भाई ने बताया कि तेजी मंदी का है, तो ये तेजी मंदी का सेशन नहीं है, ये सिर्फ एक मार्केट के अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है हम उसके ऊपर थोड़ा सा एक लाइट देंगे। और जो मैं बता रहा हूँ कि लास्ट मोर देन 1 ईयर से हमारी इंडस्ट्रीज की जो हालत चल रही है उसको देखते हुए मुझे जो हम बचपन से एक सुनते आए गीता सार कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, क्या लाए थे क्या ले जाएंगे, कल जो तेरा था आज मेरा है कल किसी और का होगा। ये हमारे कॉटन की आज इंडस्ट्रीज की हालत है। हम सभी इसी उम्मीद पे बोल रहे हैं कि इस रात की कभी तो सुबह होगी। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये कोई रात नहीं है, सिर्फ हमने अपने जो कुछ सिचुएशंस वर्ल्ड वाइड चेंज हुए हैं, कुछ बिजनेस की थ्योरीज चेंज हुई है, इसलिए सिचुएशन टाइमली हर बिजनेस में अप डाउन्स आते रहते हैं। हमें उसमें कैसे प्रिकॉशन लेना है, हमें उसमें कैसे अपने आप को संभाल के चलना है, ये इम्पोर्टेंस है। अगर मैं मार्केट की सिनेरियो के लिए बोलेंगे तो जो मार्केट को जो चेंज करते सिनेरियो है इसके अंदर रहता है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिमांड सप्लाई और क्लाइमेट्स, अराइवल प्रेशर्स, फार्मर इंटेंशंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंस रहता है सेंटीमेंट। सेंटीमेंट का मैं अगर एग्जांपल दूं तो यहाँ पे हमारे बहुत से जीनर्स भाई बच्चे और सभी जानते हैं कि कॉटन के अंदर एक और हमारा बायो प्रोडक्ट रहता है कॉटन शीट।
तो हमारे बिजनेस में, सभी बिजनेस में सेंटीमेंट कैसे इंपॉर्टेंस रहता है, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दूंगा कि हम जिसको बोलते हैं काटन केक। काटन केक अगर हम देखेंगे तो एक हमारा बायो प्रोडक्ट है। अभी अगर देखेंगे यहाँ से बहुत से हमारे भाई वो लोग हैं जिनकी आई मिल्स रहती है, 4 दिन अगर काटन का मार्केट अगर उसका वायदा अगर टाइट रहता है तो खल में बहुत डिमांड आ जाती है, और अगर 8 दिन अगर वायदा डाउन रहता है तो खल में लेवल डाउन हो जाते हैं। लोग बोलते हैं कि भाई खल्ली में डिमांड नहीं है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा सर कि कोई 8 दिन तक कोई एनिमल उपास नहीं रखता है, कोई फास्टिंग नहीं करता है। डिमांड अपनी बनी हुई है, सिर्फ सेंटीमेंट का फर्क है, इसलिए बाहर बाजार से चलेगा। तो आज जो हमारी सिचुएशन हो रही है बिजनेस की, इसी के अंदर कि जो सेंटीमेंट की वीकनेस है, आज हमारे बीच में जो सेशंस के अंदर जो बैठे हैं सब एक्सपर्ट्स यहाँ पे बैठे हैं, मैं इनसे 1 बाय 1 उनके व्यूज़ जानूंगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की संचित और इनके ग्रुप्स ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी, तो हम उसे ज़्यादा उसके बारे में डिस्कशन न करते हुए हमारे जो क्वेश्चंस है वो सबसे पहले मैं हमारे मोस्ट सीनियर अरुण भाई नहीं है ना, महेश जी से बोलूँगा कि जो अभी एमएसपी ऑपरेशंस है उसका हमारे कमिंग मार्केट्स के ऊपर कैसे उसका डिमांड के ऊपर फर्क पड़ेगा और एमएसपी ऑपरेशन कैसे रहने वाला है। गोपाल भाई थैंक यू। तो सबसे पहले तो मैं इस मंच से ये कहना चाहूँगा कि एमएसपी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस इंडस्ट्री के लिए। अगर लगातार एमएसपी बढ़ता रहा तो हमारी इंडस्ट्री कैसे सरवाइव करेगी इसके बारे में सोचना पड़ेगा और कोई इसका मध्यांतर रास्ता निकालना पड़ेगा आने वाले समय में। जहाँ तक एमएसपी का सवाल है, पहले मेरे से पहले वक्ता बोल के गए हैं कि कुछ 2 मुख्य चीज़ें जिन पे निर्धारित है। भाई एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं, अगर वॉर बढ़ती है और अगर वो कंट्रोल में नहीं आती तो हो सकता है हमारा एमएसपी प्रोग्राम बड़ा भी हो जाए। दूसरा, जो भी एमएसपी फार्मर्स का इंटेंशन है, भाई फार्मर अपना कितना मंदी तेजी देखता है, जो कि पिछले वक्ता बोल गए अनसर्टेन है। यू नेवर नो। हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि फार्मर अब एक बराबर का एक भागीदार है और खरीदार भी है, वो मंदी तेजी करेगा। तो वो एमएसपी आने देगा या नहीं आने देगा, उस पे पूरा सवाल है। अगर जनरल व्यू दूं तो मैंने बात करी सीसीआई के अफसरान से, तो उनका कहना है कि 10 से 15 लाख गांठ का एमएसपी इंडिया में हो सकता है और मुख्य रूप से वो साउथ इंडियन स्टेट्स में ही होगा। इसी के साथ थैंक यू। मैं जी आपसे और पूछना चाहूँगा, ये हम जो एक काटन की एक प्राइस अगर हम एक्सेप्ट करें कि जिस हिसाब से इस बार क्राफ्ट सिचुएशन दिख रही है और डोमेस्टिक डिमांड की है, तो सिर्फ मैं जस्ट इनके व्यू जानना चाहूँगा। ज़रूरी नहीं है कि सभी अपना है, तो मैं पर्सनली कि आपको क्या लगता है कि ये कमी जो हमारा इस वर्ष है वो प्राइस रेंज, इंडियन प्राइस रेंज कहाँ से कहाँ तक रहेगी? मतलब आपको डाउन साइड में क्या लग रहा है और अप साइड में क्या लग रहा है? तो जहाँ तक प्राइस रेंज की बात करें तो लोगों का कहना है कि हर बाजार आज के दिन यूएस आइस इंडेक्स पे निर्भर करता है। तो मेरे चाइनीज़ फ्रेंड से मैं बात कर रहा था, या मैंने यहाँ भी लोगों से बात करी, उसकी रेंज बहुत बड़ी है, 77 सेंट से लेकर 102 सेंट तक की रेंज है। तो अगर उसी से हम समझें कि बाजार का कितना उतार चढ़ाव हो सकता है, तो जहाँ पर हम खड़े हैं उससे 10-15% बाजार बढ़ भी जाए, अगर डिमांड बढ़ जाएगी, तो ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल फोर्सेस बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी कि कहाँ तक बाजार जाएगा। नहीं, इंडियन कॉटन का ही रेट उसी से ही जुड़ा हुआ है, पर मैं कह रहा हूँ इंडियन कॉटन का रेट 10% या 15% बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये बाहर की फोर्सेस पे काफ़ी डिपेंड है आज के दिन। भाई हमारा जियोपॉलिटिकल सिनेरियो जब तक शांत नहीं होगा तब तक डिमांड नहीं आएगी। डिमांड नहीं आएगी तो कॉटन बढ़ने की इतनी जल्दी से नहीं बढ़ेगा। मैं सेम क्वेश्चन विनय भाई से करूँगा
कि सर आपको क्या लगता है कि जो एमएसपी ऑपरेशंस है अभी जो हमारे लगता है उसके आने की कितनी उम्मीद है और उसका जो एमएसपी ऑपरेशंस का हमारे इंडियन अभी डोमेस्टिक मार्केट पे कितना इफेक्ट रहेगा? हेलो, एमएसपी तो सबसे पहले आएगी तेलंगाना में, क्योंकि वहाँ आउटटर्न के हिसाब से कॉस्टिंग बढ़ जाती है, तो सबसे पहले साउथ में एमएसपी आएगी। लास्ट मेरे ख्याल तो आएगी नहीं, अगर आई तो भी लास्ट में लास्ट गुजरात में आएगी, क्योंकि गुजरात का होम कंजम्पशन है, जहाँ भी होम कंजम्पशन कम है और क्रॉप ज़्यादा है वहाँ एमएसपी का चांसेस ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा चांस जो है वो तेलंगाना में है, और तेलंगाना के बाद थोड़ा बहुत महाराष्ट्र में कोई एरिया में आ सकता है। नॉर्थ में तो आएगा तो वो पॉलिटिकल प्रेशर में आएगा, क्योंकि नॉर्थ के क्वालिटी तो इतनी है कि एमएसपी के पैरामीटर में आना ही मुश्किल है। तो ज़्यादा करके एक्चुअल एमएसपी आएगी वो तेलंगाना में आएगी, और ये जो एमएसपी आएगी उसके हिसाब से आपकी बॉटम बन जाएगी कि भाई अपना समझो एमएसपी 56,000 की कॉस्ट है तो 55,000 बॉटम हो जाएगी, क्योंकि कई फार्मर्स ऐसे हैं कि जिसको माल देना है सीसीआई को लेकिन उसकी लोन कटती है, तो वो सीसीआई को देने के बदले थोड़ा 15-20 रुपये क्विंटल नीचू बाहर भी बेच देता है। तो अगर एमएसपी की कॉस्ट 56 है तो बॉटम 55 है, लेकिन एमएसपी की आउटटर्न के हिसाब से एमएसपी तेलंगाना में काफ़ी ऊपर है। मेरे हिसाब से इट मे बी 58,000-59,000, सो देयर द एमएसपी विल कम फर्स्ट। सो अकॉर्डिंग टू यू आपको मतलब हमारी इंडियन प्राइस रेंज कमिंग मतलब इस वर्ष के लिए क्या लगती है, मिनिमम और हाई मतलब क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू यू? इंडियन प्राइस रेंज जो है कॉटन की, इंडिया की प्राइस की रेंज मेरे हिसाब से जो अच्छे कॉटन है, जो 29 प्लस के अच्छे 75 प्लस आरडी के माल है, उसकी मुझे 57,000 की मदी नहीं लग रही है, क्योंकि क्रॉप की पोजीशन अच्छी नहीं है और डिमांड की भी पोजीशन अच्छी नहीं है इतनी, इसलिए शॉर्ट रन में तो 60,000 की तेजी भी नहीं लगती है। इट्स अ टग ऑफ वॉर बिटवीन दी शॉर्ट सप्लाई एंड लेस डिमांड। तो रेंज बाउंड चलेगा, जैसे आइस भी रेंज बाउंड चलेगा, ये भी रेंज बाउंड चलेगा, लेकिन आगे जाके अगर डिमांड रिवाइव हो गई देन प्राइस विल मार्च फ्रॉम मार्च, इट कैन गो इवन टू 65,000। थैंक यू विनय भाई। अभी मैं हमारे विक्रांत जी खेतान से पूछता हूँ, ये भी एक अच्छे बड़े स्पिनर्स हैं और कॉटन कंजम्पशन की जो अभी इंडिया के अंदर सिचुएशन है स्पिनरों की, तो इसके बारे में थोड़ी आप जानकारी देंगे कि अभी इंडियन कॉटन कंजम्पशन स्पिनर्स के लिए कैसा है? अभी जो सिचुएशन है इंडियन कॉटन कंजम्पशन की ऐसा है कि टोटल इंस्टॉल स्पिंडल नियर अबाउट है 50 मिलियन स्पिंडल है, और इसका अभी 2/3 कॉटन है, 1/3 सिंथेटिक नॉन कॉटन पे चल रहा है, मेड फाइबर पे चल रहा है। सो 350 टोटल कंजम्पशन है, और राइट नाउ जो सिचुएशन डिमांड है ऑल ओवर इंडिया में एवरेज देखें तो ये 80 to 85% यूटिलाइजेशन चल रहा है। सो अप्रॉक्सीमेटली राइट नाउ द कंजम्पशन विल बी 280 to 290 लाख बेल्स। इफ डिमांड विल बी इंक्रीज, इट विल बी इंक्रीज टू 32 to 33 मिलियन बेल्स एज पर माई। और आपको लगता है आने वाले समय के अंदर कुछ डिमांड सियान में निकलने की या कुछ बढ़ने की गुंजाइश है कि मिलों का कंजम्पशन यहाँ से और बढ़ेगा? Possibility, everything is depending upon the fabric demand. Fabric demand if come na, export demand and fabric demand if come, definitely the production people will be increase the utilization and efficiency, and it will be increase the production. विक्रांत जी आपसे और मैं पूछना चाहूँगा कि आप अकॉर्डिंग टू यू प्राइस रेंज जो है हमारे इंडियन कॉटन की इस वर्ष के लिए आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? So right now जो सिचुएशन है मार्केट की सिचुएशन है, इफ यू सी कॉटन पॉइंट ऑफ व्यू, टाइट सप्लाई, लेस इन्वेंट्री, it will be range bound around 58 to 68. But if you see export demand, it will be look like a 55 to 56. If you see fabric side, it will be around to 50 to 52,000. So my expectation level will be 55 to 58. It will be range. थैंक यू विक्रांत भाई। अब हमारे बीच में एक स्पिनर्स और है भाई संजय जी मंत्री, मैं उनसे बताऊंगा कि वो थोड़ा इंडियन स्पिनर्स की कंजम्पशन के बारे में थोड़ा सा फोकस करें। एक्चुअली
we all are talking about yield and productivity of cotton in morning session. But I think equal weightage should be given for consumption side also. कॉटन का कंजम्पशन आई थिंक डे बाय डे बहुत कम होता जा रहा है. अभी सवेरे मॉर्निंग में एक ब्रोकर से मेरा बात हो रहा था. लास्ट मंथ में चाइना से पॉलिस्टर कॉटन फैब्रिक बहुत इंपोर्ट हुआ है और उसका फील कॉटन के फैब्रिक के जैसे ही है. और ये लोग कॉटन फैब्रिक बोल के ही बेच रहे हैं आगे गारमेंटर को, इनको भी. तो दिस इज़ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन. वी मस्ट थिंक अबाउट कंजम्पशन ऑफ कॉटन, और कॉटन का कंजम्पशन कैसे बढ़े इसके लिए हम सभी को प्रयास करना चाहिए. गवर्नमेंट को भी कॉटन को प्रमोट करना चाहिए. लाइक कैलिफोर्निया में आलमंड को जैसे प्रमोट करते हैं वहाँ पर यूएस में, जैसे कॉटन को भी अपने इधर इंडिया का वन ऑफ द मेजर क्रॉप कॉटन है, तो इसको गवर्नमेंट के लेवल पर बहुत अच्छी तरह से प्रमोट करना चाहिए. वो लैकिंग है अभी. और ये जो सवेरे मैंने जो सुना है तो वो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन मेरे को दिख रही है कॉटन के कंजम्पशन के बारे में, क्योंकि फैब्रिक बहुत धड़ल्ले से इंपोर्ट होते जा रहा है चाइना से, पॉलिस्टर कॉटन फैब्रिक. इसका फील एकदम कॉटन के बराबरी का है. तो वी शुड थिंक अबाउट कंजम्पशन ऑफ कॉटन शुड बी इंक्रीज एंड वी गवर्नमेंट शुड ऑल्सो प्रमोट द कॉटन एट एवरी लेवल. तो अकॉर्डिंग टू यू अभी कितने परसेंटेज स्पिंडल चल रहे हैं, मतलब जो हमारी कैपेसिटी है जो कॉटन पे, तो कितना परसेंट कैपेसिटी से स्पिनिंग चल रहा है अभी अपना इंडिया लेवल पे? अगर सोचे तो ऑलमोस्ट 75-80% स्पिंडल्स अभी रनिंग है, चालू है. और ये जो अभी न्यू स्पिंडल और ऐड हो रहे हैं, जो लास्ट अगर आप देखेंगे तो लास्ट 1 ईयर से अप्रॉक्सली 15 लाख स्पिंडल नया ऐड हुआ है. तो इससे आपको लगता है कि आने वाले टाइम में कंजम्पशन और बढ़ेगा जो ये रनिंग सीजन है इसमें? कॉटन का कंजम्पशन तो नो डाउट जैसे जैसे स्पिंडल्स बढ़ रहे हैं तो वैसे कॉटन का कंजम्पशन तो बढ़ेगा ही. बट यान कहाँ पर बेचेंगे ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा. जैसे जैसे यान का स्टॉक बढ़ते जाएगा, नहीं मिले हैं अभी तो वो कॉटन का स्टॉक भी उनके पास है तो यान बना के वो स्टॉक कर रहे हैं, डिस्पेरिटी में भी बेच रहे हैं. लेकिन कुछ टाइम के बाद सोचना पड़ेगा कि भाई इसमें कहाँ हम रुके, और जब वो अलार्मिंग पोजीशन आ जाएगी तो उस समय थोड़ा कॉटन का कंजम्पशन कम हो जाएगा. अभी तो 80% स्पिंडल्स चल रहे हैं. और अकॉर्डिंग टू यू सर, आप क्या एक्सेप्ट करते हैं इंडियन प्राइस रेंज इस साल के लिए भी, कि आपको क्या लगता है कि डाउन साइड कितना है और अप साइड कितना है, जिस हिसाब से क्रॉप सिचुएशन और कंजम्पशन की पोजीशन है उस हिसाब से? कॉटन रेट के बारे में बोल रहे हैं? कॉटन रेट, इंडियन कॉटन रेट. इंडियन कॉटन रेट का जैसा एमएसपी ऑपरेशन अगर अपन सोचे तो ये डाउन साइड में 56-57,000 मुश्किल लग रहा है. 57,000 तक डाउन साइड में जाएगा, और अप साइड में इस देयर मे बी 65,000 मैक्सिमम. थैंक यू संजय भाई. मैं हमारे श्याम जी मखरिया से पूछना चाहूँगा कि सर आपको क्या लगता है इंडियन कंजम्पशन की पोजीशन कैसी है? नए स्पिंडल जो ऐड हो रहे हैं उससे क्या प्रोडक्शन और बढ़े, कंजम्पशन और बढ़ेगा? सर ये सवाल आपने जो कहा बड़ा अच्छा सवाल है. मेरा इसमें विचार बहुत दूसरा है. आज जो नए स्पिंडल लग रहे हैं, अगर डिफरेंट गवर्नमेंट जैसे गुजरात गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट सब सब्सिडी देना चाहती है नई स्पिनिंग यूनिट लगाने में, तो उनको जो सब्सिडी मिलती है उससे पुरानी जो मिलें चल रही हैं उनको वो सब्सिडी की वजह से नुकसान इसलिए होता है कि नई मिलें जो 10 रुपये 15 किलो उनको जो सब्सिडी मिलती है यानी कि वो सस्ता यान बाजार में बेचते हैं, तो पुरानी मिलों को उससे नुकसान होता है. पर नए स्पिंडल लग रहे हैं तो कंजम्पशन तो डेफिनेटली आपका बढ़ेगा, और पुराने पैनलिस्ट से बढ़ा कि यान का एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है. तो दैट मीन यान की डिमांड वर्ल्ड में बढ़ रही है. स्पेशली बांग्लादेश वगैरह इंडिया से सब मंगाना चाहते हैं कि उनको एडवांटेज है. तो मेरा ये सोचना है कि कंजम्पशन आपका बढ़ेगा, और क्रॉप कम है तो उसकी वजह से आपको मुझे कॉटन में तेजी लगती है आगे चल के. एमएसपी ऑपरेशन आएगा जरूर, वो होने के बाद में आप जो फरवरी मार्च में आने के बाद में रुई की शॉर्टेज दिखने लग जाएगी. और मेरा जो प्राइस रेंज अगर आप पूछें तो 55,000 लोएस्ट पर, ऊपर में 65 से 66,000 तक जा सकता है.
थैंक यू मखरे जी। एज पर माई व्यू में थोड़ा सा कंजम्पशन के बारे में खुद फोकस करना चाहूँगा। जो मुझे लगता है कि इंडियन कंजम्पशन अगर हम देखें तो नॉर्थ मिल अप्रॉक्सीमेटली 90% कैपेसिटी में चल रही है, और गुजरात की जैसे अभी नई मिल है और जैसे अभी बताया कि सब्सिडीज़ है वहाँ पे और उनको लोकल काटन चीपर रेट में मिलता है, प्लस वहाँ पर उनको लारी फ्रेट जो है वो कम लगता है, क्वालिटी और डिलीवरी पीरियड शॉर्ट है, इमीडिएटली काटन अवेलेबल हो जाता है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलों की कैपेसिटी चल रही है। महाराष्ट्र में शायद उससे थोड़ा सा स्लो चल रहा है, बट नॉट बैड। अगर सिचुएशन अगर हम देखें तो सिर्फ साउथ इंडिया की ख़राब है, जहाँ पर कि कंजम्पशन ड्रेस्टिकली मतलब डाउन हुआ है कि ड्यू टू उनके पास थोड़ा सा फाइनेंशियल क्रंच। और वहाँ पर अगर आज देखें तो उनको 1500 रुपये खंडी अप्रॉक्सली आज उनको लारी फ्रेट लगता है। और मोस्टली अगर होजरी यान छोड़ के देखेंगे तो वार्प यान उन्हें वापस से भिवंडी, इच्चलकरंजी, मालेगांव इस मार्केट में आकर के सेल करना पड़ता है, जिससे वापस उन्हें 2 टाइम लारी फ्रेट लग रहा है। प्लस उनके पावर कास्ट ज़्यादा होने से उनकी जो प्रोडक्शन कास्ट है वो काफ़ी बढ़ रही है, इसलिए सबसे ज़्यादा चैलेंजेस साउथ इंडिया में। तो जिस हिसाब से कंजम्पशन अगर कम अगर वो साउथ में हो रहा है तो यहाँ पे उसका मेकआउट हो करके इंडिया का कंजम्पशन डाउन है, बट उतना बेसिकली सिर्फ साउथ इंडिया देखें, क्योंकि हम मेजर बिजनेस साउथ इंडिया में कहते हैं तो वहाँ की मिलें बताते हैं कि भाई काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब है। तो अगर देखेंगे तो अगर उसके इम्प्रीजन में यहाँ पर मिलें अच्छे से चल रही है। अगर ऐसा होता तो आज अभी सब देखिए कि अराउंड हमारी क्राफ्ट लास्ट ईयर 320, 325 की जैसे सभी बता रहे थे आई थी, और 15 लाख गाट का एक्सपोर्ट हुआ है, तो 3 करोड़ का यान कहीं ना कहीं सेल ही हुआ है। तो मैं आप लोगों को फ्रेंड्स ये बताना चाहूँगा कि इंडिया का अगर खुद का हमारा होम प्रोडक्शन देखें तो डाउन नहीं है, यान की हमारा लोकल डिमांड्स अच्छी है। यान की कंडीशन इसलिए ख़राब है क्योंकि हमारा जो एक्सपोर्ट में 35% माल एक्सपोर्ट यान होना चाहिए, जो कि एक्सपोर्ट नहीं होने से उसका लोकल में सेलिंग प्रेशर है। तो जो डिमांड अगर सपोज करो कि मार्केट में 65% की है और मार्केट में 15% ही एक्सपोर्ट जा रहा है, तो जो 20% का एक्सेस सप्लाई जो कि एक्सपोर्ट होना था वो डोमेस्टिक मार्केट में, इस कारण से वो वहाँ पर सेलिंग प्रेशर होने से हमें यान के अंदर कंपटीशन ज़्यादा होने से रेट नहीं मिल पा रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि मैं इस चीज़ को फोकस करना चाहूँगा कि हम लोग मार्केट फॉरेन मार्केट देखते हैं कि हमारा काटन एक्सपोर्ट करना है, हमारा यान एक्सपोर्ट करना है। आज अगर देखेंगे तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी बाहर से कंपनीज को यहाँ इंडिया में बिजनेस करने ला रहे हैं, और हमारा जो कि सबसे बड़ा टेक्सटाइल्स है, हम इसके लिए मार्केट फॉरेन में ढूंढ रहे हैं। अगर हम यहीं पे जैसे हमारे किसी भाई ने जीनिंग लगाई तो सिर्फ जीनिंग ही जीनिंग लगा ली, स्पिनिंग लगाए तो सिर्फ स्पिनिंग लगा ली, इसके जगह अगर हम वैल्यू एडेड में जाएंगे और हमारा खुद का हम जो कंजम्पशन इंडिया के अंदर बढ़ाएंगे, तो मुझे लगता है कि हमें अदर मार्केट्स पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। जैसे आज बोलते हैं कि यूरोप की हालत ख़राब है इसलिए हमारा यान एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, तो यूरोप की पॉपुलेशन हमारे इंडिया की पॉपुलेशन से 50% है। आज अगर हम अपनी यहाँ पर ही देखें कि हम अपना माल अगर यहीं पे उसको वैल्यू एडेड करके यहीं हम गारमेंट्स बनाएं और हमारा मार्केट यहीं हमारा माल सेल करे, तो मुझे नहीं लगता है कि हमें यहाँ पे कोई भी चैलेंजेस होगा। इंडिया के अंदर बहुत काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, सिर्फ उसके लिए हमें वैल्यू एडेड के बारे में सोचना चाहिए, हमारा खुद का कंजम्पशन यहाँ करना चाहिए, तो उसका हमें फ्यूचर में जाकर के काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा। अभी मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अनुपम जी से बताऊंगा। जैसे कि लास्ट सेशंस के अंदर ऐसे बेसिक की जानकारी हो गई थी, यहाँ पे मोस्टली लोग जानते हैं कि इंडियन बेसिस का कैसे क्या है। तो सर आपको क्या लगता है कि इंडियन बेसिस जो ड्यू टू एमएसपी के कारण से यहाँ पर जो बेसिस है क्या रेंज तक रहेंगे, और हमारा जो काटन है वो हम इस रेट पे एक्सपोर्ट कर पाएंगे नहीं, क्योंकि इस पहले सेशंस में इस पर काफ़ी डिस्कशन हो गई, बट अभी एक अच्छे मतलब वो है, तो हम आपके व्यूज़ इस सेशंस के अंदर हम जानना चाहेंगे अबाउट टुडे। अगर अपन एक्सपोर्ट की बात करें तो हिंदुस्तान का कॉटन का एक्सपोर्ट बहुत डिफाइंड ज्योग्राफीज के लिए फोकस्ड है। उसमें सबसे पहले है बांग्लादेश, और बांग्लादेश में अपनी खुद की प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अपने पिछले 1-2 दिन में और उनके यहाँ नया सेट ऑफ डेवलपमेंट हुआ, उनके यहाँ पे इलेक्शन है, और उस इलेक्शन की वजह से अपोजिशन पार्टी जो करंट गवर्नमेंट के ऊपर जो भी उनके एक्टिविटीज़ हैं उसकी वजह से वहाँ पे ट्रबल्स शुरू हुई हैं। तो एक सबसे बड़ा जो बड़ा डेस्टिनेशन चाहे कॉटन का है चाहे यार्न का है, वो एक उनके जो डेवलपिंग कंसर्न्स हैं, प्लस उस कंट्री का मैक्सिमम एक्सपोर्ट जो है वो यूरोप में है, और यूरोप में अभी भी चीज़ें जो हैं वो कंटिन्यूसली एक ड्रिफ्ट में हैं।
क्योंकि वहाँ की वॉर नीचे नहीं जा रही है, प्लस एक नया थिएटर खुल गया है वॉर का मिडिल ईस्ट में। तो ये जो ग्रोइंग कंसर्न्स ऑफ ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हैं, चाहे वो यूक्रेन का हो जो यूरोप में, चाहे मिडिल ईस्ट में हो, और अभी ये एशिया में बांग्लादेश में खुल गया, इसकी वजह से जो इंडिया के की डेस्टिनेशंस हैं कॉटन और यार्न, बांग्लादेश हुआ या वियतनाम हुआ, वो वापस से अनसर्टेनिटी के कैटेगरी में आ रहे हैं। उसकी वजह से ये जो करंट एक एमएसपी का जो इनेबलिंग एनवायरनमेंट बना है, अगर नवंबर 15 के बाद अराइवल्स जब रीजनेबल नंबर पे आती हैं और बांग्लादेश की सिचुएशन ऐसी ही रहती है, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन सब किसी से छुपी नहीं है, जो नॉर्मली 30, 40, 50 दिन की पेमेंट जो उनकी हो रही है कंफर्म एलसी या अनकंफर्म एलसी के सामने, वो अगर और लंबी होगी तो मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग बांग्लादेश को एक डिपेंडेबल डेस्टिनेशन की तरह से देखेंगे। तो उसका इम्पैक्ट एमएसपी एक्टिविटी में दिखेगा, अगर क्योंकि पिछले 14 महीने की कंटिन्यूअस डिमांड वीकनेस, चाहे वो जिनर के लेवल पे हो, चाहे स्पिनर के लेवल पे हो, चाहे किसी भी लेवल पे हो, तो सबकी बैलेंस शीट्स में काफ़ी स्ट्रेस आ गया है। लिस्टेड कंपनीज के भी अगर हम नंबर्स देखें पिछले फाइनेंशियल ईयर के या करंट 2 क्वार्टर के, तो बहुत क्लियरली दिखता है कि पूरे टेक्सटाइल वैल्यू चेन में, फाइनेंशियल में, बैलेंस शीट में स्ट्रेस है। और उसकी वजह से अगर जो ट्रेडिशनल डेस्टिनेशंस में ट्रबल है, तो एमएसपी एक्टिविटी ही एक सपोर्ट रहेगा। फार्मर कुछ रेजिस्ट करेगा कुछ समय तक कि कब तक वो, क्योंकि 7,000 का एक इंडिकेटिव लेवल है, लेकिन वो 7,000 का लेवल उसके लिए एक्सेप्टेबल लेवल नहीं है। 7,000 का भाव उसके लिए सफिशिएंट नहीं है। जैसा अतुल भाई ने आज अपने प्रेजेंटेशन में बताया कि 2,500 रुपये क्विंटल की हार्वेस्टिंग कॉस्ट आ रही है। पंजाब में महेश शारदा जी बता सकते हैं, पंकज जी ने बताया कि आज जो चुगाई है वो पारिश्रमिक रुपए के देने की जगह जो दिन में चुगारा होता है उसकी आधी क्वांटिटी चुगारे में दे देता है जमींदार जो है वो चुगने वाले को। तो इतनी हाई हार्वेस्टिंग कॉस्ट के ऊपर 7,000 कोई रकम नहीं है। तो ऐसा नहीं कि 7,000 के भाव में किसान खुशी खुशी दे देगा, वो मजबूरी में देगा, चाहे वो तेलंगाना हो चाहे नॉर्थ इंडिया हो, कहीं भी 7,000 कोई लेवल एक रेस्पेक्टेबल लेवल नहीं है। तो इसका इम्पैक्ट अगले साल पे क्लियर देखने को मिलेगा। जैसे कि पंकज शारदा जो नायका के वो हैं ऑफिस बेरर, वो बताएंगे आपको कि जो कॉटन ओनली जमीन है नॉर्थ इंडिया की, जिसमें केवल कॉटन उग सकता है, दूसरी क्रॉप नहीं होती, उसको किराए पे लेने वाले अवेलेबल नहीं है अभी। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि 7,000 की एमएसपी फार्मर को एक्सेप्टेबल नहीं है, भले उसको मजबूरी में जाके बेचना पड़े अगर नवंबर 15 के बाद ऑफटेक नहीं होगा तो। सर आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि यू आर द राइट पर्सन टू फोकस ऑन दी। ये जिस हिसाब से भी क्रूड प्राइस बढ़ रहे हैं सर, तो आपको क्या लगता है इसका कॉटन मार्केट पे क्या फर्क पड़ेगा? जिस हिसाब से क्रूड प्राइसेस का दोनों साइड इम्पैक्ट होता है, उसका एक सिंगल साइड कोरिलेशन नहीं है। बहुत सारे जो कॉटन मार्केट का जो आइस का जो मैनेज मनी वाला जो सेगमेंट है, जिसमें लगभग 80 से 90 पार्टिसिपेंट हैं, उनमें 2-3 कैटेगरी के पार्टिसिपेंट होते हैं। एक सीटीए होते हैं, कमोडिटी ट्रेड एडवाइजर, जो खाली ट्रेंड फॉलोइंग होते हैं, और कुछ जो होते हैं फंडामेंटल बेस पे काम करते हैं। तो उसमें कुछ लोगों का मानना होता है कि क्रूड प्राइस बढ़ते हैं तो सारी कमोडिटीज के प्राइस बढ़ते हैं, क्योंकि क्रूड एक उसके अंदर इंटीग्रल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन वो कोरिलेशन पिछले अगर हम 12 महीने में देखें तो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन नहीं रहा। स्मॉल रैलीज आई क्रूड के साथ में, लेकिन वो फिजल आउट हो गई। तो ये क्लियर है कि हायर क्रूड प्राइसेस, हायर इंटरेस्ट रेट की वजह से एक जो वहाँ के कंज्यूमर की बाइंग एबिलिटी है वो इतनी वीक हो चुकी है कि अभी क्रूड प्राइस का बढ़ना कॉटन के लिए नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नहीं हो सकता। और सर आपके हिसाब से प्राइस रेंज आप क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं? आप फिर बताएंगे नहीं सही, बट फिर भी क्या लगता है आपको? मेरा ये मानना है कि कॉटन की प्राइसेस 2023-24 के जो मार्केटिंग ईयर में है, वो उसका सबसे बड़ा जो एक डिसीजिव फैक्टर होगा वो चाइना की रिजर्व परचेज रहेगी। क्योंकि अगर हम रिजर्व परचेज को हटा दें तो अभी तक का जो क्यूमुलेटिव सेल्स है अमेरिकन कॉटन की, वो अपने पिछले कई सालों से पीछे चल रही है। और इकलौता सेवियर अगर कोई हम देखें तो चाइना की रिजर्व परचेज है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में अपनी रिजर्व कॉटन लिक्विडेट कर दी। और ये एक अपने आप में देखने की चीज़ है कि उनका नया सीजन शुरू हो गया, उसके बावजूद उनकी रिजर्व सेल चालू है, क्योंकि वो इस बात पे कमिटेड है कि उनको प्राइजेस ऊपर नहीं ले जाने देनी है। और उन्होंने जैसे उनकी कपास की जब अराइवल शुरू हुई तो उन्होंने बाकायदा बैंकों को बोला कि 7.5 युआन पर किलो से ऊपर किसी को कपास नहीं खरीदनी है, जो खरीदेगा उसको हम फंडिंग नहीं करेंगे। तो चाइना की गवर्नमेंट ZC को नीचे लाना चाहती है और उसी के वजह से आइस नीचे रखते हुए वो रिजर्व परचेज करे, ऐसा लगता है। अभी
अभी तक ऐसे उनकी एक्टिविटी से लग रहा है कि वो चाइना की लोकल प्राइसेस को कंट्रोल करके और रिजर्व के लिए लोअर प्राइसेस में खरीदेंगे। उन्हें मालूम है कि अगर जेडसी ऊपर गया तो आइस भी ऊपर जाएगा और फिर उनके रिजर्व खरीदना मुश्किल होगा। तो इसलिए इकलौता जो फैक्टर है अगले साल में, जब तक डिमांड इमर्ज नहीं होती, चाइना की वजह से ही आइस का ऊपर नीचे मूवमेंट और उसके साथ में इंडिया का ऊपर नीचे मूवमेंट चलता रहेगा। थैंक यू सर। थोड़ा सा टाइम की कमी होने से हम ये सेशंस को थोड़ा सा शार्ट करेंगे, तो मैं थोड़े से जो भी मेंस पॉइंट्स हैं मैं उन्हीं पे फोकस करूँगा। अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मनीष जी शाह से कि सर आपको क्या लगता है कि जो एमएसपी अभी 7,000 के पास है और लास्ट ईयर इस जो किसान ने जिस हिसाब से अपना कपास होल्ड किया था, तो इस साल भी वो अपना कपास मार्केट में इमीडिएट ला करके सेल करेगा या वापस से वो कपास सोच करके बैठेगा, क्योंकि हम अभी ऑलरेडी एमएसपी के नियर है? नहीं, हेलो, किसान का दो फैक्टर रहता है। एक फैक्टर ये रहता है कि उसको प्राइस रियलाइजेशन चाहिए, और दूसरा उसको फैक्टर ये रहता है कि उसको डेट रीपेमेंट नहीं करना है। तो जिस किसान को डेट रीपेमेंट नहीं करना है वो मार्केट से 200-300 रुपया क्विंटल सीसीआई के भाव से 200 रुपया क्विंटल में मार्केट में बेचेगा, लेकिन सीसीआई को नहीं देगा, क्योंकि सीसीआई को देगा तो उसका डेट जो उसने कर्जा लिया हुआ है वो एडजस्ट हो जाता है। तो इसके लिए एक बड़ा कारण हो जाता है, एक मुद्दा रहता है कि कुछ किसान जिनको रीपेमेंट नहीं करना है या उसको पीछे डिलेड करना है, तो वो सीसीआई को माल नहीं देंगे और मार्केट में बेचेंगे, जिसके कारण मार्केट में थोड़ा मामूली सा प्रेशर आएगा, पेमेंट का प्रेशर आएगा। प्राइस रेंज बताइए सर। साथ में इस क्वेश्चन सभी के लिए कि आप अपने प्राइस रेंज आपको क्या लगता है काटन की प्राइस रेंज कमिंग सीजन के लिए? जो ये किसान मार्केट में बेचेगा वो कपास का भाव और उसकी कॉस्टिंग अराउंड 55,000 हो जाएगी, 55,000 रुपया होएगी। लेकिन जो जिनर है लास्ट ईयर मार खाया हुआ है तो वो 56,000 से नीचे बेचेगा नहीं, वो उसका मिनिमम मार्जिन रखेगा। और इन द प्राइस रेंज विल बी बिटवीन 56,000 to 65,000 in April, but the lower side is 56,000. It cannot go below 56. सेम क्वेश्चन मैं राजा भाई से पूछूंगा कि 7,000 की एमएसपी पे किसान का इंटेंशन क्या रहेगा? माल जल्दी वो अपनी मार्केट के रेट में बेचेगा या होल्ड करके रखेगा वो? इसका बेस्ट जवाब शायद फार्मर ही दे सकता है, बट हमारे लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस से मेरी समझ के हिसाब से कुछ बोलना चाहूँगा कि ये नॉर्मली क्वेश्चन होता नहीं है। क्यों आया इस लास्ट ईयर हमने एक बहुत अबनॉर्मल सिचुएशन देखी कि फार्मर ने होल्ड किया, पूरे देश में होल्ड किया, काफ़ी टाइम के लिए होल्ड किया, तो सबकी जो गणित होती है या सब जो एनालिसिस करते हैं उसमें एक चेंज आ गया। जिस तरीके से परचेस होती है, बेसिस ट्रेडिंग होती है, एक्सपोर्ट की प्लानिंग होती है, उसमें बहुत बड़ा फर्क पड़ गया। तो ये दिस इज़ नॉट अ वन टाइम इवेंट। तो ये स्टडी करने हम गुजरात के कुछ फार्मर्स के पास भी गए थे, तो जब ये मैं मेरे जिनर्स को बोलता था क्यों नहीं बेच रहे हो, जब भी हम कुछ फार्मर्स को मिले तो जब भी उनको मिले तो बहुत सारी बातें हुई, बट एक सबसे सरप्राइजिंग आंसर था जब भी मैंने उनको बोला चलो अभी आप गुजरात में 1,900 रुपया मंड चल रहा था जो 9,000 के आसपास होता है, तो मैंने बोला इसके अगर 1,500 हो गए या 7,500, तो उसने मुझे जवाब दिया कि मैंने कहाँ इसको खरीदा है। सो हम सब जो प्राइस में हमारी एक कॉस्ट होती है उसकी जगह फार्मर का ये जवाब था मैंने कहाँ इसको खरीदा है, तो ही वॉज ओके टू होल्ड इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो अभी तो एमएसपी के पास है, प्राइस उनके पास बहुत बड़ा सपोर्ट है। ऐसा लग रहा है कि इस साल भी शायद होल्डिंग होगा और इस साल नहीं। वी हैव टू गेट रेडी दैट दे आर ऑल्सो बिकमिंग प्राइस सेटर एंड दे माइट होल्ड व्हेन उनकी होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ रही है और शायद होल्ड करेंगे। और इस बार भी अगर प्राइस सब्सटेंशियली ठीक नहीं होते तो वो होल्ड कर सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। प्राइस रेंज आपके हिसाब से सर? जियो पॉलिटिकल इश्यूज बहुत अफेक्ट कर रहे हैं प्राइस रेंज को, बट मेरे हिसाब से वर्ल्ड की हम लोग लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं और हमारा एमएसपी प्रोग्राम इज़ द बॉटम प्राइस। इंडिया वर्ल्ड की सबसे सस्ती रुई होती है इंडियन कॉटन और वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एमएसपी ऑपरेशन। तो मेरे हिसाब से थोड़े टाइम के लिए आसपास रहे, बट इंडियन एमएसपी के नीचे बहुत वर्ल्ड मार्केट जाती नहीं और वो डिमांड की कहीं और चली जाती है, तो आइस को भी इफेक्ट करती है। तो 56-57 हज़ार के नीचे मुझे नहीं लगता है मार्केट जाए।
अभी वर्ल्ड का स्ट्रेस इज इंटरेस्ट रेट्स और फेड शायद थक गया है ब्याज बढ़ाते बढ़ाते इन्फ्लेशन. सेकेंड हाफ में अगर वो चेंज होता है तो विल सी अ वेरी बिग रैली, बट अदरवाइज 57-60 could be the range. थैंक यू. हमारे बीच में तेलंगाना से हमारे भाई मनीष जी मालपानी है, और तेलंगाना में ऐसा बताते हैं कि सबसे पहले एमएसपी ऑपरेशन वही शुरू होने की गुंजाइश है. तो मैं वहाँ जानना पड़ूंगा कि तेलंगाना के अंदर फार्मर्स की इंटेंशन क्या रहेगी, अपनी काम जो 7,000 की एमएसपी से नज़दीक अपना माल निकालेगा या होल्ड करेगा? मुझे ऐसा लगता है कि तेलंगाना में बेच देगा माल काश्तकार. लास्ट ईयर काफ़ी मार खाया है उसने. 7,000 के एमएसपी प्राइस है, उसको पता है फर्स्ट फ्लैश बेच देगा, सेकंड फ्लैश को वेट करेगा वो थोड़ा, फिर उसके बाद देखेगा थोड़े दिन, जनवरी तक देख के फिर बेच देगा बच्चों सा माल भी. टेम्परेचर के कारण शॉर्टेज आएगा बोल के बेच देगा वो माल. और प्राइस रेंज सर आपके हिसाब से? 7,000 कटान में 57,000 से 60,000 के बीच में चलेगा पूरा सीजन, और कपास में 75 के ऊपर आएगा तो काश्तकार बेच देगा. 7,200 में वेट करेगा. थैंक यू सर. अभी मैं अपना क्वेश्चन नेक्स्ट पंकज जी नेपानी से पूछूंगा कि ये ड्यू टू अनरेगुलर रेन और लेक ऑफ रेंस के कारण से आपको क्या लगता है कि आने वाले जो सीजन के लिए जो अर्ली सोइंग हमेशा हमारे यहाँ मई मंथ के अंदर अप्रैल मंथ में होती है, जैसे खानदेश में, कर्नाटक है, गुजरात के कुछ पार्ट्स में, नॉर्थ में, तो आपको क्या लगता है उसमें कुछ इफेक्ट पड़ेगा कि सोइंग परसेंटेज उतना ही मेंटेन रहेगा, कुछ कम होगा? देखिए, पूरा अगस्त और 15 सितंबर तक जैसे अतुल भाई ने बताया कि बारिश ही नहीं था, और जो वाटर लेवल है इन डैम्स और जो कुएं में पानी है जो इरिगेशन का करते हैं, तो इफेक्ट तो होने वाला है. जो नया क्रॉप जो शुरू में आता है इरिगेटेड क्रॉप, वो क्रॉप तो कम होने वाला है, डेफिनेटली कम होगा. और आपके हिसाब से सर प्राइस रेंज? ये मेरे हिसाब से आज का जो स्थिति सब देखते हुए लोएस्ट कैन बी 55,000 रुपीज़, और सेकेंड हाफ में, और अगर सिचुएशन खराब होती है, क्रॉप कम है या एक्सपोर्ट आ गया ज़्यादा, सो मैक्सिमम कैन बी 65,000 रुपीज़. थैंक यू सर. अभी मैं ये सेम क्वेश्चन जो भाई आकाश जी से पूछूंगा कि सर आपको क्या लगता है कि जो क्रम इस बार बारिश है या जो बारिश के लिए, तो उससे अर्ली सोइंग इफेक्ट होगा या उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? जी गोपाल भाई, बारिश इरेगुलर और कम हुई है, उससे डेफिनेटली वाटर लेवल काफ़ी डाउन हुआ है, और जो अर्ली सोइंग होती है मोस्टली ये एमपी, कुछ एरिया महाराष्ट्र और गुजरात, वो किसानों को डिस्करेज करेगी. कम बारिश कम पानी, तो वो लग्जरी अब मिल वालों को नहीं रहेगी अर्ली अराइवल की. और दूसरा ये कहना है कि जो कॉटन का कंपीटिंग क्रॉप है, दूसरे क्रॉप है, उसके रेट कंपेरेटिवली काफ़ी हाई है कंपेयर टू कॉटन रेट आज की तारीख में. तो फार्मर जो है वो कॉटन को फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं देगा, तो दूसरे क्रॉप्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देगा. तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट सीजन के लिए कॉटन की अर्ली सोइंग काफ़ी कम हो जाएगी. प्राइस रेंज सर आपके हिसाब से? प्राइस रेंज इस बार सबको, पूरे कॉटन फ्रेटर्निटी को एक लग्जरी है गोपाल भाई कि सबको डाउन साइड पता है कि ये मिनिमम लेवल है 56-57 का, ये लग्जरी है. अभी आपको कितना आपका रिस्क कैपेटाइट है, अतुल भाई की तरह आपको अगर रोलेक्स की वॉच और 1 करोड़ की गाड़ी, उस पर वेटिंग में नाम लिखवाना है तो थोड़ा ज़्यादा रिस्क लो, नहीं तो बैक टू बैक करो, थोड़ा कम काम करो. तो ऊपर का लेवल अतुल भाई चिंगारी लाओ तो अपने आप आएगा. थैंक यू सर. थोड़ी सी समय की कमी के कारण से मैं थोड़ा सा और इसको फास्ट करूंगा. अभी मैं सेम क्वेश्चंस इंडियन बेसिस के ऊपर, और थोड़ा सा जो ऑयल प्राइस की जो इम्पेक्ट है, और आपको आने वाले सीजन में क्या लगता है, अमित भाई थोड़ा सा आप 2 शब्द बोले उसके बारे में. इंडियन जो बेसिस है, इस पे एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी, जैसे भी पहले बताया दिया था कि इंडियन बेसिस क्या रहेगा, और ऑयल प्राइस का जो है क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, और प्राइस रेंज आपके हिसाब से क्या लगती है? इंडियन बेसिस बेसिकली एक फंक्शन है, वर्ल्ड को इंडियन कॉटन चाहिए या नहीं चाहिए. इफ इवेंचुअली बेसिस की रेंज में एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि बिटवीन 200 ऑन एक्सजेन से हम लोग 1200 ऑन एक्सजेन इस साल देख सकते हैं. Probably with current MSP operations
एमएसपी में एक फैक्टर हम लोग अभी तक डिस्कस नहीं किए हैं, वो सीड प्राइसेस। इवन दो आप लोगों के जो नंबर्स हैं वो उसमें एक बड़ा एलिमेंट सीड प्राइसेस का है। सीड प्राइसेस अगर 31, 32 के आसपास रहते हैं तो शायद जो बॉटम के हमने नंबर डिस्कस कर रहे हैं प्रॉबेबली उससे और नीचे हो सकते हैं। दूसरा, इंडियन बेसिस एक्सजिन 100 ऑन एक इवेंचुअल लेवल, अगर न्यूयॉर्क 90 सेंट है तो प्रॉबेबली 60,000 रुपए भी आपका बेस प्राइस हो सकता है, बिकॉज उसके बाद इंडियन एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाती है, इंडियन यान कंपिटेटिव हो जाता है। तो बेसिकली फ्लैट प्राइस पर से बहुत मुश्किल है। हम 3 करोड़ गांठ में से 1.5 करोड़ गांठ एक्सपोर्ट के लिए बनाते हैं, या यान फार्म में या कॉटन फॉर्म में। सो हमें वर्ल्ड मार्केट से अलाइन होके ही सोचना होगा। न्यूयॉर्क या वर्ल्ड को इंडियन कॉटन चाहिए तो हमारे बेसिस नीचे होंगे, वर्ल्ड को नहीं चाहिए तो हम 1400 ऑन पे भी ट्रेड करेंगे। दैट मीन्स न्यूयॉर्क नीचे रहेगा। सो इवेंचुअल लॉन्ग टर्म हम इस साल को अगर कैटेगराइज करें, द रेंज विल बी वाइड, यू विल हैव टू, मतलब इसे ट्रेड करने के लिए बहुत अटेंटिव एक फ्लो में नहीं जा सकते कि ये साल ये बॉटम है और प्रोबेबली इसके बाद हमें साल भर ब्याज निकलेगा या तेजी मिलेगी। दिस इज माय सबमिशन। थैंक यू अमित भाई। अब मैं हमारे लास्ट क्वेश्चन अब मैं कुणाल भाई से पूछूंगा कि सर आप थोड़ा सा फोकस करें कि जो मार्केट्स की सिनेरियो कैसी है आइस में अंदर का और इंडियन मार्केट में आपको क्या लगता है? आइस में तो देखिए आपने इसलिए पहले के सेशन में भी सुना कि 88-89 सेंट्स पे ऊपर काफ़ी सेलिंग है। यूएस फार्मर को बेचना है, ब्राज़ीलियन फार्मर को बेचना है। नीचे में 81-82 पे चाइना एक्टिव हो जाता है, चाइनीज़ ट्रेडर्स भी खरीदते हैं, चाइनीज़ गवर्नमेंट भी खरीद रही है। तो 81-82 नीचे में, ऊपर में 87-88 ये रेंज रहेगी आइस में। इंडियन कॉटन में जैसे कि यहाँ सभी लोग कह रहे हैं और सभी का यही मानना है कि 56,000 मोटा मोटी बॉटम रहेगा, वो तो सब जानते हैं, बट ऊपर तक कहाँ जाएगा ये विल प्योरली डिपेंड ऑन डिमांड। तो रेंज तो यही रहनी चाहिए मोर और लेस 81-82 और ऊपर में 87-88 आइस में। हाँ विनय भाई आप कुछ बताइए। आइस के बारे में एक आपको मेरा थोड़ा वॉलेटाइल व्यू है, बोलना चाहूँगा। अगर ये वॉर बंद हो गई और तो डिमांड वापस आएगी। अभी सब एकदम लो इन्वेंट्री में चल रहे हैं, डिमांड है नहीं, वो पूरा रिवर्स हो जाएगा। आज टुडे वी आर इन द लोएस्ट क्रॉप इन यूएसए, वन ऑफ द लोएस्ट क्रॉप इन चाइना, वन ऑफ द लोएस्ट क्रॉप इन इंडिया। स्टिल we are having a problem because of demand, which I have not seen in the last 40 years. The demand is determining the market. But if the war stops and the demand revives, in my opinion, ice will run to 95. 65. आप इंडियन प्राइस क्या? मेरा व्यू नहीं, अभी टाइम की कमी है अतुल भाई। जैसे विनय भाई ने बताया कि अभी सबसे ज़्यादा हमें जो सबसे नीड टू कॉन्फिडेंस की वर्ल्ड वाइड हमें ज़रूरत है। सभी की जो है वर्ल्ड के अंदर आज कॉन्फिडेंस लेवल लूज हो गया है, इसलिए किसी को भी अपनी इन्वेंट्री रखनी नहीं है। एक इंटरेस्ट रेट इसके अंदर सबसे बड़ा पार्ट है। जैसे आज 58,000 की काटन है और आज आप इसको मार्च महीने तक कैरी करते हैं तो ये आपके घर में 63-64,000 ऑलरेडी हो जाएगी। तो इस हिसाब से किसी को भी मील में पड़ता नहीं है, सामने यान की और फैब्रिक्स की जिस हिसाब से डिमांड नहीं है तो उस हिसाब से कोई अपनी इन्वेंट्री बनाना नहीं चाहता, सबको हैंड टू हैंड लेना चाहता है। मैं इन शॉर्ट इतना बताऊंगा कि जैसे आज हमारे जितने भी यहाँ स्पिनर्स बैठे हैं, जिनर्स बैठे हैं, ये सब पहले 1000 गांठ पड़ी रहती थी तो उन्हें टेंशन नहीं होता था, 2 महीने की काटन रख के मील चलाते थे। आप किसी को भी जब तक वो माल घर में सेल नहीं हुआ है और उसको जब तक उसको बाहर बेचता नहीं है तो नया माल लेने की उसकी हिम्मत नहीं है। स्पिनर्स को अपनी इन्वेंट्री बढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं है, तो एक कॉन्फिडेंस की कमी है। अदरवाइज जो है तो देखेंगे जिस हिसाब से अतुल भाई अभी बोले कि रोलेक्स की जो घड़ी है आज 5 लाख रुपए की मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो कोई भी पेइंग कैपेसिटी कम नहीं है, सिर्फ एक कॉन्फिडेंस की कमी है। और जो अल्टरनेटिव फाइबर्स फैब्रिक्स और जो आ चुके हैं, इन्होंने जब 1 लाख की रुई होने से उन्होंने मार्केट में अपनी वो बढ़ा दी है, इस हिसाब से वो हो गया है। अदरवाइज आज किसी भी माल में जाओ जगह नहीं है। आप अगर देखेंगे तो हर जगह पे अपने जो डिमांड्स पूरी बनी हुई है।
आज एक एक मूवी 500 करोड़ 1000 करोड़ का बिजनेस कर रही है, तो अगर पेइंग कैपेसिटी नहीं होती तो वो नहीं है। तो सेल तो सब अपनी जगह पे बना हुआ है, सिर्फ एक उसकी इन्वेंट्री बनाने की। और जिस दिन भी इसके अंदर जितने नेगेटिव्स होने थे सारे हो गए, अब वो पॉजिटिवनेस अगले 2 महीने में आए, 6 महीने में आए, 1 साल बाद में आए। बट जिस दिन भी पॉजिटिवनेस आएगी मार्केट के अंदर, डाउन स्ट्रीम मुझे कम लगता है, अप स्ट्रीम में हो सकता है यही रेंज बाउंड रहे कमिंग डेज में, या हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर अच्छी तेजी देखने को भी मिले। हमें इतने शार्ट में कहना चाहूँगा कि 350 के ग्राफ पे 1 लाख रुपए रुई हुई थी, तो 300 करोड़ की ग्राफ के अंदर हम आज 50,000 55,000 की इस तरीके की बात कर रहे हैं, तो वो कोई भी प्रेडिक्शन आज जरूरी नहीं है। इन शार्ट मैंने एक लाइन ऐसी लिखी थी अपने खुद से कि मार्केट के अंदर मौसम, मौत, बाजार और महिला, इनकी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। मौसम, मौत, बाजार और महिला, इनकी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। ये हमेशा रहस्यमय, अनिश्चित और अस्थिर होते हैं। बाजार को देखने का जो एकमात्र तरीका है कि मार्केट का सम्मान करो, जैसी सिचुएशन है उसके हिसाब से करो, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करो, जितनी अपन रिस्क ले सकते हो उस हिसाब से करो, और कोई भी इसके साथ प्ले ना करें, क्योंकि बाजार कब कौन टर्न हो जाएगा। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो अपनी पोजीशन लॉन्ग नहीं रहे तो शार्ट भी नहीं हो। जैसे अगर एमएनसी ने पिछले हफ्ते कुछ पेल्स 56,000, मुझे बताना नहीं चाहिए बट मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, 56.5 में बेच दी तो सारे जिनर शार्ट हो गए कि जब एमएनसी इस भाव में बेच दी तो रुई 55,000 हो जाएगी क्या। बट वो एमएनसी बेसिस पे हो रही थी, उस दिन न्यूयॉर्क 82,000 था, वो शार्ट हो गए, वो रुई 58,000 हो गई। तो आप किसी की देखा देखी नहीं करें, अपने खुद के विवेक से धंधा करें। और मैं भी ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि काफ़ी लोगों को अभी रिटर्न फ्लाइट भी है, भी तो इसके अंदर कहने के लिए बहुत है। सिर्फ मैं इतने ही 1-2 लाइन इसके बारे में बोल रहा हूँ कि जब भी तन पे लिबास होता है सभ्यता का विकास होता है, जब भी तन पे लिबास होता है सभ्यता का विकास होता है। लाख दुनिया बदले रंग मगर हर लिबास में कपास होता है। सर उठा के सीना चौड़ा करके सलाम करो यारो, सर उठा के सीना चौड़ा करके सलाम करो यारो, अरे तिरंगे में भी धागा रुई और कपास होता है। थैंक यू। गोपाल जी, आपने अच्छा मॉडरेशन किया, ऑल द कॉम्प्लीमेंट्स टू यू। एक फोटो स्नैप के लिए सब आ जाएगा ये। Thank you so much, everyone, for such an informative session. All right, everyone. Now it's time for our next panel discussion, which is solutions and challenges facing Jinners. In order to start this business session, I would like to invite Shri Sanchit Singh Rajpal, Vice President, CAI, to come on stage and moderate this session. I would also like to invite the other panelists, Shri Arvind Jain, Vice President, Khandesh Jinners and Traders Association, Shri K. Ramesh, Managing Director, Kaveri Ginning Mills Private Limited, Shri Sridhar Reddy, Honorary Treasurer, Telangana Cotton Millers and Traders Welfare Association, Shri Rafiki Jivani, Managing Partner, RS Agrotech Cotton Ginning and Pressing Factory, Shri Vijay Kumar Behani, Director Behani Binyake Private Limited, Shri Vijay Medgood, Managing Director Vijay Industries Belonghal, Shri Amit Doshi, Managing Director Ronak Ginning Factory Surendranagar, Shri Sushil Mittal, President Haryana Ginning Association, Shri Arun Agarwal, President Cotton Association of Odisha, Shri Manoj Goenka, Director Shri Balaji Ginning Factory Hinganghat, Shri Vinod Jain, President MP Cotton Association, Shri Santilal Oshwal, President Karnataka Cotton Association, Shri Arvind Pan, President Saurashtra Jinners Association, Shri H. Venkat Ram Reddy, Honorary Secretary, the Adoni Cotton Merchants Association, Shri Rajendra Kumar Jain, Associate Director, CAI, Dr. Pradeep Kumar Marnyan, Chief Executive Officer, CAI Labs, and Shri
Gyaneshwar Bhamre, Director, Keshan Anand Ginning and Pressing Private Limited. नमस्कार सभी को। तो फिर से आप सबके सामने आने का मौका मिला। धन्यवाद करना चाहूँगा CAI का इस अपॉर्चुनिटी के लिए। बहुत ही सीनियर और बहुत ही बढ़िया और बहुत अच्छा पैनल है, जो इतने सीनियर लोग हैं हमारे साथ और इनके एक्सपीरियंस से आज हम बहुत कुछ उम्मीद करता हूँ कि घर लेके जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो जल्दी से मैं सबसे पहले मैं सबका इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। सबसे पहले हमारे साथ मेरे राइट में रमेश जी काकीरेला जी है, जो कि तेलंगाना एसोसिएशन से है। साथ में श्रीधर जी हैं मेरे पास में, रफ़ीक जी हैं, सुशील जी हैं, अरुण जी हैं उड़ीसा से, आगे रेड्डी जी हैं अडोनी से, भामरे जी हैं दोंडाईचा से, मेरे लेफ्ट साइड में अरविंद भाई, साथ में बियानी जी, राजू भाई, विनोद भाई, विजय भाई, शांतिलाल जी एंड आप डॉक्टर मध्यान जी BIS से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा हमारे पास समय की कमी है, तो जल्दी जल्दी हम करेंगे। हमारा जो पैनल डिस्कशन का टॉपिक है वो है सॉल्यूशन एंड चैलेंजेस फेस बाय इंडियन कॉटन जिनर्स। तो हमारी जो तकलीफें हैं उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, उस पर हम कुछ मंथन करने की कोशिश करेंगे और कुछ सॉल्यूशन निकल सकता है क्या, वो हम ट्राई करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो मैं पूछना चाहूँगा अरुण भाई से कि अरुण भाई, ये ऐसा लास्ट 2 साल में क्या चेंज हो गया कि अभी तक जो जितने जिनर्स बोलते थे कि पैरिटी नहीं है, बट अब 2 साल पहले तक समझो ठीक चल रही थी चीज़ें, बट अचानक से पिछले 2 साल में जिनिंग में एकदम डिस्पेरिटी आ गई और काफ़ी लॉसेस देखने के लिए मिले हैं। तो अचानक से ये 2 साल में क्या चीज़ें बदली आपके हिसाब से, जिसके कारण से डिस्पेरिटी आई एकदम से? थैंक यू संचित जी। 2 साल में जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है पूरे वर्ल्ड का बहुत जोर से डिस्टर्ब है और आइस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस चल रही है और हमारी जिनिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है और क्रॉप का पोर्शन कम होते जा रहा है, जिसके वजह से हमारे आपसी कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसके लिए हम अपने डिस्पेरिटी खुद करके चल रहे हैं। और मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि हम लोग ज़्यादा प्रेसिंग नंबर करने के चक्कर में पैरिटी को हमेशा ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो वो भी कारण है कि हम नंबर ज़्यादा बनाने के चक्कर में इग्नोर कर रहे हैं पैरिटी को और डिस्पेरिटी में काम कर रहे हैं जी। बिल्कुल ठीक बात है आपकी अरुण जी। और राजू भाई, इस पे आपका क्या व्यू है, क्या कारण है एकदम से डिस्पेरिटी का? पिछले साल जो डिस्पेरिटी है उसका मेन रीजन तो ये है कि पिछले 5 साल में गए साल क्वालिटी का वेरिएशन बिल्कुल नहीं था। कपास की रेंज मात्र 100-200 रुपये फेर में थी। और दूसरा रीजन ये रहा कि किसान रोक के कपास लाया और क्वालिटी अच्छी होने से रुई बहुत इजीली बिकी, क्योंकि अराइवल का प्रेशर बढ़ा ही नहीं पूरे साल, इसलिए डिमांड बनी रही, रुई बेचने में दिक्कत नहीं आई। कई लोगों के जैसे हमारे खंडवा स्टेशन पे पिछले साल से रनिंग ईयर में 2022-23 में धंधे टेढ़े हो गए, बाकी प्रॉफिट नहीं है। उसका कारण ये है कि व्यापार बहुत ईजी स्मूथ व्यापार था। और इस डिस्पैरिटी को दूर करने के लिए सबसे पहले तो जो मेन कारण है, इंडिया की जिनिंग कैपेसिटी है 7 करोड़ गांठ की और क्रॉप होता है 3.25 करोड़ गांठ का। तो सबसे पहले तो अपने को ये क्वालिटी सीड में सुधार करना चाहिए और यील्ड कैसे बढ़े इसके लिए फार्मर को एजुकेट करना चाहिए। गवर्नमेंट की जवाबदारी भी है, साथ में हमारे एसोसिएशन की भी जवाबदारी है, हम सभी की ये जवाबदारी है। एवं इसका सॉल्यूशन ये है, एक तो दूसरा क्या होता है कि पानी वाला कपास आता है। अब अगर पानी वाला कपास है तो उसमें कभी पैरिटी बनती नहीं है। और तीसरी चीज़ ये है कि एक ही सेंटर पे कंपटीशन इतना हो जाता है, एक आदमी उधार कपास लेता है वो 100-150 रुपये ऊँचे देता है, एक आदमी कैश कपास लेता है तो कैश वालों को कपास मिलता नहीं है। इसलिए एक तो जीनर्स की एकता बहुत जरूरी है कि कम से कम पानी का कपास नहीं ले और उधार कपास नहीं ले।
और ये कैश अपन जो पेमेंट देते हैं इसको भी बंद करना है। कुछ लोग कैश देते हैं, कुछ लोग चेक से देते हैं, तो कैश वाले को कम में कपास मिलता है और चेक वाले को ऊपर में कपास मिलता है। इन कारणों से भी डिस्पेरिटी मेंटेन है। और मेरा ऐसा सोचना है कि इस साल जो क्वालिटी का वेरिएशन है, इसके कारण इस साल पेरिटी रहेगी या डिस्पेरिटी तो एटलीस्ट नहीं रहेगी, ऐसा मेरा ध्यान है। थैंक यू। बहुत बढ़िया राजू भैया, और आपकी बात बहुत सही लगी कि यील्ड एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज है। और मैं ये समझता हूँ, मेरा ऐसा अनुभव है कि यील्ड जो है ये कैंसर की तरह हमारे पूरी इंडस्ट्री को ख़त्म कर रही है। जो यील्ड की तकलीफ है ये, चाहे वो जिनर हो, चाहे वो स्पिनर हो, या चाहे वो किसान हो, हर रोग की दवा मेरे हिसाब से अगर जब तक यील्ड नहीं, अगर हम यील्ड बढ़ाते हैं तो हर रोग की दवा का काम करेगी। यील्ड बढ़ेगी तो किसान का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसका कम होगा, वो फायदे में आएगा, 2 पैसा वो भी कमाएगा, खुश रहेगा। यील्ड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जिनर को माल हिसाब से मिलेगा, पैरिटी रहेगी, फायदा जिनर के लिए भी है। सेम चीज़ जो है वो स्पिनर के लिए भी है कि अगर स्पिनर के लिए ज़्यादा रुई मार्केट में अवेलेबल होगी तो उसको रुई जो है वो हिसाब से मिलेगी और चीज़ें ठीक ठाक चलेगी। तो बहुत अच्छी तरीके से काफ़ी अच्छे पॉइंट सामने आए हैं। और इसको मैं आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा, जो कि है कि अभी इन दिनों आजकल ट्रैश और मॉइस्चर के क्लेम्स बहुत देखने के लिए मिले हैं स्पिनिंग मिल्स की तरफ से। तो वो उस जो तकलीफ है आजकल जनरली ये देखने के लिए मिलता है कि हर स्पिनिंग मिल में मॉइस्चर और ट्रैश के काफ़ी क्वालिटी क्लेम्स आते हैं, काफ़ी कटिंग आती है। तो उसको हम एज अ जिनर उसको हम कैसे सुधार किया जा सकता है उसको, तो इसके लिए मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा मनोज जी से। मनोज जी हिंगन घाट, अच्छा नहीं है, निकल गए। तो रफीक भाई आप कुछ इस पर अगर कहना चाहेंगे कि इसको कैसे सुधारा जाए। आए हुए सभी कॉटन एसोसिएशन के मेहमानों को मेरी तरफ से नमस्कार। देखिए, पहली बात तो कपास जो जिनिंग में आता है, पहले तो मॉइस्चर पानी डाला हुआ कपास अगर अपन नहीं खरीदे करते हैं तो सबसे पहले कंट्रोल उसको किया जाता है। दूसरी बात, जो माल हमारा छोटा सा एसोसिएशन है आसिफाबाद का, हम जो माल स्पिनर्स को बेचते हैं वो स्पॉट पासिंग पे और स्पॉट वेमेंट से ही बेचते हैं। जैसा मार्केट कम ज़्यादा होता है तो वहाँ जाने के बाद थोड़ा सा मॉइस्चर ज़्यादा बताते थे, और किसी के पास एक टाइप के मशीन तो है नहीं कि सबका कैलकुलेशन एक जैसा है। किसी के पास कम आता है, किसी के मिल में ज़्यादा मॉइस्चर बताते हैं। हम एक ही रिक्वेस्ट करते हैं जिनर से, आप अपना माल अपने घर पे उसको बता के स्पॉट रेट से और स्पॉट कंडीशन से ही बेचो, तो आपको वहाँ जाने के बाद ये तकलीफ नहीं होगी। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। बिल्कुल, आपने एकदम सही बात कही रफीक भाई। छोटी सी बात साहब, और एक छोटी सी बात बताता हूँ। जैसा कि आप सीसीआई से माल परचेस करते हो, पूरा पेमेंट देते हो, पूरा जीएसटी भरते हो, स्पॉट कांटा करके पैसे देते हो, हमारा माल ले जाने के बाद ये सब चीज़ें क्यों करते हो? या माल वेट शॉर्टेज कार्ड देते हो या तो मॉइस्चर कार्ड देते हो, ये सब हमारे लिए क्यों लागू होता है? ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे जिनर्स की अभी। तो रफीक भाई के हिसाब से एक स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। जो मॉइस्चर की मशीन है वो आप 5 मशीन लीजिए और 5 मशीन एक ही बेल में डालिए, एक ही जगह से डालिए, हर मशीन अलग अलग रीडिंग बताएगी। तो उसका एक स्टैंडर्डाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। मैं ऐसी सीआईए से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो मशीन्स हैं उनका अप्रूवल किया जाए मशीन मैन्युफैक्चरर्स का, और उसकी एक फिक्स उसको करके कि भाई ये नीडल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा जाए कि जो टेस्टिंग होगी वो 12 इंच की नीडल से होगी या 15 इंच की नीडल से होगी, और जो सीएआई या बीआईएस अप्रूव्ड मॉइस्चर मीटर्स हैं उन्हीं की एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो मानी जाएगी। और उसको चेक करने की भी मेथोडोलॉजी होनी चाहिए कि कौन सी बेल में कितना चेक किया जाए। तो थोड़ी सी इस पर पारदर्शिता अगर आए, अगर हम सब मिलके कुछ करें तो इसके ऊपर आई थिंक काफ़ी अच्छा हमें रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। विजय जी, इस पर और कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? हम लोगों को सब मिलकर एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाना चाहिए या स्टैंडर्ड सिस्टम्स बनाना चाहिए, वी शुड इंक्लूड इन दैट पैनल जिनर्स एज वेल एज द एसोसिएशन एज वेल एज द स्पिनर्स। नहीं तो एवरीबडी हैज देयर ओन से, सो इट इज बेटर दैट सीएआई टेक्स इट्स इनिशिएटिव एंड फिक्स अप द लैब, द वे टू मेक द ट्रैश कलेक्शंस, बिकॉज हर स्पिनर का अपना अपना तरीका से ट्रैश निकालने का इरादा है। एंड द मॉइस्चर मीटर शुड बी अप्रूव्ड बाय अ कॉमन platform like a CI or somebody else like that, then the matter will be more clear and we'll have uniform results. Great. सर, एक और मैं पॉइंट यहाँ पर रखना चाहूँगा कि पिछले साल क्वालिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, जिसके कारण से
जो कंडीशन है ट्रैश की वो 3.5 से हटा करके 3% कर दी गई। लेकिन मैं ये आज इस प्लेटफॉर्म से सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि उसको बेंचमार्क नहीं बनाते हुए इंडियन कॉटन कई सालों से 3.5% ट्रैश पे बेची जा रही है, लेकिन पिछले साल को बेंचमार्क बना के हमने 3% कर दिया है, जबकि उसको हमें फिर से 3.5% करना चाहिए ताकि हमारे क्लेम्स कम आए। और ऑलरेडी हम एक तरफ बोलते हैं कि इंडियन कॉटन सस्ती बिकती है जी, इंडियन कॉटन 500 ऑन पे बिकनी चाहिए। क्यों 500 ऑन पे बिकनी चाहिए? क्योंकि उसमें कंटामिनेशन आता है, हैंड पिक्ड है। तो जब हैंड पिक्ड है, कंटामिनेशन आता है, तो ट्रैश तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉमन प्रॉब्लम है, उसको बेस नहीं बनाते हुए मुझे ऐसा लगता है कि हम सबने मिल करके एसोसिएशन लेवल पे 3.5% ट्रैश को कंपलसरी करना चाहिए। आप रफीक भाई ट्रैश के लिए कुछ कह रहे हैं, बोलिए। भाई साहब, जैसा कि 3% सब मिल वालों का अभी जो धारा चल रही है, सीसीआई ने उल्टा उसको 3% जाके 2.5% कर दिया है, और ये सीसीआई जब परचेस करेगा तो ये कटिंग और ज्यादा ही आएंगी हम लोगों को, और तकलीफ बढ़ने वाली है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देके सीसीआई वालों को भी, हमारे प्रतिनिधि से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि उसको 3-3.5% के लिए करने के लिए आग्रह किया रहे। बिल्कुल ठीक बात है सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ूंगा, और अगला क्वेश्चन है बियानी जी से होगा। बियानी जी, आप इतने सीनियर और इतना आपका एक्सपीरियंस है इस जिनिंग इंडस्ट्री में, तो आपके हिसाब से, ऐसा भी राजू भाई ने भी बात बोली कि कैश डीलिंग जो है, किसानों को जो कैश पेमेंट की जो समस्या है जिसके कारण से अननेसेसरी कंप्लायंसेस इश्यूज आते हैं, उसको लेकर के यहाँ कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कैश डीलिंग्स किस तरीके से कम की जाए आपके हिसाब से, उसको कैसे सुधार किया जा सकता है उसके अंदर? कैश परचेसिंग या नगद व्यवहार जो है उसके अंदर बहुत जोखिम भरा है। ये सबको विदित है कि भाई सीसीआई जब चलती है तो काश्तकार आरटीजीएस का पेमेंट एक्सेप्ट करता है, तो अपने पास से क्यों नहीं करेंगे वो? अपन अगर सब एकजुट होके अगर करते हैं, सब जने डिसीजन लेते हैं कि भाई अपन ने कैश पेमेंट नहीं करना है, तो ये पॉसिबल हो सकता है। बस अपने विश्वास की कमी है। डीमोनेटाइजेशन के समय भी अपन ने सारा व्यवहार आरटीजीएस से किया था, और आज अगर अपन निश्चित कंपटीशन के अंदर बाजू वाला अगर नकदी दे रहा है तो मैं नकदी क्यों नहीं दूँ, उधर व्यापार जा रहा है बोल के मुझे नकदी देना पड़ रहा है। एक्चुअली नकदी व्यापार करने में बहुत जोखम है, लाने ले जाने की जोखम है, संभालने की जोखम है, वितरण की जोखम है। फिर आईटी के स्क्रूटनी आती है, जब भी दिक्कतें आती है उसमें वो इलीगल है। तो एसोसिएशन लेवल पे अगर ये डिसीजन लिया जाता है कि सारे जनों ने आरटीजीएस से ही पेमेंट करना है, तो मुझे लगता है कि वो बहुत हार्ड नहीं होगा। उसके लिए एसोसिएशन लेवल पे उसको डिसीजन लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है बियानी जी आपकी। और कैश ट्रांजैक्शन आजकल वैसे भी सुविधा इतनी बढ़ गई है कि आज हर फार्मर के पास अकाउंट है, यूपीआई पेमेंट है। आज एक अगर आप सब्जी भी 2 रुपए की भी अगर आप चॉकलेट भी खरीदने आते हो बाजार में, तो आप उसको यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ तो हम लाखों की पेमेंट कर रहे हैं, सब्जी वाला भी लेता है आज यूपीआई से पेमेंट। तो बिल्कुल हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ अवेलेबल है, सिर्फ उसको यूज़ करने की देरी है, जो उससे यूज़ हमें बिल्कुल करना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ूंगा। एक आजकल तकलीफ देखने के लिए मिली है जो है एक्यूरेसी ऑफ डेटा। लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं कि मैं कंजम्पशन की बात नहीं करूंगा क्योंकि कंजम्पशन हमारा काम नहीं है, हम जिनर हैं। तो जिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्शन के डेटा की अगर मैं बात करूं, या और किसी मतलब हमारे जिनिंग से रिलेटेड डेटा की मैं बात करूं, तो उसको लेकर के काफ़ी चैलेंजेस आते हैं। लोग बोलते हैं जी जिनर हमें डेटा नहीं देते हैं। सीआईआई ने कई एजेंसीज अपॉइंट की बीच में कि जो डेटा मांगती है, तो उसको कैसे एड्रेस किया जाए, उसको क्या किया जाए कि जो डेटा कलेक्शन का जो इशू है उसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो विजय जी, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है और क्या आपको लगता है इसका सॉल्यूशन हो सकता है? सर, पहली बात, ये जो डाटा कलेक्शन सिस्टम है पूरा गलत सिस्टम पर चल रहे हैं हम लोग। जो जिन्नर्स हम जो डाटा दे रहे हैं, दिस ओनली अ पोस्टमार्टम, दिस विल बी नॉट यूजफुल फॉर द कमिंग सीजन। अभी हमारे पास सीए वाले हैं, हमारे पास वी हैव सीसीआई पीपल सिटिंग हियर, and every state has a revenue department where now all farmers are getting themselves insurance for the crop. Then you have agriculture marketing committees there. इन सब लोगों का सिर्फ सोइंग सीजन होने से फ्रॉम अगस्त सितंबर, इफ दे डू अ गुड सर्वे,
They can get even the photos, kitna acre sowing hua hai bol ke. And that can be clubbed together and given to CCI. CCI is the right committee who can give us the exact data before the season comes. ये सब हम जिन्नर्स क्या कर सकते हैं, 30-40 किलोमीटर हमारा फैक्ट्री का रेडियस का सर्वे कर देंगे, क्योंकि हमारे पास कपास आता है कि नहीं वो देखने के लिए हम तो कर ही रहे हैं, बट दिस एक्यूरेसी नहीं आएगा. सो आई एडवाइज CI to come, make a committee there, let them talk to the government and let the data come from the government. Accuracy तो government को देना है ना. अभी कोई last year 350 बोला, 310 आया, बाद में बोलता है एक farmer रुक गया. Ultimately loss तो हो गया सबका. So let's not do like that. Let's start from this association at least to rightly give the at least figures तो correct करेंगे ना. बिल्कुल ठीक बात है विजय जी. इसमें एक पहलू और है कि आप जो कह रहे हैं कपास का पॉइंट, तो आपका सजेशन अच्छा है, लेकिन तकलीफ एक और आती है कि हम कपास तो चलो ठीक है, हमें बाहर से डेटा कलेक्ट करना है, लेकिन जिनिंग का, प्रेसिंग का डेटा तो हमारे घर का है, वो हमें देने में कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए. तो वो उसको कैसे सुधारा जाए, उसको कैसे हम इम्प्रूव किया जाए? So definitely we all need to give the figures and facts of ginning and pressing, but the figures and facts comes after the season. So हमको जो डाटा बिफोर सीजन जो कैलकुलेशन चाहिए, ये बेस बनाएंगे, उसका तो वी हैव टू फॉलो द अदर प्रोसीजर्स. वी हैव टू गेट आवरसेल्फ रजिस्टर्ड एंड गिव द करेक्ट डाटा. We are not against that, but we are against that putting a ginner, ये estimate निकालो, ये estimate निकालो. That is not our duty. इसमें सर मैं थोड़ा सा अगर आप लाइट डालना चाहे विनोद. जो TSR डाटा भी चालू किया है उसको जिनर के लिए कंपलसरी कर दो. जितना बिलिंग हो रहा है उतना ही तो डाटा अपलोड करना है ना. उसमें दिक्कत कहाँ है? जो जीरो का जिसको करना है वो कर लेगा. अरविंद भाई कुछ? अभी जैसा जीनर्स का जो डाटा है, सबके पहले तो अपने आज अपने CI ने जो BIS के बारे में जो अपने को, अगर अपन BIS में अगर जाते तो अपने को पूरा डाटा अपन उसमें रख सकते थे. अपना पूरा फैक्ट्री का नाम और जो भी कोड नंबर जो भी आना है, अगर वो करते थे तो अगर अपना पूरा डाटा ही अपने को मिल जाता था. दूसरी बात, अपन हर महीने RCM भरते हैं, कितना परचेस होता है वो तो सबको पता है. GST लेवल पर भी अपन निकाल सकते हैं. बाद में जीनस का तो डाटा मिल जाता है, पर एक तरफ जीनस का मिल जाता है पर कंजम्पशन का डाटा अपने को नहीं मिलता है. ये कंजम्पशन का डाटा जब तक मिलेगा नहीं, जब तक कि अपने को अपना स्टॉक क्या है क्या नहीं इंडिया का वो समझ में नहीं आता है. जीनस का डाटा तो RCM के लिए इसमें समझ में आ जाएगा. और मैं BIS अगर लागू होता है तो ये जीनस को बहुत फायदे का रहेगा, ऐसा मुझे लगता है. और इसमें सब बातों का सोल्यूशन निकल जाएगा. इसमें कि एक दो कॉस्ट कम अगर हो गए तो ये BIS सबसे अच्छा रहेगा, ऐसा मुझे लगता है. बिल्कुल सही बोला आपने अरविंद भाई. तो कुल मिलाकर के हमारे पास सॉल्यूशंस अवेलेबल है मार्केट में. मतलब सिस्टम ऑलरेडी है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने की देरी हमारी तरफ से हो रही है. अगर उसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो बिल्कुल डेटा जो है कम से कम हमें प्रोडक्शन का तो बिल्कुल इमीडिएटली मिल सकता है. और जिस हिसाब से मेहनत चल रही है तो प्रोडक्शन मतलब कॉटन कपास के प्रोडक्शन का भी हमें डेटा हमें आगे जा करके धीरे धीरे मिलने की उम्मीद है. कि जिस हिसाब से अब लोगों को दर्द समझ में आ रहा है तो बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि आगे इस पर भी इम्प्रूवमेंट होगा. आगे बढ़ते हुए मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा शांतिलाल जी से. शांतिलाल जी, आपके हिसाब से जो हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है खंडी की, जो हम जो जोड़ते हैं जनरली, उसमें आपको क्या लगता है हम कैसे उसमें बचत कर सकते हैं? अगर किस तरीके से हम इनोवेशन यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि पिछले 10-12 साल में मुझे नहीं ध्यान कि जिनिंग में सिर्फ आज तक एक ही इनोवेशन देखने के लिए मिला है जो मॉडर्नाइजेशन हुआ है. पहले 300 लेबर लगती थी जिनिंग चलाने के लिए, 24 खाते की या 36 खाते की. आज 12 लेबर मिलकर 36 या 48 खाते की जिनिंग चलाते हैं. बाकी इसके अलावा मेजर मॉडर्नाइजेशन जो मतलब हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है. तो आपको क्या लगता है और कहाँ पर इनोवेशन का हम उपयोग करके क्या तकलीफ ऐसी आपको लगती है कि जिसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है अच्छी टेक्नोलॉजी से या अच्छे उससे? जिनर के पास में दो मेजर खर्चे होते हैं सर. एक होगा उसका पावर बिल, दूसरा होगा उसका लेबर कॉस्ट. तो आपने बोला जैसा लेबर कॉस्ट का हम लोगों ने जो TMC के जो भी किए हैं उससे अपना लेबर कॉस्ट कम हुआ है. अब लेबर जो भी अपन ने वैल्यू एडिशन में जो TMC का किया है उसमें हमारे सिर्फ एक लोडिंग पॉइंट्स पे हम पीछे रह गए, जैसे बेल्स लोडिंग का या कॉटन सीज लोडिंग का. इसका हमसे जो टेक्नोलॉजी से अभी फोरक्लिप से जो भी हुआ है उससे लोडिंग पे तो काफ़ी लोगों पे थोड़ा बहुत यानी लोडिंग का जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो सकता है.
कॉटन सीड्स का सोल्यूशंस जो है वो थोड़ा अभी तक मेरे हिसाब से अपन इसमें कुछ अभी नहीं, पर ये जरूर है कि बेल्स का लोडिंग जो भी है वो अपन फोरक्लिप से करें तो हमारा कॉस्ट ऑफ लोडिंग का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और अभी जो अपन पूछे हमारा पावर बिल का जो है, जो अभी हर जगह पर हर स्टेट में पावर्स का टैरिफ्स बढ़ते जा रहा है, तो उसके हिसाब से मैं अभी भी बोलूँगा सर कि जिनर को रूफटॉप सोलर का सोचना ही चाहिए, और उसको रूफटॉप सोलर करने से उसका जो नियंत्रण टेक्नोलॉजी जो है उससे उसका पावर कॉस्ट में भी वो कंट्रोल कर पाएगा। तो अगर रूफटॉप सोलर और आगे का जो डिजिटलाइजेशन थोड़ा बहुत जो भी ऑफिस ऑटोमेशन में वगैरह भी है, तो ये सब चीज़ों से हम अभी भी बहुत कुछ नहीं तो भी एटलीस्ट वी कैन ब्रिंग इट अनदर बाय अनदर 20 to 25% उसमें हम लोग जोर कर सकते हैं सर। बहुत अच्छा आपने सजेशन दिया शांतिलाल जी। वाकई जो जहाँ पर फोकलिफ्ट कुछ लोग यूज़ कर रहे हैं लोडिंग के लिए, जो जहाँ पर नहीं हो रहा है वहाँ करीब करीब 25 रुपये से लगा करके 35 रुपये तक की वराई हम लोग दे रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट बनता है। तो बिल्कुल फोकलिफ्ट के अलावा भी अगर यहाँ पर अगर कोई टेक्नोलॉजी बजाज से अगर कोई है तो उनको भी मैं कहना चाहूँगा, अगर आप लोडिंग अनलोडिंग का कोई सोल्यूशन निकालें जिसमें 100% स्टैकिंग हो जाए, तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो मार्केट में नहीं है और उसकी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जैसा आपने सोलर का बताया, बिल्कुल सही बात है, सोलर में अच्छी स्कीम काफ़ी स्टेट्स में है, नेट मीटरिंग स्कीम है, तो बहुत अच्छी एक काफ़ी जिनर्स ने इनफैक्ट इंस्टॉल भी किया हुआ है और अच्छा वो उसमें हम काफ़ी एक सेविंग हो सकती है हमारी। रफीक भाई और कुछ इसमें पॉइंट आप सीड के लिए जो इशू आ रहा है उसके लिए कुछ अगर आप ऐड करना चाहेंगे? रमेश जी कुछ ऐड करना चाहिए। ये सोलार का तो हम लगा लिया है 50%, जब कितना कैपेसिटी है उतना 50% लगाते हैं, 5 साल में हमारे निकल जाएगा। आफ्टर 5 years पावर बिल का हमारे का जरूरत नहीं है, मिनिमम चालू रहता है। ये सोलार सब लोग सोच को जिनिंग वाला 6 महीने 7 महीने चलाने वाला जो कैपेसिटी है उससे 50% लगाता है, आराम से 5 साल में निकल जाता है। थैंक यू। मैं बोलूं एक सेकंड। जैसा कपास पैदा करता है किसान, उसको हमारे तेलंगाना स्टेट के अंदर 100% करंट के ऊपर सब्सिडी दिया गया है, और हम कपास लेके जिनिंग करके जब लोगों को दे रहे हैं, उसका कपास हम खरीदते हैं, तो हमारे पे जो करंट के बिल के जो चार्जेस बेहिसाब जो पेनाल्टीज लगे हैं, करंट के बिल जो 8-9 रुपए अभी यूनिट का खर्चा है, उसमें अगर हमारे प्रतिनिधियों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी इलेक्ट्रिसिटी को हमारे 50% उसमें सब्सिडी अगर इंडस्ट्रीज को दिलाने की कोशिश करते हैं, तो बाकी तो कोई खर्चा कम होना नहीं है। लेबर कास्ट तो रोज बढ़ रहा है, क्योंकि जरूरतें बढ़ रही है तो लेबर कास्ट बढ़ना है, खर्चा कम नहीं होगा। तो सरकार से हमको 50% अगर करंट के ऊपर सब्सिडी दिलाते हैं, हम एक छोटी रिक्वेस्ट करते हैं हमारे प्रतिनिधियों को कि सरकार के सामने ये पॉइंट रखिए, तो इंडस्ट्रीज अच्छी तरह से चलेगी और बचेगी, तो इंडस्ट्रीज बंद हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है सर रफीक भाई, और अच्छा आपने वो बताया इसके अंदर। तो पैनल डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा। आजकल जिस हिसाब से अभी हमारे इसके पहले 2 पैनल डिस्कशन में मालूम पड़ा कि इंडियन कॉटन की वैल्यू जो है वो कम आकी जाती है, हमेशा एक डिस्काउंट पे बिकती है दुनिया से कंपैरिजन में। लोगों के दिमाग में एक धारणा बनी हुई कि इंडियन कॉटन 500 ऑन होगी तो ली जाएगी, ब्राजील से डिफरेंस इतना होना चाहिए, अमेरिका से डिस्काउंट इतना होना चाहिए। तो इस धारणा को कैसे चेंज किया जाए, किस तरीके से हम अपनी कॉटन की वैल्यू बढ़ाएं, उसके ऊपर एक हमें बहुत विचार विमर्श करने की जरूरत है। तो इस पे मैं आपका व्यू जानना चाहूँगा अरुण भाई कि इसको कैसे हम इसको इंडियन कॉटन की अपनी वैल्यू बढ़ाई जाए। जी, जैसे कि इंडियन कॉटन को बहुत ज़्यादा कंटामिनेटेड कॉटन माना जाता है, हमको हर जिनिंग स्तर पे अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्लीननेस जिनिंग में ज़्यादा लानी पड़ेगी। कपास खरीदते समय हमको अलर्ट रहना पड़ेगा। जो फार्मर लूज कपास लेके आ रहा है और लूज कपास का अराइवल को प्रमोट करना पड़ेगा। प्लास्टिक फार्मर को अवेयरनेस लाना पड़ेगा कि प्लास्टिक अगर नहीं लाएं बोल के। छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा मैं। हम लोग एक नया एरिया डेवलप हो रहा था ओडिशा में एक नया एरिया डेवलप हो रहा था। उसमें हमने 3 साल का लिया हमने कि वहाँ को किसी ने भी सिंगल आदमी ने एक बोरा यूज़ नहीं किया। सारा कॉटन जो भी आता है आज भी लूज में आता है। तो वहाँ का कॉटन अभी सीसीआई का जो प्रोक्योरमेंट का साल था उसमें से 2 लॉट कॉटन उसमें से कस्तूरी कॉटन बना था उस लॉट से। मतलब फार्मर को हमने अवेयरनेस किया था, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व किया था हमने, सरकारी डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर वाले भी साथ में इन्वॉल्व थे। फार्मर को ट्रेनिंग दिया गया था, फार्मर को फील्ड विजिट करवाए थे। हमारे फैक्ट्री में हर साल कम से कम भी 1000 फार्मर आते हैं विजिट के लिए। हम उनको बताते हैं कि सर कंटामिनेशन क्या प्रॉब्लम कर रही है और कैसा इसको हम रोक सकते हैं। पाम्पलेट्स बना के हम गाँव में देहात में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि कंटामिनेशन को कैसा रोका जाए।
तो ऐसा अगर सबका प्रयास रहे और एक जॉइंट एफर्ट्स हम लें तो हमारा इंडियन कॉटन को हम जरूर पैकिंग में इंप्रूवमेंट लाके इमेज को चेंज कर सकते हैं हम। बिल्कुल अच्छा सजेशन है सर आपका। एजुकेशन की जरूरत है, फार्मर को भी एजुकेट करने की जरूरत है। साथ में हमारे पास पोस्ट क्लीनिंग इक्विपमेंट लगा हुआ है, प्री क्लीनिंग इक्विपमेंट लगा हुआ है। हम लोग कई बार बाईपास कर देते हैं उसको, तो एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करके अगर क्वालिटी मेंटेन किया जाए तो इंडियन कॉटन को जरूर हम फिर दोबारा से उसका नाम अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है सर आपकी, बहुत अच्छा आपका पॉइंट है अरुण जी। हमारे पास क्लीनर्स लगे होते हैं लेकिन हम बाईपास कर देते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। श्रीधर जी, इस पे आप कुछ पॉइंट ऐड करना चाहेंगे कि किस तरीके से और हम हमारे जो क्वालिटी है उसको सुधारा जा सके? So quality aspects, we have to maintain the best. So this is about the quality. The first point we have to check it out the trash content. We have to collect it from the loose end. But most of the cases in the Telangana, most is coming as a loose cotton sale. But in some portion of the Warangal region, still they are using gunny bags and all, the HDPE pipe. So because of that, the trash is going to be added in this cotton. That makes to the problem with the ginner as well as the spinner side. So try to inculcate, try to educate the farmer to not to contain in the HDPE bag. Loose cotton is very important for this. And apart from this, but not related to the quality, but one thing I would like to add to the point for the data collection. So in Telangana Cotton Association, we are maintaining 95% of the accurate data by asking or by calling each and the next is I would like to mention we are calling almost 350 ginners to get the data correct. Every month one of the representative from Telangana calling ginners and get the data out of how many bills the production. So thereby the accuracy. And you know, everybody knows the cotton business is a friendly, jealous business. Nobody wants to explain how many bales they produce. Nothing is there hiding, nothing is there hiding. So it's better to open out and what are the exact production that will leads to the shortages. Thank you. ग्रेट। रमेश जी, कुछ इस पे आप कुछ टिप्पणी? सब इसका बारे में आपको 2 मिनट बात करता हूँ। हम तो कॉटन कमीशन एजेंट है, ट्रेडर है। 2008 में जिनिंग करना, स्पिनिंग करने के लिए गया था, बॉम्बे मीटिंग ट्राइडेंट में गया था। हमारा गुरुजी है सुरेश कोटक जी, उन बात कर रहा था, मैं सुने था व्हाट इज, उन बोल रहे था सुने क्या है इंडियन कॉटन कितना वैल्यू कम है। हम चाइना भी गया था, इंडियन पैकिंग देख को अरे इतना गलीज है इंडियन कॉटन बोलता था, हमारा आंख में पानी आया, अरे ये क्या है, हमारा हालत इतना कैसे खराब हो गया। हम समझ गए सुरेश कोटक जी स्पीच सुनने के बाद मैं एक वादा कर लिया, 2008 में मैं जिनिंग मिल डालने के टाइम में हमारा क्वालिटी बढ़िया करना है। हम लिंटर क्लीनर डाले, काउडी क्लीनर डाले, 1 साल 20 लाख रुपए कचरा बाहर फेंक दिया, सामने वाला मिल वाला वैसे बेच रहे, हमारे कैंडी 200 रुपए नुकसान आया। सेकंड ईयर में वैसा करे, फिर नुकसान आया, क्या करना समझ में नहीं आया। फिर बाद में एक बार बंद कर दिया। हमारा दोस्त एक आया, भैया आप 1-2 दिन में क्वालिटी तुम अच्छा करते, कौन देखता नहीं आपको, अब थोड़ा इसको मेहनत करना पड़ेगा। जब से आज तक मैं कभी भी बगैर हमारा नाव यूनिट में लिंटर क्लीनर, काउडी क्लीनर बाईपास करता नहीं है। उसमें क्या हो गया, 3 साल के बाद में कभी मंदे में बेल पहले बिकता कावेरी ग्रुप का, पर कर रेट में भी 300 रुपए में मार्केट से ज्यादा ले। तुम किसको पूछ को भाई, तुम मार्केट से 300 रुपए ज्यादा हमारा मिल में कभी भी आ सकते, कभी भी देख सकते। लिंटर क्लीनर, काउडी क्लीनर कभी भी डालते रहता है। इसमें क्या हम क्वालिटी देंगे, हमारा कैसे भी रेट देता है, अगर इमीडिएट नहीं मिलता हमारा का। इसका बारे में 2008 में सुरेश कोटक जी बात सुनने के बाद हम इंटरनेशनल और इंडिया में हमारा नाम बढ़कर अभी 10 जिनी मिला है, हम एक्सपोर्ट रहे, हमारा नाम अभी भी अच्छा है। क्वालिटी बनने वाला कभी भी जिंदगी में अच्छा रहता है। थैंक यू। बहुत अच्छी आपने बात बोली रमेश जी, और दूसरे हमारे जीनर्स बंधुओं को सीखना चाहिए और इनकी जो सक्सेस स्टोरी है बाकी उससे हमें लर्निंग मिल सकती है कि ऐसा नहीं है कि प्रीमियम नहीं मिलता। अगर हम अच्छी क्वालिटी बनाएं तो मार्केट में उस चीज़ का भाव देने वाले लोग बिल्कुल मौजूद है, तो प्रीमियम बिल्कुल हमें मिलेगा। थैंक यू रमेश जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा। आजकल वोलेटिलिटी की बहुत बड़ी तकलीफ है, तेजी मंदी हर चीज़ में, चाहे वो रुई हो चाहे वो सीड हो, काफ़ी तेजी मंदी देखने के लिए मिलती है। कई जीनर्स हमने देखा है डे टू डे के धंधे में नुकसान नहीं करते, लेकिन स्टॉक में
हाथ जला लेते हैं अपना। तो उसको हम उस जो तेजी मंदी को कैसे कवर किया जाए, उसके ऊपर मैं विनोद भाई आपकी क्या प्रतिक्रिया एक बार आप बताएं, या राजू भाई जैसा आप। जो संचित भैया ने बताया कि तेजी मंदी, एक्चुअल क्या हो गया कि हम लोग अभी सट्टे पे बहुत डिपेंड हो गए। हर आदमी वायदा तेज है, किसी को बेचना नहीं है, वायदा मंदा किसी को लेना नहीं है। एक तो अगर व्यापार करना रेगुलर तो स्टेबल माइंड से, बैलेंस माइंड से व्यापार करें, वायदे पे अपनी डिपेंडेंसी को कम करें। हमारे तरीके लोग 4 लोगों का ग्रुप बना लेते हैं, एक वायदे को अननेसेसरी बड़ा तेज कर देते हैं, लोग सब तेजी में आ जाते हैं। एक तरीका नीचा कर देते लोग मंदी में, उसको नहीं, बैलेंसिंग करो। और रिस्क मैनेजमेंट, एक आदमी को रिस्क मैनेजमेंट अपना करना चाहिए। इन कोई कारण से अपने पास अगर हाथ में माल रह गया, उसको एमसीएस पे या एचडीएस पे हेज करें, जिससे कि आपका जोखिम कम हो। जोखिम प्रबंधन सीखना बहुत जरूरी है। अभी जीनर जो है वो एचडीएस या एमसीएस को प्योर सट्टे के रूप में ले रहा है, उसको सट्टे के रूप में नहीं देके एक बहुत बड़ा हेजर प्लेटफॉर्म है। अभी तो एमसीएस में वॉल्यूम कम हो गया है, नहीं तो अभी एनसीडीएस में 25 गांठ का वॉल्यूम आ गया है, तो एनसीडीएस में भी अपन काम कर सकते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान देवें और सट्टे पे डिपेंडेंसी कम करें। बाजार तेज है तो बेचना ही नहीं है, बाजार मद्दा है तो लेना ही नहीं है। इन चीज़ों से दूर रहे, स्टेबल माइंड में रोज लेवे रोज बेचे, ऐसा मेरा ध्यान है। थैंक यू। बिल्कुल, आपने अच्छा टूल हमारे पास, फिर मैं कहूँगा एमसीएक्स है मार्केट में, उसको सही तरीके से उपयोग करना हमें आना चाहिए। और अच्छा टूल अगर सही ढंग से उपयोग किया जाए तो बिल्कुल उससे हमारी जो रिस्क है, फ्लक्चुएशन जो है, वोलेटिलिटी का रिस्क है, वो बिल्कुल हम कवर कर सकते हैं। अरविंद भाई आप क्या कहना चाहेंगे उसके ऊपर? सीड को लेकर के भी हम काफ़ी तेजी मंदी का शिकार होते हैं, उसको भी क्या कुछ आपके हिसाब से इसमें सुधार हुआ जा सकता है अपने? सबसे पहले तो अपन ने जो सीड है, इन्हें जो अपन कपास जो ले रहे हैं वो गीला नहीं लेंगे तो सीड में जो डैमेज होने का परसेंटेज कम हो जाएगा। और ये जो सीड में भी जो अभी इन्हें एक लेवल पे आने के बाद में इसमें जो तेजी मंदी होती है, अभी गत 4 दिनों में 400 रुपये बढ़ गए, फिर वो लोग सब तेजी में आके फिर माल बेचना रोक देते, फिर वो बाद में नीचे आएगी वापस सेल करते। तो मुझे ऐसा लगता है कि सीड में तो जितना एक लेवल के बाद में इसमें डिमांड कम हो जाती है और उसके ऑप्शंस कैटल फीड के बहुत ऑप्शंस खड़े हो गए, तो एक लेवल के ऊपर सीड जाता नहीं है। तो हर आदमी ने अपने भाव में, लिमिटेड भाव में रोज के रोज बेचते जाना चाहिए और ज़्यादा फॉरवर्ड स्टॉक रखना नहीं चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया और आपके अनुभवों का मैं आशा करता हूं कि जो हमारी ऑडियंस है वो अरविंद भाई के जो अनुभव है उसका उपयोग लेंगी। कपास में जैसा आपने बताया पानी की बहुत बड़ी समस्या है, मॉइस्चर की बहुत बड़ी समस्या है, उसको कैसे उसका हल निकाला जाए? भामरे जी, इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि जो कपास में जो पानी आता है उसको कैसे हम, क्या सॉल्यूशन हो सकता है, कैसे उसका रास्ता निकाला जाए? मेरे हिसाब से पूरे महाराष्ट्र में 50% कपास की जगह पे, मैं महाराष्ट्र से हूं तो इसलिए महाराष्ट्र की बात करता हूं, कि पेटी मास्टर जो है वो काश्तकार से कपास लेता है कैश में, और कैश में कपास लेने के बाद वो माउचर यानी कि पानी मार के ही वो लाता है। तो सबसे पहले अपने कपास ट्रेड में काश्तकार को भी अपने को ट्रेड करना पड़ेगा। अगर अपने को कंटामिनेशन फ्री कपास चाहिए तो काश्तकार को भी ट्रेनिंग देना पड़ेगा कि उसने कपास चुनने के टाइम को ही उसमें से कैसा कंटामिनेशन कम आएगा। और आपके बहुत सवाल मैंने संजीत जी सुने, बहुत से जिनरों ने भी उसके जवाब दिए। मेरा एक ही कहना है कि पप्पू भैया और अतुल जी, बहुत से जिनर मुझे यहाँ पे मिले और बहुत जिनरों की एक ही समस्या है कि आरसीएम के बारे में अगर आप कुछ सवाल उठाएंगे तो आरसीएम के, आज अपना कॉटन एसोसिएशन इंडिया का ये मीट है, तो हमारे जिनर भाइयों की तरफ से आरसीएम के बारे में जो हमारा पैसा अटक जाता है वो जल्दी से जल्दी, हमारा बिना ब्याज का पैसा वो 1 महीना तक मिलता नहीं, तो आरसीएम अगर उसमें आप सहयोग करेंगे तो उससे भी जिनर को बेनिफिट मिलेगा। रमेश जी ने सोलर के बारे में बता दिया, सोलर लगाएंगे तो भी जिनर को, और इलेक्ट्रिसिटी से भी जिनर को बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो मैं ये मीट में यही कहना चाहता हूँ सबसे ज्यादा कि आरसीएम के ऊपर वो कैसा हटे इसके लिए। और जो पप्पू भैया ने बात कही कि बीसीआई जो है, बीएसआई, उसमें वो जो एक लॉज है जिनर के ऊपर केस करने का, वो निकाल देने का, तो फिर अपने को उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसी मेरी सब जिनरों की तरफ से आपको रिक्वेस्ट है। थैंक यू।
थैंक यू वामरे जी। और जो आप आरसीएम का जो मुद्दा है वो हमने आगे हमारे उसमें है, वो बिल्कुल उसको भी हम एक बार चर्चा का विषय बनाएंगे आगे। मैं आपसे पूछना चाहूंगा रेड्डी जी कि आपके हिसाब से ये जो कपास को क्या सॉल्यूशन जो पानी का है उसमें आप क्या देखते हैं, क्या कुछ सॉल्यूशन निकल सकता है इस तकलीफ का? We see that there is a big problem of moisture in kapas. So how do we address that issue? Because we see that farmers, they bring high moisture kapas, because of which we face a lot of issues like quality deterioration, etc. So how should we address? Is there any solution to that problem? बीच में मैं एक मिनट आपको ले रहा हूँ, एक मिनट साहब। जो कपास पानी का कपास परचेज कर रहे हैं उसको देखना बोलता है। आदिलाबाद जितना बड़ा था वो खराब हो गया, बैसा जितना बड़ा था बड़ा बड़ा लोग खराब हो गया। जो कपास पानी का परचेज कर रहे हैं जिन्हें सस्टेन नहीं होता है वो मुश्किल है, मगर जिन्नर के लिए मरनक शासन है कपास पानी का कपास। थैंक यू सर। It's a good question. Good evening to everybody. Actually, spraying of water to kapas, actually, it's not a good practice, because by spraying water to kapas, actually seed will get affected, and also the quality in cotton also will get affected. At the time of purchasing kapas, the ginners should be very careful, and we have to go according to the percentage of moisture. We should cut down the price in kapas, and first of all, ginners should see that we get moisture-free kapas. Because loaders usually will do this type of practice. Loaders, they will spray water to the kapas in the village, and they will take it to the ginners, and they will resell it to the ginners. Usually farmers won't do this type of practice, and in summer farmers also will be doing this type of practice. Actually in Adoni it is a regulated market. We fought a lot to avoid moisture in kapas, and in Adoni what we have done is, actually if water is sprayed to the kapas, we have opened the borers and we kept it dried for nearly 2 to 3 hours, and later on again it is refilled, and later on we weighed it. Because of that, nearly per each quintal, nearly there was shortage of 8 to 10 quintals. There was shortage of 8 to 10 quintals per quintal. Because of doing like that, we could save that shortage, and this dry quality of kapas will help a lot to us. And I request all the ginners to avoid moisture, to avoid this one water sprayed kapas at the time of purchasing. If at all it is moisture is there, as per the content of moisture in the kapas, let us reduce the rate, and we will let us purchase according to the price after deducting the rate. Thank you. Well, thank you, Reddy ji, for your insightful information. And since we are short on time, so we'll just make it very quick. Sridhar ji, do you want to make a quick? You want to add anything on this issue? We have to be very quick because since we are. Hello. Yeah, this is about the moisture in the kapas. In 2014, most of the new ginners into the market of Nalgonda district, Telangana state. So we seriously implemented a fine of rupees 5 lakhs if any ginner purchases the kapas more than the 12% moisture. So seriously implemented, and we collected the check from each ginner at the time. So that makes a lot of difference from 2014 to 15. So this is the way we started, and now most of 90% of the ginners, they are not purchasing any moisture purchase from this side. That is one addition. Great. So I'll just take this last question now, which I will be asking to few people, because since it's a big question, I would say. Big in a way that our expectations are big in this particular issue. So what do we expect from government? आपको क्या लगता है ऐसा कि हम सरकार की मदद, आपको क्या लगता है किस लेवल पे हम ले सकते हैं जिसके कारण से कि हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें सुधार देखने के लिए मिले, और जो ओवरऑल जो क्वालिटी में जो और क्वांटिटी में सुधार किया जाए, इसको लेकर के आपको क्या लगता है कि हमारी ऐसी कौन सी तकलीफें हैं जिसका सरकार के पास सॉल्यूशन है, और अगर हम उसको ढंग से अप्रोच किया जाए तो उसका रास्ता निकल सकता है? तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा सुशील जी से, सुशील जी कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है? सर, जब तक
जब तक किसान के घर में अच्छा बीज, अच्छी दवाई नहीं जाएगी, आप कितने ही प्रयत्न कर लो, आप पैरिटी में नहीं आ सकते। सरकार से आप यही रिक्वेस्ट करो भी जो ब्राजील में जो दूसरी जगह सीड वहां उपलब्ध है तो वो हमारे यहाँ क्यों नहीं है? लोग पाकिस्तान में भी कहते हैं 4G आया हुआ है, हमारे हिंदुस्तान में ऐसा क्या हो गया अभी हमारे किसान को सीड ही नहीं मिलता? सबसे बड़ी समस्या हमारे जो है, आप जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा, उसके घर में 15 क्विंटल की एकड़ेज नहीं आएगी, एवरेज नहीं आएगी, आप चाहे किसी लेवल पे कितने ही प्रयास कर लो, कुछ नहीं हो सकता। मैं सारे साउथ की और इधर गुजरात महाराष्ट्र की नहीं, मैं प्रॉपर आपको नॉर्थ जो है हमारा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उसकी प्रैक्टिकल आपको बात बताते हैं हम आपको भी। 3 साल से वहां पिंक बॉलवर्म का नुकसान हो रहा है। अब की बार राजस्थान भी आ गया, हरियाणा आया चपेट में, पिछली बारी पंजाब था। इसके अंदर दवाइयां भी अच्छी नहीं है, बीज भी अच्छा नहीं है। उसके बाद में हमारे पास आ गया जिनर के पास माल, हमने जिनिंग करके माल बायर को बेच दिया, स्पिनर को, मिल वालों को बेच दिया। अतुल जी, आपके लिए एक थोड़ी सी बात मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं भी, जो माल हमारा मिल में चला गया उसके अंदर जो उन्होंने हमारे को रिजल्ट दे दिए वो मान्य हैं। अगर हम ये कहते हैं भी आपके रिजल्ट हमें सूट नहीं कर रहे, हमने रुई इतनी खराब नहीं दी जितनी आप बता रहे हो, तो आप इसको कॉमन लैब में कहीं टेस्ट करा लो। वो एक्सेप्ट नहीं करते, वो कहते तुम्हारे को बेचनी है रुई तो हमारे इस बात पे बेचो। इसी कंडीशन में रुई लेंगे। एक मिल भी ऐसी नहीं है नॉर्थ की जो ये कह दे नहीं भाई आप कॉमन लैब करा लो। हम कहां जाएंगे? मैं आपको उदाहरण देता हूं, अरुण जी 4 की रुई बना रहे हैं, 4% ट्रेस हमारे वहां वैलिड है, मैं 5 की बना रहा हूं। स्टेशन देख के सरसा स्टेशन का एक पेट बना दिया उन लोगों ने भी, सरसा में 5 की रुई आएगी। इन्होंने 4 की दी है तो इनको भी 4 नहीं 5 का ही देंगे वो। मतलब स्टेशन सैंपल नहीं देखते, स्टेशन देख के रिजल्ट देते हैं। तो इन्होंने क्या गुनाह कर दिया भी, वो 4 की रुई देंगे, वो भी 5 की देंगे। सुधार नहीं हो सकता हमारे जब तक आप मिल पीपल को इस बात पे नहीं लाओगे भी। एक तो लेबोरेटरी सब ने अपनी हिसाब से कर रखी है, कोई कहता है मैं ओवन टेस्टिंग करूंगा, कोई कहता है मैं नीडल टेस्टिंग करूंगा, कोई किसी का भरोसा नहीं है भी क्या करके देगा। वही रुई हमने अहमदाबाद की मिल में टेस्ट कराया, उसमें 68.80 आई, मिल पीपल कहता है 65 की है। पहले 30 रुपए मन के पर पॉइंट के काटते थे वो हमारे, अब 50 का पता नहीं है, 100 का पता नहीं है, 200 का पता नहीं है। आपकी 66 आई है, उठा के ले जाओ आप अपना। तो हमारी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम इस लेवल पे ये कम जो बड़े ऑफिसर हैं, अधिकारी हैं, टेक्सटाइल कमिश्नर हैं, उन लोगों को ये बात कही जाए भी ये क्या अन्याय हो रहा है, आप सुधरने ही नहीं दे रहे हमारे को। देखिए साहब, इसका उपाय पप्पू भाई ने बहुत अच्छा निकाला था। इन्होंने पीयूष गोयल साहब को बोला कि साहब हमारे को जीनर को मिल वालों ने बहुत कटिंग करते हैं, आप बोलते हो अच्छा रुई बनाओ, मिल वाले बोलते हैं अच्छा रुई बनाओ, हम तैयार है अच्छा रुई बनाने को, हमारे प्रीमियम मिलना चाहिए। गोयल साहब ने बोला सीआई आप कॉन्ट्रैक्ट बनाइए। मैंने बोला साहब कॉन्ट्रैक्ट बना के क्या करेंगे, मिल वाले मानेंगे नहीं। तो राजकुमार जी बैठे थे सिटी के चेयरमैन, वो स्पिनिंग मिल के एसोसिएशन है, बोले सीआई सिटी का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, दोनों चेयरमैन साइन करेंगे और वो कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट लॉन्च करेगी। हमने 1 नेशन 1 कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट से लॉन्च कराया, जिसमें लिखा हुआ है कि आपका 29 mm का माल बेचोगे 28.7 आया, मिल वाला पैसा नहीं काटेगा। इतना सब क्लियर है। आरडी 75 का धारा है, 74 आया, मिल वाला पैसा नहीं काटेगा, 3.5 ट्रेस नहीं काटेगा। अब जो हमारे को करना था हमने कर दिया, मैंने और पप्पू भाई ने। गवर्नमेंट से
मैं बोलता हूँ इतना इम्पॉसिबल काम था, गवर्नमेंट के वो टेक्सटाइल मिनिस्टर आज आई थी मैडम, उनके हाथ से लॉन्च कराया। कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है, आप उसके धारे पे बेचिए माल, कहाँ प्रॉब्लम है? आपका कोई पैसा ही नहीं काट सकता है। अब हम क्या करेंगे? आपके एसोसिएशन जो आज आप ही प्रेसिडेंट है हरियाणा के, बोल दीजिए जिनर सबको कि सीआई कॉन्ट्रैक्ट पे माल बेचेंगे। आज अरुण जी बैठे हैं, ओडिशा में बैठ देवे, पप्पू भाई बैठे हैं बोल देवे, अरविंद भाई है वाइस प्रेसिडेंट बोल देवे, रमेश जी है, भाई हम लोग नहीं बेचेंगे माल, हमारे एसोसिएशन के धारे पे बेचेंगे, सीआई का कॉन्ट्रैक्ट मारेंगे, वो हिसाब से कटिंग करवाएंगे। देखो आपकी हालत कितनी सुधर जाती है। आज एमएनसी आपसे पैसा लेके रुई देती है, एक भी एमएनसी की रुई लेते हैं, पूरा पैसा भरो, नो क्रेडिट। उसका कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है 28.7, 3.6 माइक, 3.5% ट्रेस, 9.5% मॉइस्चर, मिल वाले लेते हैं सब माल। आप जिनर तो क्या, अभी आपके पास सब पुरखे पैसा रख के गई है, फोर फादर, आप लुटा रहे हो, आपको मजा है। हमारे को जो काम करना था हमने करके दे दिया। शांतिलाल जी बैठे हैं, विनोद जी बैठे, सब स्टेट के प्रेसिडेंट बैठे हुए, आप ही नहीं कर रहे हो, हम क्या करेंगे? अरे मिल को भी तो रुई चाहिए ना। जिनर जिनिंग नहीं करेगा तो क्या कपास खाएगा क्या मिल वाला? अगर आप में ही संप नहीं है तो हमारे पे क्यों डालते हो आप? हमने तो हमारा काम करना था। मैं मजाक नहीं बोलता हूं, पप्पू भाई ने इतना अच्छा मिनिस्टर सर से रिलेशन रखा है, इनको देखते ही बोलते वो सरदार जी को क्यों दूर बिठाया, मेरे बाजू में बिठाओ, मेरे बाजू में बिठाओ बोलते हैं, इधर कुर्सी लगाओ। तो वो बोल बोल के सब काम हो गया। आप लोगों का तो नसीब खुल गया है, इतना अच्छा कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है, आप बेचते नहीं हो उस पे। आप क्यों नहीं बेचते हो? बोल दो सब बायर को कि भाई हम सीआई के कॉन्ट्रैक्ट पे बेचेंगे। 1 महीना प्रॉब्लम होगा, गठान नहीं लेगा कोई, 31वें दिन आपकी कंडीशन पे रुई लेगा, आपका कटिंग का प्रॉब्लम गया, ऊपर से प्रीमियम, अच्छा रुई बनाओगे प्रीमियम मिलेगा। आपको करना चाहिए साहब, सबका एक ही उपाय है, सीआई का कॉन्ट्रैक्ट लागू करो और जीनर का प्रॉब्लम दूर करो। मैंने आज मेरी स्पीच में बोला, आई एम सरप्राइज व्हाई जीनर एसोसिएशन हैज नॉट इम्प्लीमेंटेड दिस। क्यों नहीं करते हो साहब? पंजाब में भी कर सकते हो। अच्छा ऐसा नहीं 29 mm का कॉन्ट्रैक्ट है, अब 27 mm का करो, 26 mm करो, 28 mm का करो, 4% ट्रेस का करो, मगर वो कटिंग आपका जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है उतना आपको मर्जी मिलेगा और उसके बाद ही कटिंग होगा। सब आपका कटिंग बंद हो जाएगा, सब जिनिंग फैक्ट्री प्रॉफिट में आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर। आज यहाँ आए सभी एसोसिएशन के अध्यक्ष को बोलना चाहता हूँ कि आज यहाँ से प्रण लेके जाइए, हाथ ऊपर करके जाइए और प्रॉमिस करके जाओ कि हम भी नेक्स्ट सीजन में उसी कॉन्ट्रैक्ट से बेचेंगे, नए सीजन से। तो मैं आज सबसे वादा लेना चाहता हूँ, सभी एसोसिएशन के अध्यक्ष, सभी जीनर्स अपना हाथ ऊपर करके इसका सपोर्ट करें और इसको अमल करें। सभी जीनर्स भाइयों के लिए अब ये बहुत बढ़िया ये है कि ये सीआई कॉन्ट्रैक्ट के लिए सब लोगों ने अपना हाथ ऊपर करें प्लीज। सर क्या है, देखिए मैं आपको बताऊं, आज मैं जब यहाँ पैनल डिस्कशन के लिए बैठा ना, तो मैं आपको दिल की बात बोलना चाहूंगा। वो एक एक्साइटमेंट नहीं थी मेरे में। वो एक्साइटमेंट क्यों नहीं थी? मुझे लगता है हर कॉन्फ्रेंस में आते हैं, वही की वही बात करते हैं, वही की वही मुद्दे हैं, वही ट्रैश, वही पानी, वही टेस्टिंग, कोई दूसरा टॉपिक नहीं निकलता। लेकिन क्या होता है, तकलीफें हैं, लेकिन हमारी विल नहीं है, हमारी इच्छा शक्ति नहीं है कि हम उसको सोल्यूशन निकाला जाए। अभी सीआई जैसा अतुल भाई ने बताया, ऑलरेडी हमारे पास सॉल्यूशन है, ऑलरेडी इतना अच्छा चीज बनाई है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। हम इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते? क्योंकि आपस में हमारी यूनिटी नहीं है। कपास की बात करें, गीले कपास का प्रॉब्लम को नया तो है नहीं। अब मुझे क्वेश्चन दिया गया, मैंने आप लोगों से पूछ लिया, लेकिन ये इसका सॉल्यूशन क्या? इसका सॉल्यूशन हमारे खुद के पास है, लेकिन हम नहीं करते हैं वो। हम जो चीजें चल रही है आपस में कंपटीशन में लड़ रहे हैं। आप जितने क्वेश्चन मैंने पूछे हैं, ये कोई भी क्वेश्चन निकाल के देख लीजिए, ये सबका सॉल्यूशन हमारे पास है। ऐसी कोई चीज नहीं जो सॉल्व नहीं हो सकती। कैश का प्रॉब्लम हमारे हाथ में है। तो कुल मिला करके हमें खुद को देखना पड़ेगा कि हम कहाँ खड़े हैं, और यूनिटी के साथ सबको एक साथ मिल करके ये सब चीजें इंप्लीमेंट करेंगे तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो आगे बढ़ाते बस मैं लास्ट क्वेश्चन एक लूंगा कि जो सुशील जी। सर
मैं बीआईएस के बारे में भी बात करना चाह रहा था। अभी बीआईएस के अंदर जो भ्रांतियां हैं या क्या उसका डेवलपमेंट है, उसका जो एक बारी सब लोगों को इस बारे में बताया जाए कि भी ये क्या चीज आएगी, क्या रहेगा इसका। क्योंकि देखो हमारा जो नॉर्थ में है वो 3 महीने तो फॉग का एरिया रहता है। 1 मिनट सर, उसके अंदर मैं बताता हूँ आपको। बीआईएस के लिए मध्य प्रदेश कॉटन एसोसिएशन ने एक मीटिंग आयोजित की थी जिसमें सीआई से डॉक्टर मध्यान जी आए थे। उसमें जीनर के लिए बीआईएस का जो लॉ है, सिर्फ उसमें लेबल लगाने पे आर्बिट्रेशन है। आप यदि लेबल गठान पर नहीं लगाते हैं तो आपको आर्बिट्रेशन हो सकता है। और उस लेबल में भी 6 चीजें हैं। नाम लिखना है, प्रेस नंबर लिखना है, साल लिखना है, वैरायटी लिखना है और जिस समय प्रेसिंग हो रहा है उसका वजन लिखना है और क्वालिटी लिखना है। इससे अपन जीनर को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज है, सारा उसमें सेल्फ डिक्लेरेशन पे कॉटन बिकेगा। आप जैसे 29, 3, 8 और 3 का ट्रेस, 9 का मॉइस्चर इस कंडीशन पे बेच रहे हैं तो वही कंडीशन को आपको सेल्फ डिक्लेरेशन करना है। तो इसमें दिक्कत क्या है, सिर्फ अपन समझ नहीं पा रहे हैं। और उसमें जो थोड़ी बहुत दिक्कत है उसके लिए अपन सरकार से चर्चा करके उसको आगे, सब लोग बैठे हैं, बड़े लोग वो सब कर ही रहे हैं, अपने लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। इतने बिजी रहने के बाद भी इतना टाइम दे रहे हैं, अतुल भैया, पप्पू भैया, कोटक जी, सभी लोग। तो इन लोगों को सबको सही करके बीआईएस में अपने को फायदा ही होना है, नुकसान नहीं होना है। जो बैलेंस शीट के लिए परेशान हो रहे हैं ना, वो बैलेंस शीट सुधर जाएगी सबकी। और मैं डॉक्टर मध्यान जी से बोलता हूँ कि इसको पूरा थोड़ा डिटेल में बताएं, 5 मिनट। नमस्कार। देयर इज ए स्मॉल करेक्शन, मैं बीआईएस से नहीं हूँ, मैं सीआई में ही हूँ और मैं यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ। मेरा 40 साल का एक्सपीरियंस है क्वालिटी इवैल्यूएशन पे कॉटन के। दैट्स व्हाई आई एम लुकिंग आफ्टर दिस मैटर। एक्चुअली उस लॉ को अच्छी तरह पढ़ने के बाद, जैसा कि इन्होंने समझाया, वो केवल लेबल लगाने तक ही सीमित है। जो प्यूनिटी क्लॉज है वो केवल लेबल लगाने तक ही सीमित है और क्वालिटी सर्टिफिकेट भी आपको बेल के ऊपर नहीं लगाना है, वो आपको अपने रिकॉर्ड में रखना है। और केवल 2% की टेस्टिंग है, केवल 2 बेल टेस्ट करने हैं आपको, पूरे का बेल टेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। और जितने भी रिकॉर्ड्स हैं सब जीनर को खुद बनाना है और खुद ही डिक्लेयर करना है कि ये मेरी क्वालिटी है। कहीं कोई भी ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन मुझे नहीं दिखा किसी भी उसके जितने भी क्लॉजेज हैं 12171 के, कि जिससे किसी को शायद कोई तकलीफ आए। तो इसमें और भी अगर कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ सीआई में। एक्चुअली बीआईएस का एक बहुत बड़ा हवा बना दिया गया है कि बीआईएस, लेकिन बीआईएस के कुछ पॉजिटिव्स भी है काफी अच्छे। अगर उसको ढंग से इंप्लीमेंट किया जाए तो इंडस्ट्री के लिए अच्छा उसका रिजल्ट आएगा। और डॉक्टर मध्यन जी हमारे पास हैं सीआई में, अगर किसी को भी इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो बिल्कुल अवेलेबल है ये आपके लिए। मैं हर प्रदेश में जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, हर प्रदेश में वो एक मीटिंग रख सकते हैं बीआईएस के लिए और उसमें सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। आप खुद ही कहोगे कि यार ये कैसे अपन ने इसका विरोध किया। सीआई ने तय किया है कि अभी अपना हम वी वर बिजी विद दिस कॉन्फ्रेंस, ये उसके बाद हम ये बीआईएस के ऊपर पूरा एक सेमिनार करेंगे, दैट विल बी थ्रू जूम। सब जीनर जो भी मेंबर्स जीनर्स है, जो भी अपने जो भी एसोसिएशंस है, सब उनके भी मेंबर उसमें अटेंड कर सकते हैं। मध्यन साहब, मैं और दूसरी जो कमेटी बनाई है, पैनल बनाई है प्रेसिडेंट ने, वो पैनल बैठेगी, पूरा समझाएंगे, जो भी क्वेश्चनर होगा आपको जवाब देंगे और वी विल बी देयर। वो जो भी पैनल है उसमें पप्पू सेठ हैं, मध्यान है, मैं हूँ और भी 2 हैं। आई थिंक अपने गुजरात वाले अभी है ना, वो सब विद इन अ वीक वो डेट डिक्लेयर कर देंगे एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू गिव ऑल क्लैरिफिकेशंस। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा सजेशन है। एजुकेशन की जरूरत है, लोगों को समझाने की जरूरत है, इससे 100% इफेक्ट आएगा। तो बिल्कुल अच्छी पहल होगी सीआई की अगर ये होता है तो। मैं इन्हें कॉटन एसोसिएशन की तरफ से सभी को, इन्हें हमारे जीनर्स भाइयों की तरफ से विनंती करता हूँ कि वो बीआईएस लागू करें और हम जीनर्स लोग उनको सपोर्ट करेंगे, ऐसा हमारे ओर से मैं उनको आश्वासित करना चाहता हूँ। दूसरी बात ऐसी कि ये कॉटन सीड के ऊपर जो अपन कॉटन केक के ऊपर कम से कम
यानी सेल टैक्स यानी जीएसटी लगने को ना, ताकि जो जीनस भाई की ऑयल मिल है उनको बहुत तकलीफ होती है। मैं सभी को ये करता हूँ कि अपन ने डिमांड करने को ना कि कॉटन केक के ऊपर जीएसटी लगे, ताकि ऑयल मिल वाले को भी तकलीफ ना होए। जैसे मैं अपने जीनस भाई की तरफ से विनंती करता हूँ। बिल्कुल अच्छा, आपका ये वैलिड पॉइंट और काफ़ी तकलीफ है उसको लेकर। एक लास्ट रफीक भाई का हम पॉइंट लेके फिर इसको हम कंक्लूड करेंगे। मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा। आरसीएम जो एक हमारे लिए अभी जिनर्स के लिए, जैसा कोरोना में सर्दी और बुखार से तकलीफ होती थी, उससे ज़्यादा तकलीफ अभी आरसीएम से हो रही है। कारण क्या है कि हमारा जितनी पूंजी है जो बिजनेस की, उसमें 30% का जो हिस्सा है पैसे, वो आरसीएम में हमारी जाम हो रही है। तो सीआईए के जितने प्रेसिडेंट सेक्रेटरी सब आए हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ये मुद्दा है, स्टेट गवर्नमेंट का मुद्दा नहीं है। तो आरसीएम के ऊपर आप कोई भी हालात में जिनर्स के ऊपर आरसीएम निकालने की मेहरबानी करना और कोशिश करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं हम। धन्यवाद। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। तो मैं आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, आप सबने दी, और आशा करता हूं कि ये जितनी प्रॉब्लम हमने डिस्कस करी सबके सॉल्यूशन हमारे खुद के पास है। खाली अगर हमारी यूनिटी अच्छी हो तो सबका सॉल्यूशन निकल सकता है, और हमें सबको आत्ममंथन करने की जरूरत है। और उम्मीद करता हूं कि अगले साल हम ये सब प्रॉब्लम्स को छोड़ के कॉन्फ्रेंस की आएंगे अगले साल की। इसी आशा के साथ अपने शब्दों को मैं विराम देता हूं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कॉन्ट्रैक्ट करेंगे क्या? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे क्या? पूछो कॉन्ट्रैक्ट। आप आइए, आपसे आइए, प्रेसिडेंट साहब आइए, आपसे Thank you so much for such an invigorating panel discussion, gentlemen. Now I'd like to invite Shri G. Chandrasekhar, Senior Editor and Policy Commentator, to address the audience about how to increase the cotton yield in India. Meanwhile, I would also request all the delegates from the broker panel to please be ready. We'll be having the panel discussion on brokers right after this. Thank you. I'm just waiting whether I should start speaking or allow people to settle down. Let people settle down, I don't care. Even if I'm not able to speak, it doesn't matter to me. Will you announce some silence? Hi everyone, I request everyone to please settle down. We just have a little more of the conference to go.
So I would request everyone to please take the seats and settle down. Thank you. You know, since morning we've heard a lot of people talk about the need for raising production and productivity, for raising yields. And very specifically, Atul Bhai requested me that I must discuss strategies for raising yields. Okay, and that's exactly what I'm going to talk about in the next, maybe, I don't know, 10 minutes. Do you have a countdown here, counter here? Can you put 10 minutes, please? I want to time my speech. Very clearly, I'm seeing this cotton sector, India's cotton sector, is going to face tremendous amount of challenges. ये जो business as usual चलते आ रहा है पिछले कई सालों से, ये आगे नहीं चलेगा. एक काफी disruption होगा. पिछले 2-3 साल में हम disruption देखा है. This disruption will get worse over the next 7 or 8 years. और जैसे हम जाते हैं 2030 के ओर, मैं देख रहा हूं हमारा उत्पादन तेजी से बढ़ेगा नहीं. Our production will probably go towards 380 lakh bales. Outside limit could be 400 lakh bales. Okay. On the other hand, हमारा demand जरूर तेजी से बढ़ेगा. क्यों बढ़ेगा तेजी से? क्योंकि the number of units that are processing are increasing. The capacities are increasing. और जैसे हम हमारा जो $5 trillion इकोनॉमी के ओर बढ़ते हैं, जरूर उसके वजह से कॉटन का डिमांड बढ़ेगा. Cotton is called a growth commodity. There's a positive correlation between economic growth and cotton consumption. Like there is a correlation between economic growth and steel consumption, copper consumption, crude oil consumption. वैसे ही there is a correlation between economic growth and cotton consumption. तो हमारा जो $5 trillion का जो ambition है, if we are moving towards that, demand for Indian cotton is bound to rise. तो क्या होगा? Demand तेजी से बढ़ेगा, मगर हमारा उत्पादन बहुत धीरे ही बढ़ेगा. आगे जाकर के 2, 3, 4, 5 साल में मैं देख रहा हूं आपको कोई एक्सपोर्ट सरप्लस होगा नहीं. There'll be no genuine export surplus of cotton in this country, number one. Number two, our import dependence will increase. Whether there is 11% duty or not, imports will become inevitable. आगे जाकर के मैं दृश्य देख रहा हूं, जिसके वजह से क्या होगा? The user industries will find it very tough to source raw material. For land constraints, water shortage, climate change, ये 3 बड़े चुनौतियां हैं हमारा देश का कृषि क्षेत्र के लिए, और खास करके for the cotton sector. तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? What can we do? उसके लिए मैं मेरे तरफ से 4 उपाय. I'm trying to talk about 4 ways in which it is possible to address this. One is technological intervention. दूसरा है boosting genetic research. और तीसरा है replicating the experience of high growth areas or districts in low yield districts. और चौथा है contract farming. जो पहला है टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, काफी अहम है, क्योंकि हमारा जो पिंक बॉलवर्म का जो समस्या है, आगे जाकर के इट विल गेट वर्स. इसका एक खास कारण है जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता. पिंक बॉलवर्म के बारे में सब लोग बोलते हैं, मगर पिंक बॉलवर्म क्यों आया अपना देश में? दिस इज बिकॉज particularly I find in northern India, Punjab, Haryana, even Rajasthan, farmers plant much before the due date. मेरा अनुमान से cotton planting time is between 20th April and 15th of May. But more often than not, I find planting taking place by end of March and even early April. तो अब पहले ही बुवाई हो जाती है. सपोजिंग बरसात लेट होता है या बीच में पानी कम बरसात होता है, और there's an early withdrawal of monsoon,
or there is a late withdrawal of monsoon, there will be a problem of pest attack. This is exactly what has been happening in the last 4 or 5 years. तो इसके लिए एक समस्या का समाधान है, इसका नाम है स्टीवर्डशिप. स्टीवर्डशिप इज द वे फॉरवर्ड. हमें एक अवेयरनेस प्रोग्राम करना है along with agriculture universities and with Krishi Vigyan Kendra, talk to all the farmer producer companies and groups of farmers, particularly in northern India. Tell them which is the correct window for planting and tell them the benefits of the correct window for planting. ये जब तक ये स्टीवर्डशिप नहीं होता है, इस उत्पादन का समस्या हमारा घटेगा नहीं. और मैं मानता हूं कॉटन एसोसिएशन जैसे जो ट्रेड बॉडी है, उनकी जिम्मेदारी है टू डू दिस स्टीवर्डशिप, टू टॉक टू द राइट स्टेक होल्डर्स एंड डू स्टीवर्डशिप. मगर पता नहीं होगा कि नहीं, आई एम नॉट वेरी श्योर. किसान क्या करता है, खास करके पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में और अन्य क्षेत्रों में भी, यू नीड टू हैव एरिया फॉर नॉन कॉटन हाइब्रिड्स. वो नहीं देता है वो एरिया. यू नीड टू हैव व्हाट इज कॉल्ड रेफ्यूज एरिया. There is a protocol for producing, for planting BT cotton seed. Farmers do not follow that protocol. And when you don't follow that protocol, there will be problem. We need to accept that. तो उसमें आप बोलोगे किसान का दोष है. किसान का दोष है, but किसान also wants to maximize his income. And that is why it is important for the user industry to become to do stewardship, to help the farmer, build capacity in him, train him, do awareness programs, because it is in the interest of the trade and industry that they get more quantity and better quality. Therefore, this is a big responsibility for the trade and industry. दूसरा एक मैं देख रहा हूं जेनेटिक रिसर्च. हमारा देश में सरकार की ओर से जेनेटिक रिसर्च के लिए कोई भी किसी भी ढंग का प्रोत्साहन नहीं है. इनफैक्ट टू मी इट लुक्स लाइक द गवर्नमेंट इज नॉट इन फेवर ऑफ टेक्नोलॉजिकल इन्फ्यूजन इन एग्रीकल्चर इन जनरल एंड सर्टनली इन कॉटन. एंड देयरफॉर ये बहुत बड़ा समस्या है हमारा देश के लिए. सरकार का जो नॉन सपोर्टिव पॉलिसीज है, जो पॉलिसी उनका रिसर्च को सपोर्ट नहीं करता है, इसके वजह से मैं जानता हूं कितने सीड कंपनीज अपने रिसर्च बजट काफी कम कर चुके हैं. और जब भी रिसर्च कंपनीज अपना बजट कम करते हैं, उसका बहुत लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होता है हमारा देश का कृषि क्षेत्र के ओर. एंड देयरफॉर दिस इज नॉट गुड फॉर द कंट्री. देयरफॉर that's a big issue which the trade and industry representatives and the input companies like seed companies will have to tell the government of India and the policy makers. हम कहते हैं yesterday's research is today's science. Today's science is tomorrow's technology. तो रिसर्च होगा तो ही साइंस होगा, साइंस होगा तो ही टेक्नोलॉजी होगा. तो टेक्नोलॉजी का मूल है रिसर्च. वी नीड टू बी स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी ऑन रिसर्च, मगर ये हो नहीं रहा है हमारा देश में. उसके लिए सपोर्टिव एनवायरनमेंट, पॉलिसी एनवायरनमेंट नहीं है. इसके बारे में ट्रेड एंड इंडस्ट्री, सिटी को, टेक्सप्रोसिल को, CAI को, लोकल एसोसिएशन, यू ऑल हैव टू टॉक टू ऑल द पॉलिसी मेकर्स. तीसरा सुझाव है, हमारा देश में 10-12 राज्यों में, 15 राज्यों में कपास का उत्पादन होता है. उसके अंदर 20, 25, 30 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां एवरेज प्रोडक्टिविटी और एवरेज यील्ड इज अबाउट 800 to 900 किलोग्राम पर हेक्टर. नेशनल एवरेज हमारा है 420, 430, 440 किलोग्राम पर हेक्टर. बट देयर आर 20, 30 और इवन 40 districts where the yield is double the national average. So we need to study वो जो डिस्ट्रिक्ट हाई yield districts है, वहां के किसान क्या करते हैं, what kind of inputs they use, what kind of agronomic practices they follow. That can be studied, documented, and it can be replicated in low yield areas. ये क्यों नहीं हो रहा है? This is common sense. This is not rocket science, but why is this not happening?
I don't know. But again, I would think this is a responsibility of the trade and industry associations. And the last one, I'm talking about contract farming. Why am I talking about contract farming, which is very critical? There are big ginning pressing factories, there are big spinning mills, there are big textile mills, and they all think it is their birthright to get the raw material. I think that thought should be perished. If I am a big processing unit, I should be able to produce my own raw material, which is cotton, for which I need to establish backward linkages. I need to contract with farmers. I need to work with farmer producer companies. And by this contract farming methodology, and there are very well set models of contract farming, it is a win-win situation for the farmer and for the user industry. Why are we not promoting this? And this is not a complicated, this is not rocket science, as I said. This is quite simple, and there are established models available, including pricing of the produce. There's a model available for how to price the produce that comes out of contract farming. And therefore, I think we need to look at all these possibilities. I have always believed that cotton is nature's gift to India. Cotton is nature's gift to India. And we need to make cotton India's gift to the world. But if business as usual continues like this, forget about export. You may not even have enough cotton for domestic consumption. I am not an alarmist, nor am I a trader. I'm a student of this market. And these are my very frank, personal views with high conviction. Good luck. God bless you all. Thank you. Thank you. Thank you so much, Mr. Chandrasekhar. Now, ladies and gentlemen, or whoever's left of us, it's time to do our the fifth panel discussion for the evening, which is panel discussion on solutions for challenges facing brokers. Our brokers have also been long ready. I would like to invite Shri Sudhir Kumar Mantri, Director CEI, to please come on stage and moderate this session. I would also like to invite the other panelists, Shri Pankaj Mepani, Director, Cotton Association of India, Shri Sachin Kumar Sharma, President, the Maharashtra Cotton Brokers Association, Shri Ramanuj Das Boob, Director, Bankatlal Boob Cottons Private Limited, Raichur, Shri Nishant Asher, Managing Partner, Ravji Shamji Asher Coimbatore, Shri K.G. Rajkumar, Managing Director, MTK Coimbatore, Shri Karan Raheja, Associate Director, CAI, Shri Sunil Jaiswal, Managing Director, Devesh Kumar, Brijesh Kumar, Nagpur, Shri Gopal Padia, Proprietor, Geeta Cotton Corporation, Coimbatore, Shri Bhupen Shah, Proprietor, Darshan Corporation, Hyderabad, Shri Prakash Rathi, Partner, Prakash Ranchor Das Rathi, Mumbai, Shri Rasesh Emdani, Proprietor, Shri Balaji Cotton Corporation, Warangal, Shri Nalam Manoj Kumar, Proprietor, Ganpat Ramlu, Adilabad, Shri Girish Naksi, Proprietor, Hamir Cotton, Mumbai, and Shri Sunil Somani, Partner, Bhagat Ram Sonawani, Rajasthan. You want me to call someone again? Yeah. Come here. Hello. सबसे पहले अतुल भाई, पप्पू भाई, हम सब ब्रोकर्स आपके काफ़ी आभारी हैं कि आपने हमें बोलने का मौका दिया है। समय कम होने से मैं जानता हूं प्रोग्राम बढ़ गया तो हम लेट हो गए,
तो अब अगली बार के लिए मैं आप लोग से प्रॉमिस चाहता हूं कि लंच के बाद का स्लॉट हमें दिया जाए, ताकि जिनर्स लोग भी रहें और हमारी बातें सुने। अभी देखिए सब जिनर्स जा चुके हैं। नहीं, नो प्रॉब्लम, पर नेक्स्ट टाइम आप दीजिएगा। हाँ, और हम लोग बहुत ज़्यादा खुशनसीब हैं कि आप सीआई में हमारे ब्रोकरों के लिए आपने एक अमेंडमेंट लाने का प्रयास किया है। हम लोग आभारी हैं और हम चाहते हैं जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट हो जावे, जिससे हमारी बहुत सेफ्टी हो जाएगी। और मैं मेरे सारे दलाल भाइयों से निवेदन करूंगा कि जो मॉडल कॉन्ट्रैक्ट सिटी और सीआई ने बनाया है उसको लागू करें और उसका प्रयास करें। बस इसी बात से अब हम लोग उठते हैं। थैंक यू वेरी मच। हाँ, एक मिनट। हाँ, बोलिए। हेलो। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं आप लोग से सबसे, कि अपने लोग ब्रोकर हैं, दलाल हैं, अपने को दलाली करनी चाहिए। दलाली कैसे स्मूथली होवे उस पर विचार करना चाहिए, ना कि क्रॉप के आंकड़ों में गिर के लोगों को भ्रमित करें। ये मेरी सोच है। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सीआई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज हमको दलाल भाइयों को कुछ बोलने का मौका मिला है। जैसा अतुल भाई ने कहा है कि सीआई का कॉन्ट्रैक्ट अगर लागू होने से हम दलालों का 50% 75% काम इजी हो जाएगा। और ये जो रोज के आपस में जिन्नर के और हमारे सल्टाने में ही हमारे को बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट होने से हमको बहुत काम सलीस हो जाएगा। और मैं सब लोगों को बोलता हूँ, दलाल भाइयों को, कि भाई इस अपन जो भी सौदा करे आगे से बायर को सेलर को सीआई के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही अपन इसको काम आगे लेके चले। अपना सहयोग रहने से ये काम जल्दी अपने आप लागू हो जाएगा। और मैं चाहता हूं कि ये अपना ब्रोकरेज का जो बिजनेस है इसको लॉन्ग रन के अंदर सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाने के लिए अपन एक एथिक्स से काम करें और अच्छे कल्चर में काम करें, अच्छे सहयोग बना के जिन्नर को और बायर को दोनों को सबको आपस में तालमेल मिला के किसका क्या रिक्वायरमेंट है, कौन क्या चाहता है, उस तरीके से काम करने पर अपने को कोई तरीके का प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसा अतुल भाई ने बोला, पहले लोग कमीशन भी 1% देते थे। आज अगर अपनी अच्छी सर्विस रहे तो कमीशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे बायर अच्छे हैं, सारे जिन्नर अच्छे हैं, अपने कोई तरीके का प्रॉब्लम नहीं है। अपन अपना काम है सर्विस देना, सब लोगों को खुश रखना, उनके तरीके से काम करना और अच्छी व्यवस्था बना के रखना। इतना कह के मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जी। पंकज भाई आप दो शब्द बोलिए। जैसे हमारे मॉडरेटर सुधीर भाई ने बोला, वी आर वेरी थैंकफुल टू सीआई फॉर ब्रिंगिंग अप द प्रपोज्ड मॉडल बाय लॉज, एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंटली अपना जो मॉडल कॉन्ट्रैक्ट है वी ऑल शुड फॉलो। इट्स अ वेरी गुड हेल्प फॉर द होल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। दिस इज माई व्यू। The broker has to work smoothly. Seller, buyer, both has to satisfied. What you can do better? That can you throw some light? Atul bhai, you have brought a very good point. I just put in 48 years in cotton, and majority of my 28 years have been in buying of cotton. Correct. I have been in touch of most of the big handful brokers in the trade. I mean, you brought it out, that's why I'm saying, sir, as a broker, not for me, okay, both gai kam bachi meri to, but others, not others, I will say, you have to follow the model role. Like, to be very honest, when somebody used to come to me to sell in Gokak, I used to appreciate him, not as a broker, but he is guiding the mill, when to buy, what quality to buy. We don't want it salakari. We know my management knows what has to be done. But we used to follow what the broker used to say. We have to learn also from a broker. And we should implement, I mean, if people understand, the buyer or the seller, they should give importance to the broker. It is not therefore we are dying for brokerage. So, I mean, role is very important of a broker in the trade. Anything else I have left, you asked me? Thank you. साहब एक और बात कहना चाहूँगा, हम ब्रोकर लोग को
हर चीज पता रहती है कि सौदे में कहाँ दिक्कत आ सकती है, कहाँ नहीं आ सकती है। तो ये जो हम सौदा नोट बनाते हैं या कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, वी शुड टेक केयर कि ये प्रॉब्लम क्रिएट ही ना हो, और क्रिएट हो तो छोटे में छुटकारा हो जाए सबका। So good evening, everyone. So suppose a CA contract अभी जो नया contract system, thank you to CAA for bringing this. Suppose if Mills Association can be be collaborated in this and explained to this, it will be easy for us to also implement. Because हम जो broker, to be frank, हम जो बोल रहे हैं 90% of the buyers are not going to accept whatever we say. So if there is a thrust from the CAI to the respective buyers associations, so there will be a lot of weight in that, and if that is possible, it will be helping everyone in the industry to take step forward. मैं सबसे पहले अतुल भाई जी और भूपेन भाई जी का सब और कोटक जी का मैं शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने अपने बायलॉस के अंदर हमारे कॉटन ब्रोकर एसोसिएशन का कृतज्ञ हूँ। हम लोग आपने जो 75 रुपया गांठ का रखा वगैरह सब जो किया है उसके लिए हम सब आपके आभारी हैं। पहली बात। दूसरी बात, मैं सारे जितने भी ब्रोकर्स हैं, भले वो किसी भी प्रांत के हों, वो सभी ने सीआई में ब्रोकर पैनल में उन्होंने अपना नाम रजिस्टर कराना चाहिए। कारण क्या है कि सीआई सिर्फ एकमात्र एसोसिएशन है जो अपने पूरे भारत में सरकार के साथ में रजिस्टर्ड है, बाकी कोई एसोसिएशन रजिस्टर्ड नहीं है। तो कोई भी जो भी काम हो, कुछ भी हो, तो ये सीआई के थ्रू ही होगा। पहली बात ये है। दूसरी बात, जितने भी जो अपने दलाली के अंदर हम जो काम करते हैं और हम जो देखते हैं कि जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं, वो डिस्प्यूट के अंदर अगर जितने भी जीनस भाई हैं या फिर जो भी मिल वाले हैं, वो अगर सीआई का जो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर चले और उसके हिसाब से रुई बना के उसको कंज्यूम करे मिल वाले, तो मुझे नहीं लगता कि कोई तरीके का प्रॉब्लम कुछ आवे। और उसके अंदर अपने जो सीआई का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर काफ़ी कुछ दिया हुआ है, उसके अंदर आराम से उसका निराकरण हो सकता है। डिस्प्यूट नहीं है, काम ही नहीं है। जो ये हम लोग जो खड़े खड़े हो जाते हैं कि भाई आज मिल वाले ने पैसा नहीं दिया, इंटरेस्ट है तो हमारा दलाली काट ली, या ये अपने ट्रैश में जा जाकर दलाली काट ली, तो ये सभी का पूरे जितने अपने पूरे एसोसिएशन के जो भी पैनल्स है, वो सभी पैनल का इतना ये होना चाहिए कि वो जिनर अपनी रुई अच्छी बना के देवे और मिल वाला भी उसको समझे कि भाई ये अच्छी रुई बना के दे, उसका ये अगर उसको प्रीमियम देना है या जो भी है वो क्लियर बात करे। तीसरा, अपने दलाल भी भाई लोगों को मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो भी है उन्होंने जो अपने जो दलाली के लिए जो भी काम करते हैं वो क्लियर बात करके काम करें, सामने क्लियर बात करके जिनर को बतावे कि उसका क्या टर्म्स कंडीशंस वगैरह हैं, और फिर बाद में काम करें ताकि डिस्प्यूट ना खड़ा हो। थैंक यू। हेलो प्रेसिडेंट साहब, अतुल भाई, सरदार अपना पप्पू सेठ, बहुत आप लोग बहुत अच्छा ये इन्वेंट लिया है। और हम ये चाह रहे हैं कि सीआई कॉन्ट्रैक्ट ही आ गया तो इसमें 90% हमारा काम खत्म हो जाएगा और हम सेलर बायर को बराबर समझा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो आप ये इम्प्लीमेंट हम तो करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। हमारा जो भी सौदा रहेगा तो सीआई कंडीशन से ही करेंगे हम और उस हिसाब से आगे चलेंगे। बाकी कोई जिनर माने नहीं तो उसका काम ही नहीं करेंगे, और यहाँ बाहर नहीं माने तो उसका काम नहीं करेंगे। लेकिन हमारा सहूलियत के लिए ये सब चीज़ें है और हम वो ये चाहेंगे कि इम्प्लीमेंट होना चाहिए और 100% होने की हम कोशिश भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। एक पॉइंट जो मिस हो रहा था, मैं बोलना चाहता हूँ कि जितने भी ब्रोकर्स हैं जो ब्रोकिंग करते हैं एज पर सीआई बायलॉस, उनको सारों को जो सीआई में मेंबर्स नहीं है उनको मेंबर्स बनाने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि सारे ब्रोकर्स सीआई में मेंबर बन जाए और उस जो भी मॉडल कॉन्ट्रैक्ट उसको इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करें। अब मैं चाहूंगा आप पप्पू भैया, अतुल भाई, विनय भाई हमारे साथ ऊपर आए ताकि एक फोटो स्नैप हो सके। माखरिया जी आप भी आइए। तो आई नहीं।
Thank you so much, everyone, for an invigorating panel discussion. It was shorter than we all expected, but thank you giving the scarcity of time. All right, now finally to conclude today's conference, I would like to invite Shri K. Ramesh, Honorary Secretary, Telangana Cotton Millers and Traders Association, to come on stage and share his concluding remarks summarizing the proceedings of today's conference and give us the vote of thanks. Thank you. जल्दी खत्म करते हैं। On behalf of our members, my colleagues on the board of Telangana Cotton Millers and Traders Welfare Association, co-host of this event, Cotton Association of India, and entire organizing committee, I propose a hearty vote of thanks. I feel honored and privileged to get this opportunity. I would like to thank the Honorable Textile Commissioner of India, Srimati Roop Rashi ji. Words are not enough to thank you, Madam, for graciously accepting our invitation and sparing your invaluable time from your busy schedule to be here to bless us. Our thanks also due to the all honorable delegates who have blessed us with their presence. I would also like to thank all the speakers and panelists for their invaluable support and contribution in guiding the discussions held in this conference. I am very much thankful to all those who have supported this event by giving sponsorships. Diamond sponsor Sri Radhalakshmi Group of Companies, Manjit Cotton Private Limited, Kotak Ginning and Pressing Industries Private Limited, and Riddhi Siddhi Cotex Private Limited. Gold sponsors Salasar Balaji Agrotech Private Limited, Agarwal Cotton Ginning and Pressing, Coveri Exports, Lewis and Effers Company India Private Limited, and Bajaj Steels Industries Limited, and all our silver sponsors, Utsav Cotton Industries, Raghunath Agrotech Private Limited, Sri Gopal Ramesh Kumar Sales Private Limited. But for their invaluable support and cooperation, it would not have been possible to organize the event of such magnitude and so successfully. Our hearty thanks are also due to all the advertisers and the subscribers of the articles. On behalf of the entire organizing committee, I convey our sincere thanks to Sri Atul S. Ganatra, President of Cotton Association of India, Sri Bhupendra Singh Rajpal, Vice President, and the entire CAI team for accepting our proposal of organizing this conference in Telangana, which has given us this opportunity to host Cotton India 2023-24 in Hyderabad. Friends, we are presently surprised with the mammoth support to this event from across the value chain participants, for which we are indeed committed and indebted. This also shows importance of Telangana in the field of Indian cotton. Sri Lalit Kumar Gupta ji, CMD of Cotton Corporation of India, Dr. P.K. Agarwal ji, Advisor Sustainability CCI. The CCI has also graciously accepted our request and spared their invaluable time to be here and bless us. I convey our gratitude and appreciation Sri Gupta ji and Dr. Agarwal ji for their gracious presence here and invaluable guidance and support from them. I also convey our grateful thanks and appreciation to all the MNCs for extending their full cooperation and for attending this event in large numbers. I thank all our members of Telangana Cotton Association, and the last but not the least, I thankful the press and media for excellent coverage.
Friends, thank you all from the bottom of our hearts. Thank you, sir. Please join us tea and high tea. Thank you. I would request everyone from whoever we have present here today, delegates from CAI and the Telangana Association, to please come forward for a picture. Our members from CAI and the Telangana Association, let's gather for a picture. Let's put this hard work into summation. All the directors and event committee members of Cotton Association of India and of the Telangana Association, please come forward for a picture.